तालियां स्वागत का सम्मान का विषय है। आइए एक बार पुनः स्वागत करेंगे मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथि जी का। आप सभी से अपना स्थान ग्रहण करने का अनुरोध है। पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय बठिंडा परिसर में आयोजित इंडियाज प्रेसिडेंसी ऑफ G20 एंड इट्स रोल एज ए नॉर्म इनिशिएटर ऐसा शीर्षक लिए इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में हमारे बीच आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया, सम्माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय का आगमन हो चुका है। सदन में उपस्थित समस्त देवियों तथा सज्जनों का पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय स्वागत करता है। पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय का एक ही नारा, जग प्रख्यात बने भारत हमारा। इसी संदेश को देश में सांचने के लिए, साधने के लिए विश्वविद्यालय ने माननीय कुलपति जी के नेतृत्व में इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय ज्ञान सरोवर का आयोजन किया है। आज हमारे बीच आशीर्वचन व मार्गदर्शन हेतु कार्यक्रम की आदरणीय मुख्य अतिथिया के रूप में मौजूद हैं परम सम्माननीय प्रोफेसर सुनैना सिंह जी। आप प्रतिष्ठित नालंदा विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति हैं। मैडम, आपका स्वागत है। कार्यक्रम के सम्माननीय विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच हैं प्रोफेसर कुलदीप चंद अग्निहोत्री जी। आपने माननीय केंद्रीय संस्कृति मंत्री के सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। हमारे बीच विश्वविद्यालय के DIA प्रोफेसर रामकृष्ण वसूरका जी, विश्वविद्यालय के कुल सचिव महोदय प्रोफेसर BP गर्ग जी, विश्वविद्यालय की स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के अधिष्ठाता डॉक्टर बाबा सिंह जी, इस कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर निष्ठा कौशिकी जी हैं। पुनः एक बार तालियों के साथ हम आदरणीय मंच का सम्मान करेंगे। प्रकृति ही मानव का आवरण और आभूषण है। इसी तर्क को अभिहित करने के लिए आदरणीय मंच से पौधे को सिंचित कर कार्यक्रम को औपचारिक गति देने का सादर अनुरोध है। आदरणीय मंच का बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वविद्यालय के कुलगीत प्रस्तुतिकरण हेतु आप सभी से अपने स्थान पर खड़े होने का विनम्र आग्रह है। पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय। संस्कृतियों का मिलन बिंदु, विज्ञान दृष्टि धारण करके विद्या की इस फुलवारी से महके देश का प्रांगण सारा। ज्ञान विज्ञान का मधुर संगम, जीवन मूल्यों का सहारा। ये नवाचार कपाट पढ़ाता, देश विदेश की समझ बढ़ाता, भावी पीढ़ी का ये निर्माता। विश्व
विश्व बंधुत्व का भाव सिखाता तेरी शान है, तेरा मान रहे। पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय। जय जवान जय किसान, जय विज्ञान जय अनुसंधान। आप सभी का बहुत बहुत आभार। इस ज्ञान सरोवर के सम्माननीय अतिथियों के परिचय एवं स्वागत संदेश हेतु कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर निष्ठा कौशिकी जी से आग्रह है। धन्यवाद मीना जी। Namaskar and good morning everyone. In the capacity of the convener of this two-day national ICSSR sponsored seminar on India's presidency of G20 and its role as a Norm Initiator, I, Dr. Nishtha Kaushiki from the Department of South and Central Asian Studies, feel privileged and honored to welcome the dignitaries, students, deans, faculty, non-teaching staff and representatives from the media. At the onset of the seminar, I would like to convey my heartfelt gratitude to our patron, Professor Raghvendra Prasad Tiwari ji, for guiding the university for conducting this national seminar. This national seminar on such an extremely important national and international theme would not have been possible without his visionary guidance. If I am not wrong, Central University of Punjab happens to be probably amongst the first few universities to conduct a national seminar on India's presidency of G20. We feel proud on this achievement. We have with us today two eminent guests who have achieved academic excellence in their respective fields. Professor Dr. Sunaina Singh ji, the Honorable Vice Chancellor of Nalanda University as Chief Guest, and Professor Dr. Kuldeep Chandra Agnihotri ji, former Vice Chancellor, CU Himachal Pradesh, and former advisor to the Union Minister of Culture, Government of India, as guest of honor. Welcome, ma'am, and welcome, sir. Central University of Punjab is also privileged to have Honorable Vice Chancellor of Atal Bihari Vajpayee University, Bilaspur, Chhattisgarh, Professor Dr. A.D.N. Vajpayee, who is on his way to the university. Also, I would like to welcome the other dignitaries and guests who have joined us through the live webcasting via the YouTube channel. Finally, I also welcome Dr. Ramakrishna Vasurika, Dean in Charge Academics, Professor Anjana Munshi, Dean Research and Development Cell, and Professor Dr. B.P. Garg, Registrar. As one of the themes of this national seminar is sustainable environment and agriculture, we have started the national seminar by watering the plants. Thank you, ma'am and sir, for this initiative. Now, keeping in continuation with the tradition of CUPB, I would like to introduce the speakers. It is a matter of honor and pride for me to introduce the dignitaries who have arrived here today to share their knowledge and enhance our academic horizons. Over the next 2 days, the students, scholars, and the faculty would be enriched by the knowledge, thoughts, and the sharing of the experiences by the experts from across the 4 themes of the national seminar. Our chief guest, Professor Dr. Sunaina Singh ji, is the Honorable Vice Chancellor of Nalanda University, Rajgir, Bihar. Before I formally introduce the Honorable Vice Chancellor, I wish to introduce my audience to the Nalanda University. Nalanda University is an avant-garde international university under the aegis of Ministry of External Affairs, Government of India. Historical sources indicate that the Nalanda University had a life of almost around 800 years from 5th to 12th century CE before it was destroyed by the invasion. In the contemporary times, it was the former President of India, the Honorable Dr. APJ Abdul Kalam, who mooted the idea of reviving the ancient Nalanda University while addressing the Bihar State Legislative Assembly in March 2006. And this was the first step towards retaining India's stature as a Vishwa Guru. Subsequently, in 2010, the Nalanda University Act was passed in both the houses of the Indian Parliament, and in September 2014, under the visionary guidance of Pradhan Mantri Shri Narendra Modi ji, the university opens its door for the first batch of students, which of course was a historical development after a gap of nearly 800 years.
The traditions of Dharma Dhamma conform to the founding vision of Nalanda by bringing together the entire region of Asia on one platform of knowledge while promoting peace, harmony, and human values, which also is the motivating force behind Vasudev Kutumbakam, the theme of India's leadership of G20. Our chief guest, Professor Dr. Sunaina Singh, is an eminent educationist of English and comparative literature. She assumed the charge of the Vice Chancellor of Nalanda University in 2017, and since then, the university has achieved milestones in academics. Professor Dr. Sunaina Singh plays a key role as a member designate on several distinguished boards. The most prominent among them include the member of the governing body of IIAS Shimla, President Shastri Indo-Canadian Institute, which is a binational research institution, Academic Advisor, National Cyber Safety and Security Standards, Advisory Committee, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India. Further, Professor Singh is the recipient of several prestigious awards, such as Leadership for Net Zero Endeavor Award 2022 by Indian American Green University Network, New York, Innovation Leadership Award 22 by Indie Global Media Network, Bengaluru. Moreover, Professor Dr. Sunaina Singh was conferred with the Asia One Woman Empowerment Entrepreneurs Award 2021 with a citation of a strong person and unmatched integrity. She has also been conferred with the honorary professorship by the Oxford Union in 2020 for her contribution in promoting Indian higher education and culture. Given her unparalleled and remarkable contributions, the Honorary Council of the United Republic of Tanzania acknowledged Professor Singh's leadership and has instituted a scholarship in her name at the Nalanda University. As a visiting professor at reputed universities abroad, she has played a crucial role in drawing the attention of the West towards Indian culture and literature. A real epitome of Nari Shakti, she is one of the very few women academicians in India who has broken the glass ceiling and has always believed in and has worked towards setting new benchmarks in both the personal and public spheres. She is a rich blend of scholarship, professional integrity, and administrative experience. Professor Singh represents the empowered Indian woman of the 21st century. Respected Vice Chancellor Professor Sunaina Singh ji, the students, scholars, the teaching and the non-teaching staff feel privileged to have your kind self here and gain knowledge through your address. The university is also fortunate enough to have Professor Dr. Kuldeep Chandra Agnihotri ji as the guest of honor. I express my heartfelt gratitude to the worthy guest of honor, Professor Kuldeep Chandra Agnihotri ji, who, in spite of his busy schedule, gave his consent to grace the occasion. It gives me immense pleasure to welcome Professor Agnihotri ji. Professor Agnihotri ji has served as the Vice Chancellor, CU Himachal Pradesh from 2015 to 21 and also as the former advisor to the Union Minister of Culture, Government of India. CU हिमाचल प्रदेश के कुलपति होने से पहले उन्होंने पूर्व निर्देशक क्षेत्रीय केंद्र धर्मशाला और पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। साथ ही साथ प्रोफेसर अग्निहोत्री जी ने बड़सर हिमाचल प्रदेश में श्री दीनदयाल उपाध्याय महाविद्यालय की नींव रखी, जो आज पीएम नरेंद्र मोदी जी के स्किल इंडिया की एक महत्वपूर्ण कड़ी है उत्तर भारत में। प्रोफेसर डॉक्टर अग्निहोत्री जी को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे सीयूपी के संपूर्ण परिवार का एक अहम हिस्सा हैं। करीब करीब हम सब लोग जानते हैं कि प्रोफेसर अग्निहोत्री जी हिंदी और अंग्रेजी के अलावा तमिल और संस्कृत भाषाओं के भी अच्छे जानकार हैं, और यही कारण है कि वे इतिहास के विभिन्न चरणों के बीच महत्वपूर्ण अंतर संबंध बनाने में सक्षम है। ये प्रतिभा व उनकी रुचि हिस्ट्री के इंडो-सेंट्रिक पर्सपेक्टिव को हाईलाइट करने की वजह से उनको एक विशिष्ट अकेडमिशियन बनाती है। इसलिए आजादी का अमृत महोत्सव के कार्यक्रम श्रृंखला में हम सब ने प्रोफेसर अग्निहोत्री जी को जाना और समझा है। प्रोफेसर अग्निहोत्री जी के व्याख्यान ने हम सबको सप्त सिंधु क्षेत्र की सांस्कृतिक एकीकरण में प्रमुख भूमिका से अवगत कराया है। अग्निहोत्री जी ने संस्कृति मंत्रालय में महत्वपूर्ण सलाहकार पद पर अपनी सेवाएं दी हैं, जिसके तहत उन्होंने सप्त सिंधु ज्ञान प्रणाली एवं हिमाचल और पंजाब क्षेत्र के सांस्कृतिक विकास में योगदान दिया है।
इसी योगदान को मान्यता देते हुए 2023 में फिजी में 12वीं विश्व हिंदी सम्मेलन में प्रोफेसर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री जी को हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से पुरस्कृत किया गया। उन्हें ये पुरस्कार भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी के द्वारा दिया गया। इससे पहले माननीय प्रोफेसर अग्निहोत्री जी को भारत ज्ञान प्रणालियों में उनकी गहन शोध के लिए आदि ग्रंथ आचार्य की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण भू राजनैतिक दृष्टिकोण से प्रोफेसर डॉक्टर अग्निहोत्री जी ने भारत तिब्बत सहयोग मंच के संरक्षक के रूप में कार्य किया है, जो भारत तिब्बत मित्रता की दिशा में काम कर रहा है और लोगों को आपस में जोड़ता है। इसी दिशा को आगे बढ़ाते हुए 2019 में अग्निहोत्री जी ने 3 प्रमुख किताबें लिखी। श्री गुरु नानक देव जी, जम्मू कश्मीर की अनकही कहानियां और नरेंद्र मोदी होने का अर्थ। उनकी इंडोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव एवं सप्त सिंधु क्षेत्र पर्सपेक्टिव देश को एक सूत्र में बांधने की कोशिश ही है कि उनकी सबसे बड़ी सफलता और उपलब्धि भी यही है। आदरणीय महोदय जी, हम बहुत ही आभारी हैं आपके कि आप यहाँ पधारे और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। साथ ही आज ये अत्यंत गौरव और सम्मान की बात है कि हमें पूर्ण आपकी वाणी सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। नाउ आई रिक्वेस्ट Dr. Harit Meena to please, continue further. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अतिथि देवो भव की सनातनीय परंपरा को सजीव साकार करने हेतु माननीय कुलपति जी से कार्यक्रम की आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया को फुलकारी एवं स्मृति चिन्ह भेंट किए जाने का सादर आग्रह है। तालियां सम्मान का आभूषण है, ये बजती रहें। माननीय कुलपति जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस 2 दिवसीय ज्ञान कुंभ के परिचय, प्रासंगिकता और प्रस्तावना पर प्रकाश डालने हेतु स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के अधिष्ठाता डॉक्टर बाबा सिंह जी से अनुरोध है। Honorable Vice Chancellor, Professor Raghvendra Prasad Tiwari ji, Chief Guest of the program, Professor Sunena Singh, Vice Chancellor, Nalanda University, Guest of Honor, Professor Kuldip Chand Agnihotri ji, former Vice Chancellor, Central University of Himachal Pradesh, and former advisor to the Union Minister of Culture, Government of India, Registrar Professor P.P. Garg ji, Dean Charge Academic Professor Ramakrishna Vasurika ji, Dean Research Director IQAC, Dean of Schools, HODs, faculty, staff, media staff, dear students, ladies and gentlemen, Namaskar, Adab, Sat Shri Akal. Today we have beginning of 2 days national seminar titled India's Presidency of G20 and its role as a Norm Initiator. Today is the age of regionalism and multilateralism. India's geopolitical
geostrategic and geoeconomic profile has been growing, and India has assumed the G20 presidency in the rapidly changing world order, wherein the great power politics, changing balance of power, declining trust in multilateral institutions, haunting by various traditional and non-traditional security threats, climate change, food, energy, and health and security, etc. In such a complex world order, India has been well placed and recognized on account of its emerging economy, military power, demography, geography, having advanced science and technology, nuclear power, hub of vaccines of the world, etc. As its name indicated, the G20 is an intergovernmental organization comprised of 19 countries and European Union. Currently, it has assumed geopolitical and geoeconomic importance as it is a representative of developed and developing world, which is collectively comprised of 80% of the world GDP, two-thirds world population, and 75% of the world trade. Given these prowess, the G20 has an important sayings in the multilateral global governance decision making. Therefore, the G20 presidency 2023 is memorable, historic, and proud moment each one of us. During its G presidency, how India can be a norm initiator in terms of reforming the multilateralism for stabilized and balanced world order. How India can show its value system to the international law system for establishing peace, prosperity, development, etc. How India can play an important role as norm initiator for ensuring balance of power, reforming the multilateralism, establishing peace, prosperity, stability, health, food, energy, security. In this context, India's effort to promote new norms and standards will help to create more stable, equitable, and inclusive world order. India has already signaled its intent to play a leading role in this regard in the identified key themes of its G presidency. The three important key themes of the G20 presidency in the 2023. It's included people, planet, and prosperity. Under the key theme of people, India has been focusing on issues such as health, education, and gender equality. As you know, basically, as a black COVID-19, as a black swan event, had drastically seriously impacted health, education, and even gender equality. So therefore, these under the key theme of people, these three dimensions has been figuring very prominently in G presidency theme. Second key theme is planet, and under the planet pillar, India has been focusing on how climate change, biodiversity, and sustainable development maintained, and how it can convince the G presidency membership to focus on these pressing issues. And third key important key theme is prosperity. And India is going to focus on these issues, particularly infrastructure development and digital information in the 21st century. Therefore, the theme for national seminar on the topic, India's presidency of G20 and its role as norm initiator, have been aligned with the
India's G presidency. The important themes of national seminar included reforming multilateral institutions for enhanced equity and transparency. Second, promotion of equitable global economic recovery and South-South developmental cooperation. Third, securing technology, combating malicious use of artificial intelligence and enhancing cyber security. Theme 4, sustaining the environment and agriculture. India G presidency has also providing an opportunity to use its rich cultural heritage as a soft power whereby India can bring a unique perspective to global affairs and promote peace, prosperity, along with establishing a more inclusive and pluralistic world. But at the same time, under G presidency of India, there are certain geopolitical and geoeconomic tensions are being considered as major challenge for the Indian presidency. But I am sure Indian leadership is having political acumen to handle the same. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं परम सम्माननीय प्रोफेसर सुनैना सिंह जी। आप प्रतिष्ठित नालंदा विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति हैं। इससे पूर्व आपने इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी इफ्लू हैदराबाद के सम्माननीय कुलपति पद का भी निर्वहन किया है। इसके अतिरिक्त आप ऑक्सफोर्ड एकेडमिक यूनियन की ऑनररी प्रोफेसर हैं। आप अकादमिक जगत की प्रतिष्ठित संस्थाओं में सम्माननीय सदस्य भी हैं। इन विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थाओं में प्रमुख हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज शिमला तथा एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक। आपकी उत्कृष्ट अकादमिक यात्रा में आपको विभिन्न पुरस्कारों से नवाजा गया है। इनमें प्रमुख हैं WCRCINT लंदन द्वारा वर्ल्ड्स बेस्ट इमर्जिंग लीडर फॉर द ईयर 2022 तथा यूनिवर्सल पीस फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा एम्बेसडर फॉर पीस 2022। मैडम, आपसे सभागार संबोधन का विनीत आग्रह है। Professor Dr. Raghavendra Tiwari ji, a good friend of mine and a very well-respected administrator across the country. Namaskar, sir. Professor Dr. Kuldeep Chand Agnihotri ji, former Vice Chancellor, CUHP, former advisor to the Union Minister Culture, again a very well-read and erudite and well-respected administrator. Namaskar, sir. I must thank for the introduction Dr. Nishita Kaushiki ji, then we have some of the members sitting, Dr. Bawa Singh, Dean HOD, Department of SCAS, faculty, my dear students, non-teaching officers of Punjab Central University, good morning, namaskar, and thank you for inviting me, for having me here. We are to discuss a very significant topic. So what I'm going to do is to set a tone for this 2-day. I would rather call it a symposium, because we are trying to understand what is it that the G20 is trying to achieve and what exactly is multilateralism. Now we need to understand. So I'm going to set the tone for this and give you a background in very simple fashion. 1945, the UN was born. That was perhaps the first multilateral
organization. And why was it born at that point of time? It was born because the furies of the two world wars, the grim situation of economy, the loss of life, the loss of national identities, the entire Europe and the world over, UN came at around that time to establish a kind of a platform for a uniform economic policy, equity in respect, and looking at all nationalities with an equal economic and identity formations, be it Africa, Asia, or Europe, and the Western countries. So that was. Today we have a conglomerate of 193 countries under UN. But if we look at that, that was perhaps the first multilateral organization. And thereafter, of course, we had post-war reconstruction. This was again a very important milestone in trying to establish a kind of a platform for how do we have an equitable platform. So there were 3 more organizations that were born out of this particular platform. And that the first one was the International Monetary Fund. The role was to maintain international financial stability across the countries. That was the role of International Monetary Fund. 2, the World Bank was established. Now, what was the role of the World Bank? It is for provisioning development capital. Not so developed countries or developing countries, third world countries, Commonwealth countries, that lot of, labels that we have given to countries who were devastated by the colonial rule, perhaps. And therefore, it was necessary to distribute, development on equitable terms. So that is how World Bank was born. The third important organization that came into existence was the World Trade Organization. Now, the role of World Trade Organization was to supervise world's multilateral trading systems. Trade is by road, by sea route, by air. So how do you stabilize? How do you ensure that the trading systems do not become corrupt or do not go down the stream? So these were the initial multilateral organizations. Now, over a period of time, or today, when we look at the post-pandemic situation, the world situation per se is quite grim in terms of economy. There is a recession. All countries are reeling under the post effects of pandemic, then the looming wars and the threats of war. One is Russia and Ukraine, but then the threat also is in different ways. Third, what are we doing? The world suddenly woke up to the realization that health is preeminent. And there has to be an equitable way of nurturing health across the world. So we are not living in a unilateral world where we look after each other in a very small space, but how every individual is significant. And the pandemic also taught us that these things can multiply by a minute. So health became a very important parameter. Then we suddenly woke up to the reality that climate is very important. And we are not able to deal with the ravages of the climate change. And therefore today we have, in institutions, we teach climate science. We teach environment and ecology so that there's a primary exposure to what exactly is nature.
How should we deal with nature? I think that's where India has played a very significant role. Because for us, every stone, every hill, every mountain, every tree, every animal, be it birds, snakes, we worship nature per se. So there is an immediate rapport of respect, of connecting with nature. And therefore we respect everything. Therefore we nurture nature around us. If we look at our Atharva Ved, if we go back to our Vedas that were perhaps written over 10,000 years back, recorded, I would say, because they came out of Shruti and Smriti. So Atharva Ved has 63 sukt, shlokas on preservation, respect of nature, highly relevant in today's time. I don't know how many ecologists and nature experts, the climate science experts are actually looking at it or teaching it, so that the world needs to wake up to the reality that India is one country, and not just India, I think the Asian belt per se. To be fair to them, the culture has been a culture of confluence, where everything and everybody comes together. That is very significant, and we woke up to that reality. I'm talking about the world, and the world is saying that let's respect nature, otherwise the devastating earthquakes or the floods. Now we are dealing with the earthquakes that have ravaged two countries, and how India is again the first country to contribute, to extend its support. We have done the same thing during the pandemic time. So it's there in our culture. If we look at famous writer Emerson or Thoreau from America, who were known as American Brahmins, they spoke about, Emerson particularly talks about how the world lacks unity and lies broken because essentially man is disunited with himself. Now this disuniting force, what has made man be disunited? Now he was talking about references to the post-war individualistic economy that grew. Stuart Mill spoke about the economic man. How, whether we'll take a look at psychologists or the economists in the West, they are talking about individual. They're not talking about a collective man, which is so very important. While we talk about integral humanism, I think Deen Dayal Upadhyay ji has done immense work. It's time we look at our own philosophers, who actually dealt with and spoke about Indian ethos as being that of integral humanism, where everything comes together. I think multilateralism also, in the same spirit, is an effort by different countries to come together on common platform to deal with it. I was just thinking about what are the latest, conglomerates that have happened, and Quad, you would have heard about the 4 countries coming together, talking, and what are they looking at? They're looking at the security dialogue. Quad countries are, you have Australia, India, Japan, and US, who are actually looking at the security dimension. And then you have the global South today, which is also known as South-South. The global South is the key word today, where we are looking at the countries that were known at some point as third world countries, at some point as developing countries. Is India a developing country? I don't think so any longer, because we are supporting other countries. We look at ASEAN, the 10 countries
that are formulated under ASEAN. I have brought about 50 fellowships to Nalanda from the ASEAN countries. We had just, initially I could get 4, then I got it increased to 20, then now this year, or last year, it got increased to 50 fellowships from ASEAN countries. A lot of students come from those 10 countries, apart from BIMSTEC. BIMSTEC is again a kind of economic. So you have these new conglomerates, the multilateral ethos, who are looking at how neighborhood policies need to be strengthened. How we can come together, because when we look at East Asian countries or Asian countries, we have a common heritage and history spanning back to 2 millennia or perhaps more. Buddha played a very important, significant role there. And also through if we look at how did trade develop at that point of time, it is through sea route. And knowledge also came, or knowledge also multiplied. People came to India as a Vishwaguru, to Nalanda and Takshashila at that point of time, and took back, wisdom from India. So India was known for its knowledge and wisdom. Knowledge without wisdom, knowledge has no sense. So we need to cap it. So that was very important. Now, when we look at today's role in multilateral, what is G20 doing? G20 was formulated in 2008. Before that, it was G7. And then we increased in number. The countries came together to look at the economy. How do we sustain growing economies? One, how do we look at security dimensions? How countries need to come together to build a protective barrier? How security, whether it's maritime security, excuse me, or trade security, maritime, you need to also look at the drug trafficking, something that Punjab is also dealing with. So you do have a lot of facets of security, the dimensions of security, the dimensions of economy. And now they are looking at health, because without having a composite, a global kind of an environment built to cater to the requirements of human health, we cannot move forward. We need to help each other and not jeopardize countries' futures, and also build a safer world for the future generations. If today itself we are talking about pollution in every format, then what do we leave behind as the older generation or preceding generation to the coming generations? Is there a crisis there that, one of the philosophers recently said, as the world becomes more and more convoluted, more complex, I think the younger generation, in time to come, will get more and more simple. They'll go back to the basics. Today, we are not dealing with basics. We are looking at an advanced formula without understanding the basics. That's the crux. So she was saying, this philosopher was saying that perhaps time is here, or very close by, where the younger generations will hark back to the basics. So perhaps there's a lesson for us also to look at what is the basic primary role of a multilateral organization. One of them defined it as international global governance mechanism. How do we put together? So that's one. Our own Honorable Prime Minister, who's so well respected, this commands a huge respect across the national boundaries, over the global scenario. It's only because of his commitment to growth and development of the nation.
When he spoke about Atmanirbhar Bharat, he spoke about how India can be self-sustaining, how we can create resilient mechanisms or resilient workforce, resilient organizations that can sustain. Because remember, in India, we do believe that there's an inner reservoir of strength within each one of us. You know, at times you go through the most critical period and then emerge very successful. And when you look back, you generally say, well, how did I do that? I don't know. I did draw my strength from somewhere. That somewhere is the inner reservoir that we have, that the culture imbues in us. You know, it has ingrained, it's in our DNA. Let me put it that way. So, you know, when he spoke about Sabka Vikas, you know, where he's looking at Sabka Vikas, if you look at the last man in the row, the last person, Antoday, that we talk about. You know, all facilities, developments should reach the last man, should reach people who have been marginalized for a very long time. So it's very important that all margins fade away. And it's when we talk about vikas or growth or sabka vishwas, he also speaks about how you can and how do you get everybody's faith or vishwas, you know, respected. It's only when you cater to the needs of the society, spanning from the most advanced to the most marginalized. So you need to cater to that difference. You need to erase those differences. So that's one thing that has become very significant. The other thing is that we look at how do we, the mandate of preventing future wars. This is where G20 in its recent foreign ministers meet here in India, they failed to come on a common platform, agree on a common platform on that. That's where the Prime Minister also mentioned, is multilateralism not succeeding in creating a common ground of respecting each other, each of the countries. That is very significant and that's not being done. That's what he said. And food and security. Today we are talking about fertilizers, food, fuel. You know, as the economy has, the recession has increased after the pandemic, you know, prices hitting the roof. Almost all countries are worried about how do we move forward. The World Bank is not able to stop the dollar rate. It seemed to be mounting all the time, with the result that the economies are getting more and more weakened. So we need to look after how do we prepare an environment of security where there are fertilizers available, there's food security, there is fuel that we need to address. So these are all aspects of a multilateral world where everybody is involved. So what is essential here? The essential facet is that we all need to come together on a common platform to find solutions. To find solutions for the future world. That is the crux of a multilateral organization, because they are expected to prepare or draft or craft an architecture of growth and development for all. And how it needs to, and there might be, while there are differences, and there will be differences, while there are differences, how do we overcome? How do we respect the differences and yet sustain progress? I think that is crucial. And that is where we need to look at it, perhaps ask some of the questions, because human history is reaching a new phase now. Because we all live in a very uncertain times. We don't know what's going to happen tomorrow. The world is changing at a remarkable speed. Before we know, there's another pandemic right our next door.
Before we know, the recession has gone so far that we are not able to put food on the table. Before we know, there could be another issue where we are not able to know. The fuel costs have become so monumental that people are looking at the cyberspace, artificial intelligence, whether you don't have to hire people. The chat GPT does a better role or, plays a significant role today. And we find that if I wanted to, somebody asked me, what is chat GPT? I said, let me check, because I don't want to just offhand talk about artificial intelligence. And so I just Googled Professor Sunaina Singh chat GPT. And they gave such a beautiful description of me, which is not there even in my CV. I thought, this is great. Why are my PAs sitting and breaking their head to prepare a CV? 4 lines, they've said it all. So I'm just looking at how artificial intelligence can move beyond a certain level. Perhaps then what happens to a highly populated and employable nation like India? These days with the job recession, Amazon has thrown out over 20,000 employees. Google has done it for 10,000. The other, software industries and corporate sectors are removing youngsters. So where do they go? Isn't that a major critical point in our history today? So man's history is at a critical juncture. We need to find new skills, and we need to keep on updating our skills to be relatable, to be valuable, and to validate our own intelligence. So we need to think out of the box. We need to be authentic. We need to be original. Our contribution should be such that we are not dispensable easily. That is very critical today. And that's what we are looking at in this kind of a scenario. How will the global governance reinvent itself? How should it? If I were to tell my young students here, write a project on how should global governance reinvent itself, probably some would say there should be more multilateral organizations. There may be many organizations. What is the result output? How has it catered? How has it developed nations per se? I think that's very important. So somehow I will leave you with some questions to think about and take it forward the next 2 days that you have this session. How do you resolve several unresolved tensions? The war that is there between Russia and Ukraine, the pandemic, what are those solutions? How do we, no matter how much we talk about nature or climate, what do we do with floods? What do we do with earthquakes? What about disaster management? Is it well equipped, or is it only a discipline that is being taught in institutions without a practical applications? Is there room for experiential learning? Can we send our students out to manage some of these? Do we have a social security concept? Do we look after our aging population also? The world over, that's another issue. And then you have how well is our trade agreements aligned for all countries? That's another, the problem is that because the advanced countries do not want to let go of their prime role, while developing nations would want a piece of cake there or want to develop further. So some of these things have been, as the crisis unfolds in different phases of such as health emergency or the war or the relaunch of human activity,
after the pandemic or recession, what is the turning point that can shape the emerging new global order? What could be the turning point? What would be a turning point? The G20 leadership of India, is that a turning point? Because India has many lessons to share with the world. Because the primary resilience of the culture, the tolerance that we have within us. Of course, tolerance, there can be different debates on that because we have taken it to another level with the result that we have lost our self-respect. That is also not good. So we need to look at how can India help? With so many universities, the youngsters, the youth need to debate. That's what the Prime Minister said. One of the important hallmark of G20 is how do youth debate about multilateralism, the role of G20. I think that's very significant. So I invite my young friends who are sitting here to think about what could be the way forward, what could be the road ahead, without getting very verbose, In very simple terms, how can we develop a world ethos, a global ethos that can be helpful, where a domination of one country over the other does not, undermine other nations. I think this is very important. I've just shared some of the insights that I was trying to jot down when Professor Tiwari Ji invited me, and I've shared those insights with you. I hope that helps, and thank you for having me. Namaskar. Thanks a lot, madam, for your wonderful words. इस ज्ञान गंगा में आदरणीय विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच मौजूद हैं प्रोफेसर कुलदीप चंद अग्निहोत्री जी। आपके सफल कुशल नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय फला फूला है, विकसित विस्तृत हुआ है। आपने माननीय केंद्रीय संस्कृति मंत्री भारत सरकार के सलाहकार के तौर पर अपनी दक्ष सेवाएं प्रदान की हैं। आपकी दक्षता के लिए आपको 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा साहित्य भूषण सम्मान से विभूषित किया गया है। सर, आपसे सदन संबोधन का आग्रह है। हो गया भाई, हो गया। प्रोफेसर तिवारी जी, प्रोफेसर सुनैना सिंह जी, श्री रामकृष्ण जी, डॉक्टर बाबा सिंह जी और निष्ठा और गर्ग साहब जो रजिस्ट्रार हैं और अन्य उपस्थित मित्रों, मुझे प्रोफेसर साहब ने कहा था तिवारी जी ने कि आपने जिस विषय पर बोलना है, G20 को लेकर कार्यक्रम हो रहा है, तो मैंने पूछा था कि मुझे किस विषय पर बोलना है। तो उन्होंने कहा 2 विषय आप पकड़ें, एक तो वसुधैव कुटुंबकम, तो वो तो इसमें छपा ही हुआ है। G20 का तो शायद लोगो ही वसुधैव कुटुंबकम है। दूसरा सर्वे संतु निरामय, सभी लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें। एक तीसरा भी इसमें ऐड किया जा सकता है कि अतिथि देवो भव। अभी शायद मीना जी ने या गर्ग साहब ने कहा था कि हमारे हिंदुस्तान की परंपरा है अतिथि देवो भव। भाई, मैं भी यूनिवर्सिटी में कुलपति था, इस प्रकार के सेमिनार में भी करवाता ही था, लेकिन जब किसी को बुलाता था तो एक बार फोन करके चिट्ठी भेजकर कि आप आइए और मुख्य अतिथि जो भी लिखना था, सादर आमंत्रित हैं, ऐसा है। उसके बाद मैं जो डिपार्टमेंट करवाता था उनको कह देता था, भाई पीछा करते रहो। लेकिन तिवारी जी के 3 फोन मुझे आए, डॉक्टर साहब कहाँ पहुंचे हो, कहाँ पहुंचे हो, कहाँ पहुंचे हो। निष्ठा बीच बीच में फोन करती रही, कहाँ पहुंचे हो। और हमारे अश्विनी जी गेस्ट हाउस में पूछते रहे, डॉक्टर साहब पहुंच गए कि नहीं पहुंचे। हिंदी विभाग में अमित के फोन आते रहे। अमित का तो मैंने सोचा वो भी हिंदी का है, मैं भी हिंदी का हूँ, शायद इसलिए कर रहा है, लेकिन अभी पता चला वो भी इसमें को कन्वीनर के नाते है। इस प्रकार अतिथि की चिंता जो की जाती है वो तिवारी जी कर सकते हैं भाई, और किसी के बस का नहीं है। अतिथि देवो भव का प्रत्यक्ष प्रमाण मैंने तिवारी जी के कार्यक्रम में ही देखा। और अब मुझे लगता है कि मुझे भी, जब मैं बीसी था, मुझे भी इस प्रकार का करना चाहिए था।
तो लेकिन अब भाई वो कहते एक बार हाथ से गया सो गया, लेकिन आगे कभी मैंने इससे बड़ी शिक्षा ली है कि कहीं कार्यक्रम करूं तो इस प्रकार की चिंता मुझे भी करनी चाहिए। मुझे कहा गया कि 2 विषयों पर बात करनी है। वसुधैव कुटुंबकम, पुराने ग्रंथ में आता ही है कि सारी वसुधा हमारा परिवार है, सारी दुनिया हमारा परिवार है। अब कुछ लोग कहते हैं भाई साहब जी बात ठीक है, अब मॉडर्न टाइम में भी ग्लोबल विलेज कहा जा रहा है, तो वसुधैव कुटुंबकम ही हो गया एक प्रकार से कि सारा विश्व एक हमारा गांव बन गया, सब एक हो गए हैं। तो पहले मैं भी यही समझता था कि शायद भाई वसुधैव कुटुंबकम से शिक्षा लेकर दुनिया को समझ आ गया कि सारी दुनिया एक है, ग्लोबल विलेज है। और खास करके आपके ध्यान में होगा जब ये ट्रेड पैक्ट को लेकर दुनिया भर में हल्ला गुल्ला था कि भाई सब सीमाएं खोल देनी चाहिए बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए, सारा दुनिया एक विलेज बन गई है, तो ये रिस्ट्रिक्शंस जो हैं ट्रेड की ये खत्म होनी चाहिए। तो मुझे लगा कि भाई बड़ा मामला अच्छा हो रहा है, तो फिर ये रिस्ट्रिक्शन भी खोल देनी चाहिए कि कोई कहाँ जाकर बसना चाहता है। भाई दुनिया की सारी जमीन अमेरिका के पास है, दुनिया की सारी जमीन ऑस्ट्रेलिया के पास है, और दुनिया की सारी आबादी इधर है, तो यदि वो सीमाएं खोलनी चाहिए तो ये भी सीमाएं खोल देनी चाहिए। कुछ लोगों ने चर्चा भी की, नहीं भाई साहब ये थोड़ा मुश्किल है, ग्लोबल विलेज बड़ी बात ठीक है, लेकिन ये सीमाएं खोलना मुश्किल है। इसका अर्थ क्या हुआ कि भाई वसुधैव कुटुंबकम और ग्लोबल विलेज में अंतर है। ग्लोबल विलेज अर्थ की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, जिन लोगों के पास व्यापार करने की क्षमता है, जब अपना माल दूसरी जगह भेजना चाहते हैं, कई बार होता था जब हम पहले अमेरिका जाते थे, वहां से सामान लाते थे तो कस्टम बड़े पकड़ लेते थे कि भाई यदि 100 रुपए की घड़ी है तो कस्टम 150 लग जाएगा। फिर हम घड़ी लाते ही नहीं थे कि भाई 100 की घड़ी कम वक्त और 150 कस्टम, तो 250 में पड़ेगी, क्यों लाएं। अब जो लोग घड़ियां बना रहे थे उनको लगा कि सब देश कस्टम लगाते, हमारा माल कहाँ बिकेगा। उन्होंने कहा भाई ग्लोबल विलेज है, सब छोड़ देना चाहिए, सब कस्टम बंद करो, जो जहां भेजना चाहे भेजे। तो कस्टम बंद हो गए, लेकिन वीजा बंद नहीं हुआ। यदि वीजा भी खुल जाता तो शायद पॉपुलेशन का बैलेंस बन जाता। अभी ये G20 में भी मैं पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा हुआ कि दुनिया का 85% GDP जो है वो इन 20 देशों में है, और पॉपुलेशन का भी शायद कुछ लिखा हुआ है कि कुछ चीन और हिंदुस्तान दोनों इसके मेंबर हैं G20 के। तो फिर पॉपुलेशन का बताने की जरूरत ही नहीं, सारी पॉपुलेशन इधर ही है। और जो बाकी देश हैं वहां पॉपुलेशन कम है, जमीन बहुत ज्यादा है। वसुधैव कुटुंबकम का जो अर्थ है वो प्रैक्टिकली किसी आर्थिक हित के कारण नहीं है। हम दूसरे व्यक्ति को अपने समान समझें, अपने परिवार का सदस्य समझें, ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। लेकिन ये आती कैसे है? एक तो संस्कारों से आ सकती है। भाई बचपन में जैसा संस्कार है धीरे धीरे वही डेवलप होता है, फिर आदमी समझता है ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। मैं कई बार देखता हूं हिस्ट्री में, जहां भी लोगों पर संकट आया वो भागकर हिंदुस्तान आ गए। ये हिस्ट्री में आता है, वो क्या नाम, ये यहूदी थे बेचारे पकड़े गए और भागकर कुछ हिंदुस्तान आ गए, कुछ जर्मनी वगैरह इधर उधर चले गए। तो जो इधर उधर चले गए उनका जो हश्र हुआ सब जानते हैं। जो इधर आ गए वो आज भी बड़े प्रसन्न हैं, और अभी इजराइल बनने पर जो वापस भी चले गए वो भी कम वक्त हिंदुस्तान को याद करते रहते, भाई उसका मुकाबला नहीं था। ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो है ये संस्कार की है। ये दूसरे ईरान जब संकट में पड़ा, पुरानी बात है, तो बहुत से लोग भागकर इधर आ गए। जो अग्नि देवता की पूजा करते थे वो वहां से भागे इधर आ गए, जिनको आजकल हम पारसी कहते हैं, क्योंकि ईरान का पहला नाम फारस था। फारस से जो भागकर आए तो वो जहां, अब भाई मेरे ख्याल में इतने अच्छी तरह वो जहां सेटल्ड हैं, जो टाटा वगैरह सब पारसी हैं, उनके मन में कोई इस प्रकार का, मैं जी इसलिए 2 उदाहरण दे रहा हूं कि बाहर से जो भी संकट में आया हिंदुस्तान ने उसको अपना ही माना। ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना ये है। लेकिन दूसरे लोगों में ये क्यों नहीं विकसित हो पाती? देखिए मैं एक बात समझता हूं
यात्रा करने से पूरी पृथ्वी एक परिवार है, जी यात्रा करने से मानसिकता बनती है, हवाई जहाज पर उड़ने से नहीं बनती। अब इसको बात को मैं थोड़े और ढंग से समझाना चाहता हूं। मैंने शायद पिछली बार भी कहा था, गुरु नानक देव जी यात्रा करते हुए सुल्तानपुर लोधी से अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचे। अब जो आदमी यात्रा करता है 20-25 किलोमीटर आज यात्रा की, वहां रुका, लोगों से गपशप हुई, लोगों को बातचीत हुई, उसके बाद 20 किलोमीटर आगे गया, फिर कंटिन्यूटी बनी रहती, सब अपने हैं। जो जहाज से जाता है तो वो दूसरे जहां पहुंचेगा 10,000 किलोमीटर यात्रा करके, वो उसको अपना नहीं समझेगा, फिर उसको लगा बेगाने देश में आ गए हैं। जो यात्रा करता है उसको किसी क्षण फील ही नहीं होता कि बेगाने देश में आ गए हैं, उसको लगता अपना ही है। मैंने पिछली बार भी एक चर्चा की थी, अब यहां की थी या किसी और यूनिवर्सिटी में, भाई मेरे ध्यान में नहीं, लेकिन मैं उसको रिपीट कर देता हूं। गुरु नानक देव जी यात्रा करते करते कहां पहुंच गए? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भी कहां? तवांग। तवांग से भी कहां? आगे बुमला जो है, जहां अब चीन की सेना खड़ी रहती है। बुमला से 10 किलोमीटर पहले एक बहुत ऊंचा पहाड़ है। मैं एक बार तवांग गया था, हम बुमला गए थे, तो पहाड़ के बीच में गुफा है बनी हुई एक, तो नीचे एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ था, जहां गुरु नानक देव जी ने तपस्या की थी, उसमें वो जो गुफा होगी। तो भाई हम पंजाब से गए थे, बड़ी मन में श्रद्धा पैदा हुई कि गुरु नानक देव जी हमारे पंजाब के, और यहाँ आकर तपस्या की तो थोड़ा मत्था टेकना तो बनता है। अब पहाड़ पर चढ़ने लगे, तो पहाड़ पर चढ़ने लगे तो सांस, वैसे भी वहां थोड़ी ऑक्सीजन की उस प्रकार की कमी रहती है, तो सांस फूलने लगा। तो भाई हमने वहीं से श्रद्धा अर्पित की और गुफा तक तो नहीं पहुंचे, वापस आ गए। तो वहां मिलिट्री के लोग थे, अब तो शायद उन्होंने उसको थोड़ा सुधार दिया होगा, पर सीढ़ियां वगैरह भी शायद बना दी हों। तो मैंने उनको पूछा, जहां कोई मत्था टेकने के लिए आता है? आकर तो डॉक्टर साहब कभी कभी लोग आते हैं। मैं कहा पंजाब से आते हैं? नहीं, कहते तो पंजाब बड़े इतनी दूर क्यों आएंगे? तो मैं कहा मत्था टेकने कौन आता है? कहता जी आसपास के गांव के जो बच्चे हैं, जब उनके एग्जाम होते हैं तो वो गुफा में मत्था टेकने आते हैं, अपनी कॉपी या पेंसिल गुफा में रख जाते हैं कि नानक लामा का आशीर्वाद मिल जाएगा और फर्स्ट क्लास में पास हो जाएंगे। अब भाई खुदा जाने फर्स्ट क्लास में पास होते हैं या थर्ड में पास होते हैं, लेकिन विश्वास इतना है कि नानक लामा का आशीर्वाद मिलेगा तो फर्स्ट क्लास में पास होंगे। अब अरुणाचल प्रदेश के बच्चे, कोई बांगचुक, कोई डोलमा, कोई छेरिंग, उनका गुरु नानक देव से क्या संबंध है? क्योंकि गुरु नानक देव जी यात्रा करते हुए गए थे, वो गुरु नानक देव के हो गए, गुरु नानक देव उनका हो गया। वसुदैव कुटुंबकम की भावना यात्रा से आती है। वसुदैव कुटुंबकम की भावना आक्रमण से नहीं आती, हवाई सफर से नहीं आती। हिंदुस्तान की शुरू से ही परंपरा रही है कि यहाँ के लोग यात्रा करते हुए बहुत दूर तक गए हैं। इधर आप डॉक्टर बाबा सिंह तो सेंट्रल एशिया के विद्वान हैं। डॉक्टर साहब सेंट्रल एशिया से आप? सेंट्रल एशिया में ताशकंद का नाम आप सभी ने सुना होगा। ताशकंद के पास एक जगह बाकू है, डॉक्टर साहब तो जानते ही होंगे। अभी आपके बठिंडा के ही संगरूर साइड के डॉक्टर KTS सराव हैं, उनकी एक किताब आई है बाकू पर। बाकू में मंदिर बना हुआ है। अब गवर्नमेंट ने उसको थोड़ा, आर्कियोलॉजी वालों ने, वहां की सरकार ने, तो उस मंदिर में उदासी साधु जो थे, जो आपके ध्यान में होगा, गुरु नानक देव जी के जो बड़े बेटे थे उनका नाम बाबा श्रीचंद था। तो श्रीचंद जी गुरबाणी का प्रचार करते हुए दुनिया भर में घूमते थे। उनकी जो शिष्य मंडली हुई उनको उदासी साधु या उदासी संत कहा जाता है। उस बाकू टेम्पल में उदासी संप्रदाय के साधुओं का डेरा था। अब भाई कहाँ पंजाब, कहाँ अजरबैजान, तजाकिस्तान, कहाँ ताशकंद, कैसे गए होंगे और वहां रहे होंगे। राहुल शंकराचार्य ने इसका जिक्र किया एक जगह। राहुल शंकराचार्य तो हिंदी वाले जानते ही हैं राहुल जी का नाम। राहुल शंकराचार्य लिखता है कि मैं एक बार रूस गया, उन दिनों सेंट्रल एशिया रूस का हिस्सा था। तो कहता मुझे उन्होंने, रूस वालों ने कहा कि साहब हमारे जहाँ एक पुराना कोई टेम्पल है, उसमें पता नहीं किस भाषा में कुछ लिखा हुआ है दीवार पर। तो जो भी आता है हमारे जहाँ हम उसको लेकर जाते हैं कि जरा पढ़ो इसको भाई क्या लिखा है। तो कहता आप भी इंडिया से आए हो, जरा देखो क्या लिखा है। तो राहुल लिखता है कि मैं वहां गया तो वहां तूना लगा हुआ था। तूना मतलब उस वक्त तो नहीं लगा होता, लेकिन राख पड़ी हुई थी, उसमें त्रिशूल गड़ा हुआ था और दीवारों पर कोयले से
पंजाबी में माता की पेटियां लिखी हुई थी। तो उसने कहा, मैंने अंदाजा लगाया कि कोई साधु घूमता घूमता जहां आया होगा, जहां डेरा जमा लिया होगा, अब अकेला होगा तो कोले से दीवारों पर माता की पेटियां लिखता रहा पंजाबी में, इधर का ही होगा पंजाब का। अब आप भाई इस पर थोड़ा विचार कीजिए कि इतनी दूर दूर तक जाकर एकात्मता कैसे पैदा होती है। वो लोग इनको अपना, हम लोग उनको अपना समझते हैं। ये जो सेंट्रल एशिया की फिर बात करता हूं, ये जो भगवान बुद्ध के शिष्य थे, उनके वचनों को मानने वाले थे, कहां तक पहुंचे जी? पूरा सेंट्रल एशिया, उसके बाद चीन, उसके बाद जापान, उसके बाद ये आपका क्या साउथ ईस्ट एशिया, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, कोरिया, मंगोलिया, मंचूरिया, तिब्बत, ये सारे। अब कई बार हम कहते हैं कि ग्रेटर इंडिया, तो ये एक की भावना क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि दृष्टि से आपने वसुधैव कुटुंबकम कहा है कि सारे लोग मेरे हैं, सारे अपने ही हैं। भाई वसुधैव कुटुंबकम में आप लोगों को तो छोड़िए, आप लोगों ने तो पशुओं तक भी कह दिया अपने ही है। ये पशु पक्षी जो हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ व्यवस्था की हुई है कि भाई ये भी कोई बेगाने थोड़ा हैं, ये भी हमारे ही हैं, इसको ऐसा करो, इसको ऐसा करो, इसको ऐसा करो। अब यूरोप में जाकर इतने सालों बाद, हजारों सालों बाद, अब एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट बन रहे हैं। भाई अब अमेरिका में, यूरोप में एक्ट बन रहे हैं कि साहब ये जो पशु हैं इन पर क्रुएलिटी नहीं करनी चाहिए, इन पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। कब बनाने शुरू हुए? 1900 या 2000 के आसपास। और आप लोगों ने कितने हजार साल पहले लिखा हुआ है कि जब खाओ तो कुछ ना कुछ चिड़ियों के लिए भी डाल दो, कुत्ते को दे दो, कौवे को दे दो, बंदरों को दे दो, किसी सब जानवर एक प्रकार से वसुधैव कुटुंबकम में केवल मनुष्य नहीं, समस्त जीव जंतु आते हैं। ये जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है भाई, ये हिंदुस्तान का मूल मंत्र है। लेकिन दुर्भाग्य से आप लोग तो सारी दुनिया को अपना कहते हैं, और अमेरिका कनाडा था तो बीच में एक, बाद में रूस को भी शामिल किया, अब G8 बन गया है, लेकिन फिर जल्दी रूस को निकाल दिया। यूरोप वाले रूस को पचा नहीं पाते, कारण पता नहीं क्या है, कभी शामिल किया फिर उसको, इसको निकालो। फिर उनका जो 7 देश जो हैं ये मोस्ट ताकतवर देश हैं, अब ये दुनिया भर का निर्णय करेंगे। फिर उनका भाई केवल 7 नहीं, मामला आगे बढ़ गया है G20 में भी 19 देश हैं, एक तो वो यूरोपियन यूनियन उसका मेंबर है। अब ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि लोगों ने, जिसको कहते हैं ना सभी सुखी रहें, हमारे गुरबाणी में आता है सर्बत दा भला, कि सभी का कल्याण हो। मेरा कल्याण हो, दूसरे की गड़बड़ हो जाए, ऐसा तो कोई नहीं कहता। सभी जीते रहें, सभी प्रसन्न रहें, सभी खुश रहें, सभी ऐसा हो, सभी ऐसा हो, सर्बत दा भला, पशु पक्षी भी बीच में। लेकिन भाई दूसरे देशों में सर्बत दा भला की भावना है या नहीं है भगवान जाने, लेकिन हिंदुस्तान का जो अनुभव है वो तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। हमारे जहां वास्को डी गामा कब आया था, हिस्ट्री बड़े जानते होंगे, 1419 या 20 के आसपास की बात है। और अमेरिका में कोलंबस कब गया था? 1492 की बात है। और हमारे जहां गुरु नानक देव जी कब पैदा हुए थे? 1469 की बात है, 69। ये सब चीजें एक साथ हैं। तो ये जो हमारे जहां जब वास्को डी गामा पहुंच गया और रास्ता देख गया कि मामला क्या है, उसके बाद यूरोप वाले आने शुरू हुए। डच आए, पुर्तगाली आए, फ्रेंच आए, अंग्रेज आए, और उनका अनुभव हमारे साथ क्या रहा। और ये जो कोलंबस से उधर पहुंच गया था उन्हीं दिनों, कोलंबस का अनुभव उन लोगों के साथ क्या रहा। भाई ये अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है, कोलंबस तो वहीं पहुंचा था। कई बार तो मैं बड़ा प्रसन्न होता हूं वो कम वक्त जहां नहीं पहुंच गया, आया जहीं पहुंचने के लिए था, गलती से वहां पहुंच गया। और कोलंबस की डायरी में लिखा हुआ है, जब वो वहां पहुंचा तो वहां जो लोग थे उनको नेटिव इंडियन कहते हैं। अभी भी रेड इंडियन कहता है, कोई नेटिव इंडियन कहता है। तो पहले मैं सोचता था कि शायद उसको नेटिव इंडियन इसलिए कहते हैं कि कोलंबस गलती से वहां पहुंचा और उसने सोचा इंडिया पहुंच गया हूं, तो इसलिए फिर वो उसने कहा जी इंडियन है।
लेकिन अब जो नई रिसर्च हुई है उसमें ये आया है कि उस कारण उनको इंडियन नहीं कहते। उसके आने से लगभग ये समझ लीजिए 1492 की बात है कोलंबस के जाने की, उससे लगभग 15-20 हजार साल पहले एशिया से लोग माइग्रेट करके अमेरिका गए थे। अमेरिका का मतलब मैं यूएसए की बात नहीं करता, अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूं, जिसमें आपका जे नॉर्थ अमेरिका, जिसमें मैक्सिको अपने कनाडा और यूएसए आता है, सेंट्रल अमेरिका जिसमें मैक्सिको आता है, और साउथ अमेरिका जिसमें ये ब्राजील वगैरह जो अब G20 के मेंबर भी हैं। कोलंबस वहां पहुंचा और उसने डायरी में क्या लिखा हुआ है, वहां के लोगों ने बड़ी उसकी दूर से आए हैं, हमारे अतिथि हैं, उनको मीठा पानी, मीठा मतलब ये नहीं कि शक्कर डालकर दिया, पानी को वैसे ही लोग मीठा वाटर कहते हैं। जो इसका समुद्र का पानी वो खारा है, जो पीने वाला पानी है वो मीठा वाटर है। पानी दिया पीने के लिए, फल दिए खाने के लिए, उनका बहुत स्वागत किया, अतिथि देवो भव। और वो भला मानस क्या लिखता है कि ये लोग बड़े अच्छे हैं और बहुत अतिथि की सेवा करते हैं, ये गुलाम बनाने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। और उसने 4 कमबख्त पकड़कर अपने जहाज में जब वापस गया डाल लिया, और उसके बाद उस नेटिव इंडियंस का क्या हुआ, आज आप अमेरिका की हिस्ट्री पढ़ लो, क्योंकि उसके बाद फिर यूरोप के लोग जाने शुरू हो गए वहां, इंग्लैंड के भी गए, इटली के भी गए, जर्मनी के भी गए, फ्रांस के भी गए। तभी आप देखेंगे अमेरिका और कनाडा के जितने शहर उनके नाम के आगे न्यू लिखा हुआ है। ये न्यूयॉर्क है, ये न्यू जर्सी है, जहां से गए अपने शहर के नाम के आगे न्यू लिख दिया, ये न्यू इंग्लैंड है, ये न्यू फलाना है, जो भी है। आज वहां के जो नेटिव इंडियंस हैं, जो अतिथि देवो भव की बात करते थे, आज उनकी हालत सबसे दयनीय है। वो रिजर्व में रहते हैं। आप में जो हिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे दे मस्ट बी नोइंग बेटर देन मी, उनको एक प्रकार से हाशिए पर गए हुए, जिसको आजकल अंग्रेजी वाले सबाल्टर्न भी कहते हैं, कि उनकी स्टडी हम कर रहे हैं। और हिंदुस्तान में जो आए उनके साथ भी यही हुआ, हमारे साथ जितनी लूट सूट हुई। मैं इसलिए ये कह रहा हूं भाई कि वसुदेव कुटुंबकम की भावना स्वार्थ के कारण नहीं आती। आप किसी देश को लूटने के लिए जाओ, उस पर शासन करने के लिए जाओ, फिर वसुदेव कुटुंबकम की भावना नहीं आती। आप किसी देश के लोगों के साथ मित्रता और उसको अपना ही समझकर कि मेरे जैसा है, ये भावना केवल यात्रा से आती है। यूरोप के लोगों ने समुद्री रास्ते से लोगों पर दूसरे देशों में जाकर हमले किए और उनको जीता, उनको एक्सप्लॉइट किया। लेकिन इतना ही नहीं, चलिए वो भी भाई जो जीता करता ही है, फिर उन्होंने नेचर को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। जिसको खाने की आदत पड़ जाए, फिर वो जितना पहले होता उसको खाता है, फिर और ढूंढता है। अब जब नेचर की एक्सप्लॉइटेशन इतनी बढ़ गई कि कुछ लोगों को लगा अब दुनिया ही खतरे में पड़ गई है। एक तो हथियार उस प्रकार के हो गए, ऊपर से एक्सप्लॉइटेशन इतनी हो गई, सब दरख्त काट दिए, जो भी था अब छोड़िए, दे वर फाइटिंग विद नेचर। हमारे जहां तुझे कहा जाता ना कि प्रकृति से तालमेल बैठाकर बैठो। जब गुरु नानक देव जी धरती और पवन को माता और पिता के समान कहते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो नेचर के साथ तारतम्य बिठाना चाहते हैं। और ये क्या कहते हैं कि हमें प्रकृति पर जीत हासिल करनी है, हमें प्रकृति पर विजय हासिल करनी है। हम वी आर फाइटिंग विद नेचर, हमने प्रकृति को जीत लिया है। तो भाई अब भगवान जाने जीता जा नहीं जीता जे तो ईश्वर जानता है, लेकिन अब उनको लगता है कि प्रकृति की इस लड़ाई में संसार का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। इसलिए फिर चर्चा शुरू हुई कि भाई जो ताकतवर देश हैं वो इकट्ठे हों और दुनिया भर की चिंता करें। चिंता भी उसी प्रकार की होती है कि भाई जैसे अमेरिका हमें बताता रहता है कि आप थोड़ा डेवलपमेंट को रोको, सड़कें मत बनाओ। हिमाचल प्रदेश में तो जो खास होता है, सड़क बनती है तो भाई सड़क गांव तक बनेगी तो दरख्त कटेंगे ही। तो कहते भाई साहब ये बड़ी गड़बड़ है, दरख्त मत काटो, दरख्त से नेचर में गड़बड़ होती है। हमने कहा जब आप काट रहे थे तब कुछ गड़बड़ नहीं होती थी कि भाई साहब हमने तो सारे काट लिए, तभी तो पता चला। तो हम सड़क नाम बनाए, अब मुझे भी नहीं कह सकते नाम बनाइए। आप कभी हिमाचल गए होंगे, आपने देखा होगा सड़क बनी होती, बीच में दरख्त खड़ा होता है और फिर एक्सीडेंट होता है, 8-10 लोग मरते हैं साल 2 साल में, लेकिन उसको काट नहीं सकते क्योंकि अमेरिका ने कहा होगा दरख्त काटना मना है।
आपने कुछ खा लिया, सब कुछ प्रकृति से लड़ लिए, भिड़ लिए। जब प्रकृति आपको अब कष्ट दे रही है, अब आप कह रहे हो कि सभी को। इसीलिए देखिए, इसीलिए अब हिंदुस्तान के इन मूल वाक्यों की याद आ रही है। वसुधैव कुटुंबकम, सर्वत्र भला, सभी सुखी रहें। अब ये जो हमारे सूत्र वाक्य हैं, इनकी तलाश यूरोप भी कर रहे हैं, इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं। और इस बार ये क्या नाम, इसकी अध्यक्षता भारत के हिस्से आई है, इसका हम मैक्सिमम क्या लाभ उठा सकते हैं? भारत के हिस्से जो G20 की प्रेसिडेंसी आई है, इसका क्या मैक्सिमम उपयोग हो सकता है? बाकी तो चाहिए व्यापार में क्या होगा, अर्थशास्त्र में क्या होगा, वो तो वही अर्थशास्त्री जानते होंगे। लेकिन मुझे लगता है भारतीय संस्कृति के जो मूल तत्व हैं, उनको हम यूरोप के देशों तक लेकर जाएं। कुछ समझेंगे, कुछ नहीं भी समझेंगे, ऐसा नहीं कि सभी समझ जाएंगे, कुछ समझ जाएंगे, कुछ नहीं समझाएंगे। लेकिन हमारे लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम पूरे विश्व को एक बात बता सकें। और हमारे तो जहां उसका व्यवहारिक प्रयोग हुआ है, भाई प्रैक्टिकली हमने तो करके दिखाया है। और एक छोटा सा मैं उदाहरण आपको देता हूं। जब जो तिब्बत में भगवान बुद्ध के शिष्य गए, उन्होंने जाकर बुद्ध की बताया होगा कि बुद्ध ने ऐसे कहा, ऐसे कहा, करुणा है, अहिंसा है, जीवन में चोरी नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान बुद्ध के ज्यादा उपदेश आचरण से ताल्लुक रखते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो जब तिब्बत में गए तो तिब्बत में देवी देवताओं की पूजा होती थी, तारा की पूजा होती है और शिव की पूजा होती है। नाम अलग अलग थे, शिव को बांगचुक कहते हैं, तारा को डोलमा कहते हैं। तो कुछ लोगों ने विरोध किया कि भाई हमारे तो देवी देवता हैं और हम ये जो आप बातें इस प्रकार की कर रहे हो, तो हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। हिस्ट्री में आता है कि वहां के राजा ने हिंदुस्तान से पद्म संभव को निमंत्रित किया। अब पद्म संभव कहाँ के थे, इसको लेकर अभी भी झगड़ा चला रहता है। हिस्ट्री बड़े जानते होंगे। कुछ लोग कहते हिमाचल प्रदेश के थे, मंडी में पद्म संभव का बहुत बड़ा मंदिर है। कुछ लोग कहते उड़ीसा के थे और कुछ लोग कहते पेशावर के थे। अब कहाँ के थे मैं नहीं जानता। पद्म संभव ने जाकर क्या किया, दोनों ही तरीके थे। या तो वहां के जो देवी देवता थे उसको उखाड़ते कि भाई अब इनकी पूजा करने की जरूरत नहीं है, ये आउटडेटेड हो चुके हैं, अब भगवान बुद्ध की बात आ गई है, तो अब ये नई थ्योरी है, इसको अडॉप्ट करो। उसने क्या किया, उसने जो वहां के देवी देवता थे उसको बौद्ध विहारों के गार्जियन डिटी बना दिया कि ये जो भगवान बुद्ध का विहार है इसकी रक्षा डोलमा करेगी, ये जो भगवान बुद्ध का विहार है इसकी रक्षा बांगचुक करेंगे। दुनिया में शायद ये पहला केस है कि सिंथेसिस हुआ है। नहीं तो भाई आजकल हमारे पंजाब में ये बड़ी गड़बड़ चली हुई है कि साहब आप हमारा मत अडॉप्ट करोगे तो गुटखा साहब को बाहर निकालो। पहले अपना जो आपके पास है उसको बाहर फेंको और हमारे को ट्रांसप्लांट करो। ये जो थ्योरी है कि यात्रा में जितना, भाई हजारों लाखों सालों की यात्रा है, इसमें मेरे पास भी बहुत कुछ है। अब यात्रा में एक और आदमी शामिल होता है, वो कहता है डॉक्टर साहब ये भी देखो मेरी चीज भी। हम कहते हैं भाई तुम्हारी भी देख लेते हैं। लेकिन वो उसने शर्त लगा दी कि मेरी चीज रखने के पहले ये सारा थैला खाली करो। देखिए दुनिया को सबसे बड़ा संकट इसी चीज से है। यात्रा में आदमी जोड़ता है, लेकिन ये जो है कि यदि मेरी चीज रखनी है तो पहले फेंको, थैला खाली कर दो, जितना घर में सामान रखा उसको फेंको, नए सिरे से वाइट वॉश करो और तब जहां बैठेंगे। दुनिया में जितने संकट हैं इसी कारण है। हिंदुस्तान का जी वसुधैव कुटुंबकम की भावना मैंने शुरू में कहा यात्रा से पैदा होती है। यात्रा में एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन भी होता है, लेकिन उसका पता नहीं चलता। जैसे भाई उदाहरण के लिए एक बच्चा है, छोटा है, 5 साल का है, बड़ा होता है, उससे बड़ा होता है, फिर भगवान की दया से बुढ़ापे में पहुंच जाता है। क्या उसके चाइल्डहुड को उसकी यात्रा से मनफी किया जा सकता है? इन टोटलिटी जो व्यक्ति है, चाइल्डहुड भी उसका हिस्सा है, लेकिन अब वो ऑपरेटिव नहीं है, आप उसको मनफी नहीं कर सकते। अब बच्चों जैसी बात तो नहीं, अब भाई 50 साल का व्यक्ति बच्चों जैसी बात तो नहीं कर सकता, ऑपरेटिव नहीं है, लेकिन इंटीग्रल पार्ट एंड पार्सल है उसका। यात्रा में चाहे वो मानव के विकास की यात्रा हो,
चाहे कल्चर के विकास की यात्रा हो, चाहे किसी प्रकार के विकास की यात्रा हो, उसमें मनफी नहीं होता, एडिशन होता है। प्रिय मित्रों, हिंदुस्तान जो अभी तक बचा हुआ है उसका मुख्य कारण यही है कि हमने मनफी नहीं किया, हमने एडिशन किया है। तिवाड़ी जी मुझसे बेहतर जानते होंगे भाई, मैं तो पंजाब से हूं, उस प्रकार की संस्कृत की जानकारी नहीं है। मैंने शायद इसका जिक्र पहले भी किया हो। वसुदेव कुटुंबकम की यात्रा कहां से शुरू होती है? जानने को भाई हम जानना चाहते हैं, ज्ञान या जानने की जिज्ञासा ही वसुदेव कुटुंबकम की मूल धरातल है। जानने की यात्रा को हम अथ कहते हैं। अथ जाने शुरू, इति जाने अंत। वेद में इतना कुछ लिखा हुआ है। मैं वेद की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूं, वेदों की रचना यहीं से हुई थी। मैंने पिछली बार भी कहा था, सप्त सिंधु क्षेत्र ही वेदों की रचना का स्थान है। वेद में इतना कुछ लिखा हुआ है, ईश्वर क्या है नहीं है, ऐसी 50 बातें हैं। लेकिन लास्ट में क्या लिखा? नेति नेति। कि भाई समझ कुछ नहीं आया, जितना पता चला उतना लिख दिया है। आगे जो आने वाली जनरेशन है वो यात्रा जारी रखे, और जितना उसके पल्ले पड़ जाए वो उसमें ऐड कर दे, फिर आने वाली पीढ़ी को बता जाए वो जारी रखे। यात्रा में एडिशन होता है। एडिशन से ही वसुदेव कुटुंबकम की भावना पैदा होती है। एडिशन से ही सर्वत्र भला की भावना पैदा होती है। सभी सुखी रहें, प्रसन्न रहें, किसी को कष्ट ना हो, ये भावना तभी पैदा होती है यदि आप यात्रा के पथिक हो। हिंदुस्तान की कल्चर का विस्तार यात्रा से हुआ है। ये वो बिग बैंग थ्योरी आती है ना, ये बिग बैंग थ्योरी नहीं है, ये यात्रा की थ्योरी है। और प्रिय मित्रों, यात्रा में जैसे मैंने कहा, छोड़ना नहीं, ऐड करना है। लेकिन दुर्भाग्य से अब इसको क्या कहा जाए, ये क्यों हो रहा है? अब अरब की हिस्ट्री पढ़िए। जो हिस्ट्री बड़े स्टूडेंट है वो क्या कहते हैं कि हमारा जो अरब हिस्ट्री है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक पीरियड ऑफ जाहलियात, हमारे कहते हैं पंजाबी में जाहल है। जाहल जाने बिल्कुल डार्क एज है, गवार है। वो कहते हैं हमारे देश की हिस्ट्री का एक हिस्सा है जाहलियात पीरियड और दूसरा हिस्सा है ज्ञान का पीरियड। कोई ऐसा कैसे हो सकता है भाई? आप अपने फोर फादर्स की टोटल हिस्ट्री को जाहिल कैसे कह सकते हो? जितना उनके पल्ले पड़ा उन्होंने लिखा, जितना आपके पल्ले पड़ा आपने लिखा, जितना उसके पल्ले पड़ा उसने लिखा। यदि आपका थॉट ये है कि मुझसे पहले के सब जाहिल हैं, फिर तो कम वक्त खुदा ही रक्षा करे भाई। किसी आदमी की खोपड़ी में ये आ जाए कि जो मैं कह रहा हूं, जो मुझे पता है वो ही ठीक है, बाकी तो सब जाहिलियात है। यात्रा जो शुरू होती है उसमें ऐड होता जाता है। और इसको आप एक और ढंग से भी कह सकते हो, जिसको हम विरासत कहते हैं ना, कि हमारी विरासत है। ज्ञान भी हमारी विरासत ही है प्रैक्टिकली, और क्या है। हमने जितना इतना कुछ ज्ञान है हमारा, हमें कहां से पता चला? जो हमारे पूर्वजों ने लिखा वो हमें पता चल गया। हमें कुछ योग्यता होगी तो 1-2% हम ऐड कर देंगे, फिर आगे चला जाएगा। यही तरीका है। इसको एक छोटे से मैं उदाहरण से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। हो सकता है भाई मैंने वो उदाहरण पिछली बार भी दिया हो, फिर आप कहेंगे कि अग्निहोत्री जब आते हैं बार बार वही 2-4 बातें कह के भाग जाते हैं, तो इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। अब मुझे याद नहीं कि मैंने वो दिया था या नहीं दिया था, लेकिन फिर भी उसको रिपीट कर देता हूं। ये उदाहरण पंडित दीनदयाल उपाध्याय देते थे। वो किसी गांव में गए और गांव वालों ने बड़ी सेवा की, जिसके घर गए उन्होंने बड़ी सेवा की और चारपाई दी बैठने के लिए कि पंडित जी बैठिए। तो पंडित जी बैठ गए। उसने कहा कि पंडित जी, ये चारपाई हमारे घर में 300 साल से है। पंडित जी बड़े कि इतनी विरासत संभाल कर रखी हुई है, ये तो खुशी की बात है। तो पंडित जी ने देखा, पर उसका एक जो पावा था, आप में से यदि जो पंजाब के लोग हैं वो समझते हैं पावा क्या होता है। हिंदी में पावा को क्या कहते हैं मुझे आज तक समझ नहीं आया। जो पावा था वो कुछ नया लग रहा था। पंडित जी कहने लगे, भाई तुम कहते हो 300 साल की है, ये पावा तो थोड़ा नया लग रहा है। और कहते पंडित 6 महीने पहले पुराना पावा थोड़ा जर्जर हो गया था, टूट गया, फिर हमने नया लगा दिया। तो पंडित जी ने लिखा हुआ है 10 साल में कभी एक पावा टूटा, उसकी जगह नया आया।
15 साल में कभी दूसरा टूटा उसकी जगह नया आया, कभी बाही टूट गई उसकी जगह नई आई, कभी दूसरी बाही टूट गई उसकी जगह नई आई, कभी नवार जैसे वो बुना हुआ था वो गड़ गई तो नई नवार आ गई। बदलता सब कुछ रहा लेकिन कंटिन्यूटी बनी रही। इसी को विरासत कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने हजारों साल में जो पहले चीज हुई उसी को ढोते रहना कि हमारे बुजुर्ग तो भाई गड्ढे में चलते थे, हमने भी गड्ढे में चलना है। गड्ढा मतलब छकड़ा जो कह लीजिए जिसको जो, लेकिन छकड़े में चलने वालों ने भी कम वक्तों ने लकड़ी के टायर की बजाय अब रबड़ के टायर लगा लिए। गड्ढा वही है लेकिन उसमें टायर बदल गए, उसमें इंप्रूवमेंट हो गई। और अब मैं मालवा में देखता हूं इन्होंने तो कमाल ही कर दिया, कई बार इंजन भी लगा लिया जी। अब उसके लोगों की मारुति है, इनका मारुता है, कि कंटिन्यूटी बनी हुई है, इंप्रूवमेंट भी हो रही है। जितना नया एडिशन होता जाता रहा है पुराना भी बचा। देखिए इसको विरासत कहते हैं। विरासत ही वसुधैव कुटुंबकम को पैदा करती है। विरासत से विजन बड़ा होता है, विरासत से सोचने की क्षमता बढ़ती है, विरासत से आदमी में अहंकार नहीं आता। देखिए सबसे खतरनाक चीज गुरु नानक देव ने तो उसको हूं में कहा है, जिसको ज्ञान का अहंकार हो जाए, मैं कहता हूं किसी को पैसे का हो जाए वो भी मान लिया कि भाई मेरे पास नहीं है तो दूसरे के पास है उसको हो सकता है। किसी को शरीर के बल का अहंकार हो जाए कि मैं बदमाश हूं 4 लोगों को मार सकता हूं, तो आता ना कि कितने थान पड़वाला मित्रा का नौ चलता कि हमारा आतंक कितना है कि कहीं जाकर दुकानदार से कहो कि जो थान पाड़ कर दे दो वो दे देगा, कोई पूछने बड़ा नहीं है। इसका भी अहंकार हो सकता है, लेकिन ज्ञान का अहंकार कैसे हो सकता है? जब ज्ञान का अहंकार होता है तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना खंडित होती है। फिर दूसरा दूसरा हो जाता है, मैं हो जाता हूं। ये जो है स्व और पर वो दूसरा है, मैं और वे। ये मैं और वे जो है ये गड़बड़ करते हैं। हिंदुस्तान के कल्चर में मैं और वे का प्रश्न नहीं है, कंटिन्यूटी है, सब एक हैं, मानव जाति एक है। मुझे लगता है कि जैसे मैंने शुरू में कहा G20 का हमें गोल्डन अवसर मिला है। इस पर हम जो अपने जो सूत्र हैं हमारे संस्कृति के उनको इन देशों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन अब भाई मैं तो भाषण देकर चला जाऊंगा और भी देंगे ही। ये सूत्र क्या अब हमारे नीचे संस्कारों में तो है ही। अभी भी पंजाब में कहीं चले जाओ तो किसी से रास्ता पूछो, वो भला मानस 2 किलोमीटर छोड़ नहीं चला जाता है कि मैं छोड़ कर आता हूं। हमने कहा भाई जाने की जरूरत नहीं, बस बता दो इधर से दाएं हो जाना। नहीं भाई साहब आप भूल जाओगे, साथ चलता हूं। असम के यदि कुछ स्टूडेंट जहां हों वो जानते हैं, असम में किसी के घर में जाकर दरवाजा खटखटाओ ना, चाहे यही पूछना हो कि रामलाल जहां रहता कि नहीं रहता, वो भला मानस पूछते हैं कि किस लिए दरवाजा खटकाया। भाई साहब अंदर आओ। अंदर आकर बैठकर तुरंत अंदर से पानी लाएगा और सुपारी लाएगा, और पानी पिलाकर सुपारी खिलाकर फिर पूछेगा आप कौन है और क्या काम है। ये जो भावना है, ये भावना हमें जोड़ने का काम करती है। लेकिन आप क्या देखिए, आप क्या ये भावनाएं हमारे जहां भी बची हैं। अभी ये पौधों को पानी देना था तो भाई जब दीप प्रज्वलन होता है तो हम जूते उतारते हैं कि, तो मैंने तिवाड़ी जी से पूछा कि पानी देने के लिए जूते उतारने की जरूरत नहीं। तिवाड़ी जी ने क्या कहा, पंजाब में तो भाई कभी भी उतारने की जरूरत नहीं है। अब जूता तो रसोई तक जाता है क्योंकि रसोई उस प्रकार की बन गई है। मेरा केवल ये कहना है कि ये जो सूत्र वाक्य है हमारे, हम सर्वत्र भला कहते तो हैं, क्या मन से इस बात को स्वीकार भी करते हैं? प्रिय मित्रों, ये हमारा पंजाब का सौभाग्य है, सब सिंधु क्षेत्र का सौभाग्य है कि जितना किताबें लिखी गई जहां लिखी गई, और फिर देश भर की ज्ञान का सार आदि ग्रंथ में आ गया। और क्या जो आदि ग्रंथ कहता है, सर्वत्र के भले की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, वो क्या अभी भी व्यवहारिक रूप से हमारे पास है या नहीं है? और कई बार होता है भाई जब हमने वो सारा पढ़ना ही बंद कर दिया तो फिर रहेगा कैसे? हमारी यूनिवर्सिटियों में जो पढ़ाया जा रहा है वो शायद अपने पुरातन ग्रंथों को एक प्रकार से हाशिए पर डालकर पढ़ाया जा रहा है। जब भाई आपने अपनी विरासत को अभी संभाल कर पीछे रख दिया है
तो जो 200 साल से पढ़ते आए हैं मानसिकता उसी प्रकार की बढ़ने लगती है। मैं समझता हूं G20 का और वसुधैव कुटुंबकम और सर्वत्र भला का सबसे बड़ा लाभ ये हमें हो सकता है कि हम अपने विश्वविद्यालयों में अपनी चीजों को कहीं ना कहीं पढ़ाना शुरू करें। मैं कई बार मित्रों से बात करता हूं, भाई हम गुरु नानक देव जी की हिस्ट्री लिखते हैं, हमारे पास सोर्स क्या है? गुरु नानक देव के जीवन को जानने के हमारे पास क्या सोर्स है, मुझे बताइए। या तो पर्शियन राइटर्स की लिखी हुई किताबें हैं, या अंग्रेजों की लिखी हुई किताबें हैं, या फिर जन्म साखियां। आप जिस किसी विद्वान से बात कर लो, भाई साहब जन्म साखियां तो पोइट्री में है, जन्म साखियां तो मिथ है। भाई जब तुम्हारे पास जन्म साखियां तुम्हारी मिथक हैं, द मेन सोर्स को तुम रिजेक्ट कर रहे हो और पर्शियन सोर्स को अडॉप्ट कर रहे हो, तो तुम लिखोगे क्या? मैंने पिछली बार भी कहा था, अपने देखिए ये भावनाएं अपने सोर्सेस से पैदा होती हैं। हम गुरु तेग बहादुर जी की जीवनी लिखते हैं, मैंने 50 जीवनियां पढ़ी। गुरु तेग बहादुर जी की जीवनी लिखने के लिए हमारे पास एविडेंस क्या है? एक एविडेंस सियारुल मुताखरीन है, वो किताब है और किसी फारसी राइटर की लिखी हुई है। वो क्या लिख रहा है कि गुरु गोविंद सिंह ही वाज डूइंग प्लंडरिंग नियर अबाउट दिल्ली विद हेल्प ऑफ सन ऑफ शेख सरहंदी। अब भाई एक एविडेंस गुरु गोविंद सिंह जी का है, वो कहते हैं कि मेरे पिता का बलिदान देश और धर्म की रक्षा की खातिर हुआ। आप किसको ठीक मानोगे? डॉक्टर फौजा सिंह सियारुल मुताखरीन को सीख मानता है और गुरु गोविंद सिंह को रिजेक्ट करता है। मैं ये इसलिए उदाहरण दे रहा हूं कि हमें अपने सोर्सेज जो हैं, सोर्सेज को ही पकड़ना पड़ेगा। हमें गुरुवाणी को समझने के लिए भाई गुरदास को पकड़ना पड़ेगा, चाहे इंटरनल एविडेंस ढूंढने पड़ेंगे। हमने दुर्भाग्य से, मैंने पिछली बार भी कहा था, हमने दुर्भाग्य से अपने सब सोर्सेज रिजेक्ट कर दिए हैं। महाभारत क्या है? महाकाव्य है। रामायण क्या है? महाकाव्य है। और उपनिषद क्या है? पोइट्री में है। फलां क्या है? पोइट्री में है। चरक संहिता क्या है? पोइट्री में। पोइट्री में हिस्ट्री लिखी जाती है, भाई साहब रिजेक्ट कर दो। फिर आपके पास बचा क्या? कहां से लोगे? भाई साहब जी लिखा हुआ देखो, उसने मैकालफ कह रहा है, मैक्स मूलर वेद पढ़ा रहा है। जिस देश को मैक्स मूलर वेद पढ़ाएगा, मैकालफ गुरबाणी पढ़ाएगा, वहां सर्वत्र भला की भावना नहीं हो सकती। हमें अपने ग्रंथों को खुद पढ़ना पड़ेगा, उसमें डूबना पड़ेगा, डूबकर उसके भाव को ग्रहण करना पड़ेगा, तब अंदर से वसुधैव कुटुंबकम की भावना आएगी। देखिए मैं गुरु नानक देव को हमें जीना पड़ेगा। द ग्रेट मैसेज ऑफ गुरु नानक देव, इतनी लंबी यात्राएं, जैसे मैंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश तक के लड़कों का फेथ, उसको जीना पड़ेगा, उसकी अनुभूति हृदय में अनुभव करनी पड़ेगी। देखिए ये भावनाएं जो है, वसुधैव कुटुंबकम सर्वत्र भला सर्वे शांति निरामया, ये भाषण की बातें नहीं है, ये हृदय में फील करने की बातें हैं। फील कैसे होता है भाई? जो आपने पढ़ा है उसको डाइजेस्ट करना पड़ता है। मैं अभी तिवाड़ी जी से कह रहा हूं, कुछ लोग दिल से बोलते हैं, कुछ दिमाग से बोलते हैं। जो दिमाग से बोलते हैं वो 25% मिलावट करके बोलते हैं, जो दिल से बोलते हैं वो शुद्ध बात करते हैं। गुरुओं की पोइट्री दिल से निकली हुई है। दिल से निकली चीज को समझने के लिए दिल का ही सहारा लेना पड़ेगा, खोपड़ी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन आज लोग वेद को, उपनिषद को, आदि ग्रंथ को समझने के लिए खोपड़ी लगा रहे हैं, दिल नहीं लगा रहे। प्रिय मित्रों, हमारे पूरे चिंतन में, हमारे पूरे सिस्टम में दिल गायब हो रहा है, दिमाग का हॉबी हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि भाई दिमाग को छोड़ी तो आप इसका कहीं गलत अर्थ निकाल करना सहना कि अग्निहोत्री जी का कि दिमाग की जरूरत ही नहीं है। संतुलन बना रहना चाहिए। ये G20 का जो हमें अवसर मिला है, इसमें 50 डायमेंशनल हैं, जिसमें सरकार भी काम कर रही है, लोग भी कर रहे हैं। यूनिवर्सिटियों के पास एक अवसर है। हमें अपना जो पाठ्यक्रम है, हमें अपने पाठ्यक्रमों में एक बार फिर दृष्टि डालनी पड़ेगी। हमें अपने इंडियन रिसोर्सेज को सेंटर स्टेज में लाना पड़ेगा, उनको रीइंटरप्रेट करना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। समझ करके हमारे हृदय में संस्कार पैदा होंगे, उनकी अनुभूति होगी। मित्रों, एक अच्छे विषय पर आपने मुझे भी बुलाया और बात करने का अवसर दिया। मुझे प्रेस साहब ने कहा था कि आपने 50 मिनट बोलना है,
और मैं समझता हूँ लगभग 40-45 मिनट हो ही गए हैं और एक पीरियड भी 40 मिनट का ही होता है। मैंने रमनदीप कौर को कहा था कि 10वें ग्रंथ पर इसने काम किया पीएचडी का कि एक किताब मेरे लिए ले आना, और मुझे लगता है जरूर लाई होगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। G20 का शीर्षक लिए इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में यदि आपके पास में कोई प्रश्न, कोई शंका, कोई जिज्ञासा है तो वह आमंत्रित है। If you have any query, question related to the theme of the seminar, it may be asked. आप अपना हाथ उठा सकते हैं ताकि माइक आप तक आ जाए। कोई प्रश्न, कोई शंका, कोई जिज्ञासा, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, प्लीज माइक दीजिए जरा। Respected teachers, first of all, I would like to thank you for giving us so many inputs. My name is Anusha Hegde. I'm a research scholar in Department of English over here. My question is to both the speakers. Both of you have gained experience in the position of leadership, and you both have been representing the academia in your own ways and in your own life. I have a question for the younger generation. What is your view about the roles that we can take up in academia, especially when it comes to understanding global ethos, global relationships, and to also indicate the Indian way of thinking, Indian way of understanding issues or debates which circle around the world. What is your perspective about this? And what can we do as younger generation? Is there any other questions? We'll take all questions. और कोई प्रश्न हो तो वह भी पूछा जा सकता है। If you have any question, it can be asked right now. आप अपना हाथ वेव ऑफ कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? ओनली वन। जी हाँ मैम, thank you very much. I didn't get your name, my dear. Okay, I'm sorry. Now, that's a good question where you're talking about what is the advice to youngsters given the leadership role or the present context of G20 leadership of India. Two things I would say. If you look at Indian ethos per se, it talks about Sarve Bhavantu Sukhinaha. Where we are talking about the happiness of everyone. The happiness of everyone consists in peaceful coexistence, all said and done. So how do you build peace around? How do you learn to negotiate? I think for the younger generation, what we need to learn is that we might disagree with each other, but let's bring it to a negotiating table and discuss the matter. Solutions may be many, but unless you focus on what exactly is the real issue, the problem, you will not be able to find the solution. So that's point number one. Point number two, where youngsters are concerned, my advice is very simple. I think you need to build your scholarship. I see a lot of people who are tits-bit scholars. थोड़ा यहाँ पढ़ लिया, थोड़ा वहाँ पढ़ लिया, थोड़ा ये, और फिर उसी में अपने आप को बहुत स्कॉलर बताते हैं, तो ये गलत है. तो then you're bound to make mistakes. You're bound to be carried away by your own egoistical presumptions about yourself. I think it's very important. एक ही subject हो, लेकिन उसमें you have to be a scholar. You have to be on top of the subject. I think that's very important because we cannot. Now that's point number one. Point number two,
is human concern. This takes me back to the first point, peaceful coexistence. You know, that itself, the Indian ethos talks about Sarve Bhavantu Sukhinaha with the extent that today we have become indifferent. You know, we have taken it to another level. I think we need to come back to the basics. Something is happening next door, which is very problematic. We do not interfere. We are not bothered. You know, today, I'm aghast to see people taking videos, you know, the so-called mobile power that we have in our hands. Instead of stopping something which is not good, we are busy taking the pictures. Usme ek zindagi to bach sakti thi. You know, you're wasting your... So that kind of a self-importance we should steer clear of. Usse thoda dur rahe, and you look at Sarve Bhavantu in its context, to the basics. My advice to youngsters, very, very simple and basic. Go back to understanding yourself. You know, Gita chapter 6 में बहुत अच्छा कृष्ण ने कहा था, और उन्होंने कहा था कि उधरेत आत्मना आत्मनम. When he said that, he said man should learn to elevate himself. You know, हमको अपने आप को कैसे उठाना है, rather than पतन के रास्ते नहीं जाना है. How do we lift ourselves? How do we metamorphosize? How do we bring character building to it? You need to keep on elevating yourself. Unless you push your boundaries, you will not know where the boundaries are. So I think we need to go back and study our own texts, understand ourselves, and elevate oneself, you know, rise up in character, in every way, in scholarship, you know, hone your personality. You know, that will give you another kind of aura and radiance. I think that's what is important in life. Thank you. थैंक यू मैम. योगः कर्मसु कौशलम, परिश्रम ही उत्कृष्टता का मार्ग है. माननीय कुलपति जी के नेतृत्व में हमारा विश्वविद्यालय दिनों दिन प्रगति कर रहा है. हाल ही में नेक द्वारा A+ ग्रेड दिया जाना, ये हमारे लिए मान सम्मान का विषय है. ये माननीय कुलपति जी के परिश्रम का प्रत्यक्ष प्रमाण है. आइए अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु तालियों के साथ स्वागत करेंगे माननीय कुलपति जी का. दिल से बोलना, हेलो, दिल को कोलेस्ट्रॉल खा रहा है, कोलेस्ट्रॉल आ रहा है, हम ज़्यादा खा रहे हैं जितना हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं. इसीलिए हम अब दिमाग से बोलना शुरू किए हैं, और वही सबसे बड़ी समस्या है. आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर सुनैना सिंह जी, ऑनरेबल वाइस चांसलर नालंदा यूनिवर्सिटी. You know, I had the privilege of hosting her in my previous university, Dr. Hari Singh Gaur. And there was demand that I should invite her for the second time. Unfortunately, that could not happen because of Corona pandemic. And now I have the honor of having her here. And we have listened to her. Her various lectures are available in the YouTube. You listen to those are really very educative. And particularly the answer that one of our research scholars from English department poses to her, she will find all answers, not only of this question, but all others that she has or others have in mind. You know, we always invite Professor Ainotri ji, and you know, he always talks extempore without looking at the chit. And also, he always speaks relevant to the topic that is assigned to him. My colleagues sitting on the dais and off the dais, and dear students and research scholars. You know, Professor Ainotri is today coincidentally wearing jeans and shirt, which is very uncommon.
And that is why he started from Vasudhaiva Kutumbakam. I wear kurta pajama, implying that I am more ancient. Therefore, I will start from much before Vasudhaiva Kutumbakam. And, if we realize that very idea of Indian civilization discourse, then we find, solutions to all the problems. And the very first doctrine of our civilization discourse is Ekam Sad Vipra Bahudha Vadanti. God is only one. There are various means and ways, there are various paths to reach the God. If we can accept this very fact, and also we imbibe this very fact, embrace this very fact in all our proceedings, in all our conducts, then perhaps the plethora of problems that we had today would have reached to this quantum, and we would have lived in a better world, for which we are envisaging to live through various means, and one of the occasions for us is this presidency of G20. When a particular doctrine is given, it is followed by another doctrine which supplements, which strengthens the belief in the first doctrine. So after Ekam Sadvipra Bahudha Vadanti, we had is that, the whole world, that is Vasudhaiva Kutumbakam, is one family. And, to realize this very concept, another doctrine was given, that is Sarve Bandhu Sukhna. But how everybody can become happy on this earth? What should we do actually so that everybody is happy? So for this, the answer to this lies in the first verse of our first Upanishad, that is called Isha Upanishad, the meaning of which is that whatever is available on this mother earth, whatever natural resources are available on the mother earth, that are for every creature on the earth, not only to the Homo sapiens, but each and every form of life that exists, or that life that would be created in future. That is, every creature has share on our natural resources, and I deserve only that much, which actually I earn through hard labor, hard work, and also which I need for survival. So, these are the very ideas that we need to re-establish again. And, these are not only ideas or doctrines. Our civilization, the Sanatan civilization, has actually lived these ideas through ages. And that is why the mechanism was created so that every citizen is contributing for the socio-economic growth of the nation. And that is why, before the onset of British rule in India, our contribution of India in GDP was 25%. This is not my data or the findings of Indian scholars. Angus Madison, he was given the responsibility of, researching on the economic growth of the empowered nations. He studied and then he concluded that before the onset of British rule in India, contribution of India to the world's GDP was 25%. And when they left India, it was brought down to 2%. So all this, 25%, nearly 1/4 of the GDP, came down to 2% during 200 years of British rule. So we can realize how much damage the foreign power has done us. And Britishers do not come to India to recite the name of Rama or to read our Sri Guru Granth Sahib. They came to exploit the wealth of the nation. And in the process, they spoiled the very production chain system that we have had in all aspects of human discourse that we have. Take any example, metallurgy, to mining, to cottage industry, to agriculture, everywhere India excelled. And when, GDP is 25%, it was for nothing, because, in every aspect of production, India was excelling that time. Now, we are trying to regain our lost glory.
And not that, we are trying to, this again, as I said that we have lived all these principles, and the very example of this can be cited from Ram Rajya, where, our Tulsidas, who wrote Ramcharit Manas, Mahakavi Tulsidas ji, he spoke about that the Ram Raj was ideal, where nobody had any types of diseases. Nobody was unhappy. Everybody was having meals of his or her choice, and everybody was contributing for the socio-economic growth. Everybody was happy. Sarve Bhavantu Sukhina, actually, that was realized during Ram Rajya. So, we have not given only the concept of how the world becomes happier, how world becomes better place for to live, not only for Homo sapiens, but for everybody. And, even now we see whenever some of our rituals are performed, and when we pray in our most traditional manner, we talk about the peace of every creature on the earth. We pray for the peace of vegetation, we pray for the peace of mountains, hills, rivers, and even the planetary bodies. We pray for peace of every living and non-living component on earth. So we are living all those concepts. But how there was great departure after the onset of foreign rules, first Mughals and then the Britishers. But now after 70 years of freedom, we cannot blame those. It is good enough time to realize our last glory. Professor Agnoti Sahab has very rightly said that, we cannot live only in the fond memories of what we have had. Now it is time to translate those concepts and those ideas into reality, and we go further. And we lead the world, not only G20, we lead the entire How that is possible? Every nation has its own civilizational traits, or the country's skills. We are skilled in spiritualism. That is why, the yoga was accepted world over. There are several other our cultural heritages that we should bring into limelight by practicing those, so that the entire world accepts. Health is one area where Corona, thanks to Corona pandemic, that has established that the Indian medicinal system, ancient medicine system, was the best, and and so there are several other things in every sphere where we need to re-establish those things by our conduct and by our behavior. But the best way India can lead to G20 nations, in my opinion, is the fusion of science and technology of the West and the spiritualism of the East, that is India. If these two things join hands, if India is able to assure the world that it is through the fusion of science and technology of the West and spiritualism of the East that can bring universal brotherhood and fellow feeling on the earth, and so that there's no war, there's no strategy like cabbage strategy to encircle India from all around, that the technical experts should be talking about. And every nation, whatsoever is small the nation is, lives with dignity, and every human being on this earth live with dignity, with human sentiments, with human heart. That is very important, and this is the crucial role that India has to play during this presidency of 1-year presidency of this. And this is golden opportunity for India not only to lead these two G20 nations, but also the UNO. And that should be the ambition of India. And this is golden opportunity. And this opportunity cannot be realized only through government means. Every citizen of the nation has to contribute. This is the opportunity not only to the government of India, but each one of us, each one of the 140 million people of India, to capitalize on this opportunity and show our strength and remain united and follow the doctrines that, different communities, different regions of the India have given to the younger generations and to us. That is the only way to realize the dream of India becoming again Vishwaguru, not only in terms of the knowledge base, not only in terms of traditions and the long civilized discourse, but also the future. And this is possible because we have the largest young population in the world. And now
the government of India has launched, NEP 2020 to align our education system with the best version of education that is available anywhere on the earth. And if we implement, because this training of mind of this youth population, that is very crucial, and there lies the future of India. So G20 is not only occasion for India to perform at the international level, but also at the national level. And education is such a potent tool that if we reform it and bring it, at par with education 4.0, which is necessary for supplying manpower necessary for Industrial Revolution 4.0. So this, because, as I said, each one of us has to define our role, not only define our role, but perform to realize that role. Then only the fruitfulness and the utility of India's presidency of G20 can be realized. So, why this topic should be discussed in the Education Institute? Because it is through education that we can bring changes, and we can supremacy, not in terms of ruling over others, because India's civilization discourse has never taught us to rule over another or to dominate over another. It is not only human beings. You see if you read Ramcharitmanas, you find the type of nature-centric development discourse that we are discussing today because of the danger of climate change. जो वो क्लाइमेट चेंज जो सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी हुई है हम सबको निगलने के लिए, उसका मुंह कैसे बंद करना है, ये इसका जवाब हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन डिस्कोर्स में है, जहां पर भगवान राम जब 14 साल के वनवास काल में केवल आदमियों के साथ ही संपर्क नहीं स्थापित करते हैं, बल्कि वनस्पतियों के साथ भी, नदी के साथ भी, जानवरों के साथ भी, पशु पक्षियों के साथ भी इतना शक्तिशाली होते हुए वो सभी का सहारा लेते हैं मैया को ढूंढने के लिए, सभी का सहारा लेते हैं पुल बनवाने के लिए, राम सेतु बनवाने के लिए, सभी का सहारा लेते हैं रावण को हराने के लिए, अत्याचार को मिटाने के लिए। कि ये G20 की प्रेसिडेंसी ये उदाहरण है कि कैसे हम सब लोग मिल करके G20 की प्रेसिडेंसी को सार्थक बना सकते हैं, सभी लोगों का साहचर्य के साथ, सभी लोगों का सहयोग लेकर के। और ये केवल सुप्रीमेसी दिखाने के लिए नहीं है, ये जो हमारा पुराना वर्ल्ड व्यू था जहां हम सभी को अपना मानते थे, केवल आदमियों की नहीं, सभी तरह के जंतुओं को, सभी तरह के एबायोटिक कंपोनेंट को हम अपना मानते थे, उनसे कनेक्ट, उनके साथ साहचर्य स्थापित करते थे, उनसे संबंध स्थापित करते थे, सभी हमारी रक्षा करते थे। नदियां, पहाड़, पर्वत, वनस्पति भरा पड़ा है उदाहरण। तो इन सब को कैसे कैपिटलाइज करना है, पुनः इन सब उदाहरणों को उनको मॉडर्न कैसे बनाना है, उसी रूप में नहीं स्वीकार करना है। आज वो कैसे रेलिवेंट होंगे हमारे लिए, उसको आज उसको कस्टमाइज करना है। जैसे पुराना कोई सॉफ्टवेयर बन जाता है, नई आवश्यकताएं पड़ती हैं, हम उस सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज करके नया वर्जन बनाते हैं। इनका हमें नया वर्जन बनाना है, तभी जा करके हम पुनः एक पूरे विश्व को एक दशा और दिशा दे सकते हैं कि आगे का हमारा सिविलाइजेशन डिस्कोर्स किस तरीके का हो, मानवता आगे किस रास्ते में चले। इसके लिए ये सब जरूरी है, भारतवर्ष का डंका बजाने के लिए नहीं। ये इसलिए जरूरी है कि सभी जो सर्वे भवन्तु सुखिनः का कंसेप्ट है वो सही में आए, सही में हम उसको जिए, केवल भारतवासी ही नहीं बल्कि पूरे विश्ववासी। और कैसे कल्चरल कनेक्ट है, इंटरफेथ कल्चरल कनेक्ट भी बात करने की आवश्यकता है। जब हम ग्लोबल विलेज, जब हम वसुधैव कुटुंबकम और ग्लोबल विलेज जो बहुत बाद में आया अपने दुनिया में, वसुधैव कुटुंबकम तो 4-5 हजार वर्ष पूर्व आ गया था, ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट अभी 60-70 ईयर्स ओल्ड ही है। तो इसको जब हम ये ग्लोबल पूरे ग्लोब को एक विलेज मान लिए हैं, तो हम कैसे रहें एक साथ, कैसे सभी की सहभागिता सुनिश्चित हो, कोई बड़ा ना हो कोई छोटा ना हो, जैसे कि राम राज्य में हुआ करता था। इस तरह की सद्भावना कैसे हम बनाएं, और ईच वन ऑफ अस हाउ वी कंट्रीब्यूट, हाउ वी मेक अवर लाइफ रिलेवेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हम दूसरों के लिए कैसे उपयोगी हो सकते हैं, हम परोपकार कैसे कर सकते हैं।
ये सब सीखने की आवश्यकता है। एक छात्र दूसरे छात्र की सहायता कैसे कर सकता है अच्छे कामों में, ये इसकी आज आवश्यकता है। एक छात्र जो पढ़ने में अधिक तेज है, वो दूसरे हमारे जो कमजोर है छात्र, उतनी स्पीड नहीं है उसकी, उसको कैसे मदद कर सकता है। और शिक्षा व्यवस्था को विश्वविद्यालय में सुदृढ़ करने के लिए और क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता है। तो इस तरह से जब जो डिफरेंट इस्टेब्लिशमेंट है हमारे देश में, जो यूनिट्स हैं, वो अपने आप को स्ट्रेंथन करेंगी, देश अपने आप स्ट्रेंथन होगा। तो एक ये अपॉर्चुनिटी है सोचने की। इस फोकल थीम के 4 वर्टिकल बनाए गए हैं, चारों वर्टिकल्स में एक्सपर्ट्स इनवाइट किए गए हैं और इस समय इस विषय पर बहुत सारे जगहों पर चर्चा चल रही है। IIT रोपड़ में भी, अमृतसर में इस विषय पर चर्चा करा रहा है। तो जो भी देश के हमें जो भी एक्सपर्ट उपलब्ध हो पाए, हमने उनको इनवाइट किया और ये कार्यक्रम करा रहे हैं। एक आज और कल शाम को इसका समापन होगा और इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स देश के आ रहे हैं। लंच के बाद बहुत सारे टेक्निकल सेशंस होंगे, आप सब उसमें पधारें और उनको सुने। सुनने से हमारे बीच में आइडियाज होती है। पढ़ाई 3 चीजों में कंप्लीट होती है। देयर आर 3 थिंग्स नेसेसरी इफ वी वांट टू हैव होलिस्टिक एजुकेशन। पढ़ना, सुनना और बोलना, और क्लासरूम के बियॉन्ड सुनना। क्लासरूम listening is only prescribed one. What is prescribed in the syllabus? The topic is limited. But through programs like this, you have reached to unlimited number of topics that are confronting the humanity today. So this is the occasion, and that is why university is determined to organize programs like this. And इसके साथ साथ में ये जो क्वेश्चन आंसर करना वो बहुत जरूरी है। ह्यूमन यंग माइंड्स आर वेरी फर्टाइल एंड देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज। सो व्हेन you know put questions, then experts are also tempted to think in those lines. The ideas have to not necessarily come from the seniors to the juniors. Learning is not one way, it is two-way, and two-way can become only when you participate in the discussions. So my appeal to all of you is to attend all technical sessions that will be held today and tomorrow, and also participate fully. It should not be a sort of monologue like what happens in the classroom. There should be free exchange of ideas, questions should be put, and so this way only we can make full use of this opportunity that is arranged by the university. I'd like to thank Professor Sunana ji for agreeing. In fact, she was very tight, but I requested, so she has traveled all through road, and she is going back today after lunch. I'm extremely thankful to her for accepting our invite and being with us and addressing the gathering. Professor Agnoti Saab, I'm thankful to him, and in fact, I have to always bank on him on any occasion or discussion on any topic. So I'm thankful to him, and the Dean Professor Baba Singh and Dr. Nishtha, they have worked very hard to organize this. So my compliments to them, and my compliments to those who have all those who have contributed for the success of this program. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम की श्रृंखला में आमंत्रित है सम्माननीय कुल सचिव जी धन्यवाद ज्ञापन हेतु। सर। इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के संरक्षक माननीय कुलपति जी, आज के मुख्य अतिथि, वरिष्ठ अतिथि, विविध विद्यापीठों के डीन, विभागाध्यक्ष, शिक्षक, कर्मचारी, कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण, प्रिय छात्रों तथा देवियों और सज्जनों, आप सभी को पंजाब की पावन भूमि से सादर प्रणाम एवं सत श्री अकाल। पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय में श्रद्धेय माननीय कुलपति के संरक्षक में G20 की भारत की अध्यक्षता और एक सामान्य पहलकर्ता के रूप में इसकी भूमिका पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन 15 आज और कल 16 मार्च 2023 तक किया जा रहा है।
मैं सर्वप्रथम आज के कार्यक्रम के संरक्षक तथा माननीय कुलपति पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रद्धेय आचार्य राघवेंद्र प्रसाद तिवारी जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिनके मार्गदर्शन में हम यह संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर सुनैना सिंह, वाइस चांसलर नालंदा का मैं पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपने मूल्यवान व्याख्यान से हम सभी को लाभान्वित किया। हम आपके बहुत आभारी हैं। मैं आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर कुलदीप चंद अग्निहोत्री, पूर्व कुलपति सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश और केंद्रीय संस्कृति मंत्री के पूर्व सलाहकार का इस कार्यक्रम में शामिल होने पर बहुत आभारी हूँ। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए डॉक्टर निष्ठा कौशिकी, डॉक्टर भावा सिंह तथा उनकी टीम के सभी अध्यापकों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। विश्वविद्यालय के सभी डीन, विभागाध्यक्ष, शिक्षकगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, शोधार्थीगण, विद्यार्थीगण तथा आभासी पटल के माध्यम से देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से जुड़े विद्वानों एवं शोधीजनों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, बाला बाला देवी प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। इन्हीं पंक्तियों के साथ अब सभी आमंत्रित हैं राष्ट्र के मान सम्मान हेतु। आपका स्वागत है राष्ट्रगान हेतु। जनमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। कार्यक्रम के समापन की घोषणा की जाती है। हाई टी हैज बीन अरेंज्ड आउटसाइड द सेमिनार हॉल। आप सभी स्वल्पाहार लेके जाएं। धन्यवाद।
Hello. Nishtha? Hello. 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 Is that Nishtha? Hello. 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 Is that Nishtha? I just wanted to check because I had logged in and no, 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 that's all right. I just wanted to check. I will join only at 5 minutes to 2 or 2 minutes, 10 minutes to 2 or whenever you call me. I think call me when. So, what is the program? Hmm. At what time? Around 2 o'clock. Okay. And when am I scheduled in to speak in that session? I'm the first speaker. Okay. Who's chairing? So you would want me to wait for until then to join, isn't it? Okay. Is there any way to check whether I have? I think I must have joined very well. No, no, that's fine. So you'll give me a call. Give me 5 minutes head up, because it might take me about 5 minutes to join. All right. All right.
Hello. Hello. Hello, Jack. Hello. 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 Hello.
Hello. Yes. हाँ हाँ, मैं आपको आपको ही नंबर करता हूँ और एक कॉन्फ्रेंस में हूँ, जरा आधा पौने घंटे बाद, 1 घंटे बाद कॉल करूँगा. हाँ. और हेलो. Hello. Yes. Oh, you will start only after 15 minutes. No problem. I have joined in. I have logged in, but I'll hold on actually, not to worry. So you will call me then? Okay, I have already logged in, so somebody can, in fact, even on that screen actually. But I'll put it away for the time being. So you suggest that I join in after 10-15 minutes? तो इसको मैं बंद कर दूं या दोबारा? I can exit, okay, and then join again. All right.
चक्की बन रहा है चक्की की बताओ दे पीछे ठीक है
कस के नहीं पेस्ट करना आ गया ना बड़ी चक्की So now find whatever you need, how much is the money? What's the cost? You ask me cost 200,000, I didn't even forget about 4,500. How I said, to buy the equipment, much better जी जी सुन First of all, I would like to extend very warm welcome to the today's speaker, Ambassador Varinder Gupta, retired IFS. So let's welcome to the first technical session of this two-day national seminar, India's presidency of G20 and its role as a Norm Initiator. Introduction of the speaker. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's indeed a great pleasure for me to introduce today's speaker, Ambassador Varinder Gupta, retired IFS, Indian Foreign Services. Ambassador Varinder Gupta had served the Indian Foreign Service for a long and illustrious period of 37 years and retired in 2016. During his long period of service, Ambassador Varinder Gupta had served as India's High Commissioner in many countries such as Tanzania, Trinidad, Tobago, South Africa, and many Caribbean countries. He had also served as Deputy Director General of the Institute of Defense Studies and Analysis and as Director General of the Indian Council of Cultural Relations. He had also
active research and trust areas are international relations and public policy. Therefore, he is currently associated with a number of non-governmental organizations and think tanks and contributing towards the enrichment of international relations and public policy. As president of a well-known NGO, Antarrashtriya Sahayog Parishad, he is particularly focusing on Indian diaspora and neighborhood. Ambassador Varinder Gupta is also an avid reader and author. He had edited several books, including the important ones, Pakistan Occupied, Untold Story, India's Neighborhood, Challenges Ahead, Energy Security, Asia Pacific Perspectives, and he has also contributed several chapters in renowned books, particularly the recent one, The Modi Doctrine, New Paradigm in India's Foreign Policy. So generally, he has been regularly contributing on topical issues in various prestigious newspapers and magazines. Ambassador Gupta is going to speak on the topic, the need for reforming the multilateral institutions for a stable world order. Multilateral institutions such as United Nations, International Monetary Funds, World Bank, and World Trade Organizations were created after World War II, particularly to promote peace, economic development, and international cooperation. However, many scholars argue that the existing multilateral institutions are outdated and insufficient to deal with the pressing issues of our present time. Given the rationale's decline in trust in international organizations and failures to effectively, on part of the multilateral organizations, to deal with the emergence of new global challenges such as paralysis of health security, energy security, climate change, and cyber security, etc., etc. Therefore, forming the multilateral institutions is a necessity to ensure that those multilateral organizations remain relevant and effective in addressing the evolving pressing issues and needs of the international community. Now, how reforming of multilateral is interconnected with the India G presidency, how India can put its case for inclusion in the multilateral institutions, and what kind of strategy India can pursue to convince the G20 member for its UN permanent membership. So there are many questions related to reforming of the multilateral institutions. Now, important question before the presidency of India G20 is how it is setting the agenda to convince the membership of G20. So I mean, there are many questions. So to take answer of these questions, I'll request Ambassador Varinder Gupta to share his ideas. So ladies and gentlemen, please join me in welcome our today's speaker, Ambassador Varinder Gupta, retired IFS. Sir, please share your ideas. Well, thank you very much. I'm indeed honored and delighted to be participating in this very important seminar by Central University of Punjab. Very topical issue. There has been, as you rightly pointed out, all-round demand that these multilateral institutions should be reformed. Now, two reasons that they're not representative enough, and they were set up after the Second World War. So obviously those who were victorious in the Second World War and those who were powerful countries at that time, the rules were very much weighted in their favor. And none of these multilateral institutions have been able to reform, have been able to move with the times. The second thing, when we relate the inability of these multilateral institutions
to secure the world peace or economic stability, the reasons for which these institutions were created, I think there is something more than the question of reform. There is this question of lack of trust, and if you look at it, instance after instance, it is the lack of trust. Now, you can make very good institutions and you can continue to reform them, but if the international community does not show the trust and the resolve to act in concert, then I suppose the result would still be very, one of very ineffective this thing. Now, let's look at, there are several multilateral institutions. The important ones are the United Nations and what we call the Bretton Woods twins, IMF and World Bank. Now, taking the case for the first, the latter two, the economic institutions, the financial institutions, these were set up in 44, after a conference in 44. And the whole idea was that this will manage the global regime of exchange rates and would ensure stable payment systems between different countries. The scenario at that time, the membership was restricted very largely to industrialized nations. However, today, the majority of membership is taken up by the developing countries. And yet, the affairs of the IMF continue to be dominated by the industrialized countries. So I think that is an anomaly which needs to be sorted out. There are countries which have risen very greatly since those days. China, for instance, is today the second largest economy in the world. And yet, in 2016, a reform took place and its voting rights were increased marginally from 3.8 to 6%. But I think that is not enough. Likewise, India's voting rights were increased from 2.3 to 2.6. That does not do any justice to countries like China and India, and there are many other countries in the developing world which are resentful that they are not able to play the rightful role in the affairs of the IMF. What does the IMF do? Provide loans to countries to deal with balance of payment situation, the countries which are going through very difficult economic situation, but it imposes conditionalities which are very much hated. You must have heard of the term structural adjustment. The developed countries, the Western countries, the industrialized countries seek to impose their own models. Now, some of these modalities, some of these formulas don't work. For instance, in India, if IMF were to suggest that you withdraw the subsidies for the fertilizer, then I think the interests of the farmers will be very badly affected. Because remember, unlike in the developed world, we don't have any system of social security. If the IMF were to suggest that the government of India is wasting money by providing food grains at concessional prices through public distribution systems, then I think that also will not sit very well. Because all these modalities in India we have, and many other developing, I'm just giving the example of India. Now, if you look at the United Nations Security Council, which is the primary body charged with the responsibility of ensuring peace and security in the world, from 45, when the UN Security Council was set up, the membership has become many-fold, has grown many-fold. And yet, the size of the Security Council, initially when the Security Council was set up, there were 5 permanent members and there were 6 non-permanent members. So size was 11. From 11, it was taken to 15 in 1965. So even today, there are only 15 countries, 5 permanent and 10 non-permanent members. And there are very large countries. Germany, for instance, Germany is among the third largest economies in the industrialized world.
German economy is much bigger than the economy of France and UK. And yet they don't have permanent membership of the Security Council. Likewise, Japan is not a permanent member of the Security Council. So these are oddities. India is not a permanent member of the Security Council, although India is the most populous country in the world, the third largest economy in purchasing power parity terms, has a huge reservoir of manpower, has been contributing greatly to the UN peacekeeping effort. So from whatever standpoint, whichever way you look at, India deserves a place as a permanent member in the Security Council, but that has not happened. So there are a number of countries which need to be there, which are not there, because the structure very much continues to be what it was in 1945. And I think that is an oddity. And my sense is that unless multilateral organizations are reformed and made more dynamic, change with the times, then these institutions would fail. Our Prime Minister, talking at Bali, he actually, very squarely and plainly said that the UN has failed, that the multilateral institutions have failed, that the imperative need is for these institutions to change themselves. There are countries which have become much larger than what they were earlier. They have become far more consequential in the international affairs. So they need to be given a place, and that has not happened. Countries of Africa have no representation on the permanent membership. So I think Africa is a very big continent with more than 50 countries. So Africa brought in as a permanent member of the Security Council. India has very natural claim to be made permanent member. Germany, Japan. So I think these are issues which have to be addressed. Now, why is it not happening? Because there are countries which are enjoying, a certain status in the international affairs by virtue of their permanent membership of the Security Council, and they don't want that to be diluted. They don't want the club to be enlarged by allowing other countries to enter. And therefore, they will find some excuse or the other to keep it that way. In the specific terms, even America, because of our improved relationship, America might be agreeable to allowing India join in as permanent member, and American presidents have told us many times and have made also public statements. France and Britain also, we have very good relations. But China is a permanent member, and the UN Security Council reform cannot take place unless China agrees. And I am not surprised at all if China has been playing a very, very active role in preventing a consensus to emerge. China has been actively playing a role behind the scenes to prevent a consensus on the argument that no, there is need for more consultations. Now, I must tell you, I was at the United Nations in 1988 when I was serving at the UN mission, India's mission to UN in New York. And at that time, this issue, UN Security Council reform was very active. And somebody told me that this matter had been resolved, that India was going to get a seat. It has not happened then, and I don't think it is going to happen. It has not happened in the last 40, 50 years, and I don't think it is going to happen anytime soon. So while we can continue to argue, while we can continue to work, and all the time we can make a refrain that UN Security Council needs to be reformed. India has an important agenda. India wants to be on the Security Council. But I think the time has come that we need to look at alternatives. As from India's point of view, alternative number one is that, some time ago, you must have heard of the term called G4. This is a group of 4 countries
Germany, Japan, India, Brazil. Now, all these countries have a very strong claim to be permanent members of the Security Council, and these countries had joined together to push forward their claim. I don't hear about G4 very active these days. It seems to me that G4 needs to be made more active, and G4 needs to put its views on the UN Security Council reform very forthrightly on the world stage. And I think there has to be, we have to signal that if the international community, if the world is not sensitive to our concerns and aspirations and is not doing enough, then we might be forced to take a back seat. We might be forced to downside our involvement in the United Nations. I think this will be a very radical step. I'm not suggesting that we immediately begin to take that step, but I think some sort of hinting, some sort of signaling has to be done, whether it is done at the government level or at the academic level or at the level of think tanks or at the civil society level. It needs to be calibrated. But I think collectively, all the four countries, the important countries I mentioned, Germany, Japan, India, and Brazil, we have to act in concert. Because if you act singly, then your voice will not be heard. But if all four countries join together, all four countries represent a very sizable force in international affairs. And I think we have to draw attention to the world that if our voice is not heard, if our aspiration is not accommodated, then we might be forced to downscale our exposure, our involvement in the United Nations. I think that probably would be taken a little more seriously. The other alternative, probably a more practical alternative, would be for us to begin to look at alternative organizations. That is where G20 comes in. Now, as you would have seen, United Nations Security Council in any case has not performed any important functions in the last, I would say, 20 years. If you look at in 2002, at the time of American invasion of Iraq, America wanted UN Security Council endorsement for the invasion of Iraq under Chapter 7. Now that didn't happen because Russia and China prevented that action from being endorsed. And therefore, America came up with this idea of developing a coalition of the willing, which means that America now acted outside the United Nations Security Council. So you find that UN Security Council failed to act, failed to prevent American aggression on Iraq, which was premised on untruths. America spread the lies that Iraq was making nuclear bombs, where there was absolutely no iota of truth, and America went and bombarded and attacked Iraq. And UN Security Council did not approve of it. But America still created a coalition of the willing. America again tried to do a similar thing for invading Syria in 2013, and that also did not happen. So I think repeatedly you see that UN Security Council has been paralyzed. So in any case, UN Security Council is not performing its function what it was designed to. Now, insofar as our need for a place on the high table, I think G20 provides us that alternative. The only problem is that G20 has been conceived as an organization, as a grouping, which is primarily to deal with financial and economic issues, not with security and political issues. However, on occasions, G20 has dealt with political and security issues, and I think France, when it was president of G20, France tried very hard to introduce some of the political and security issues on the agenda,
But we ourselves were not very clear at that time. And so that got booted out. I think today, if India were to look at it as an opportunity to play its rightful role in international affairs, which is not going to be given by the UN Security Council, because you're not going to get a place in the UN Security Council. So you should exercise that role in the G20, and the G20's role should be enlarged. Now, the last point I would make is India's G20 presidency, and the topic as to what role can India play. India's role as the role initiator, Norm Initiator. Clearly, India is at the moment G20 president, and India has a role in setting up the agenda. And therefore, I suggested that India should try and put in political and security issues. There is this question of international terrorism. There is a question of health issues, which are all interconnected. There is question of overall international peace and security, which are in any case getting discussed in the G20 context. Now, when you talk about the India as the norm initiator, now we must remember that G20 presidency is by rotation. G20 presidency has not come in to India because of in recognition of India's position and status in international relations. So I think we should not get carried away. India is surely rising in international affairs, growing economy, growing stature in international affairs. But we must be fully aware of India's limitations, capacity limitations. We are still not a global power, and there are issues which are begging to be solved, like, for instance, the reform of the multilateral institutions, or if somebody were to say solving Ukraine problem, or bringing about peace in Afghanistan. There are these are very large issues, and India can only help show a way, but India cannot really be in the driving seat. That will be driving above our weight, which you cannot do. In international relations, you must have a very clear understanding of your own assessment of your own capacity. You should neither underpunch nor overpunch, because if you try to overreach in international affairs, then it can have disastrous consequences. And you must understand your true potential and therefore play the rightful role, which is why I would suggest that there are limitations on what India can do on the world stage. Even though India's role is increasing, we must be mindful of enormous challenges that continue to wait for us within our own country. The challenges in the field of poverty alleviation. We have a large number of people who are below poverty line, who are poor. I mean, forget the technical terminology, but they don't have adequate nutrition. They don't have access to drinking water. They don't have access to clean energy. They don't have access to adequate health care. They don't have access to adequate housing. I mean, when you drive from the airport and go through slums, I think as a self-respecting Indian, your head must hang in shame. And therefore, any talk about India being a global power and playing the role of a world leader in trying to solve the problems of the world, which are beyond our capacity, become somewhat misplaced. So we must take a reality check and show the way. And finally, I would end with Prime Minister Modi has very rightly underscored the theme of India's G20 presidency as Vasudhaiv Kutumbakam. And I think that is the way forward, it seems to me, in resolving the problems of the world. That if the countries were to look at the overall world and look at their own welfare as being inherent in the global welfare, without
sacrificing your own national interest, then I think that is the way to. Don't pursue your national interest in a very narrow, rigid perspective, but look at the global good, because in the long term and in the broader perspective, the global good will ensure your own good. And I think that is an eternal message. It has huge practical relevance, and that could be India's contribution to the world. So with these few words, I'd like to close my remarks. I had spoken to the organizers if there are, because I'll have to leave in about 15-20 minutes. So if there are any questions, I'd be very glad to answer. Thank you. Thank you very much for your very thought-provoking ideas, and you have highlighted how where India's strength lies and where weaknesses of India lies in the international multilateral forum. And our two guest speakers yet to be reached. And now I would request students from South and Central Asian Department or any other participants, if any question, you can ask to sir, please. Any student, any question? Good afternoon, sir. My name is Rishiraj, and I am the student of South and Central Asian Studies Department. Am I audible? Go ahead. Yes. Sir, you had a very rich experience in African countries. You served as an ambassador in Tanzania and South Africa. My question is that, China is doing great investments in African continent, in OVOR, and they made their African Parliament in Addis Ababa. So how do you see the India-African relations in the context of increasing Chinese investments in Africa and the military equipments and the military aid providing by China to the African countries? All right. Mr. Chairman, sir, do you want me to respond to this question, or shall we take one or two other questions? So we will take more. Sir, we will take more questions, and you can answer at one point of time. Right. Any other question, please? Okay, sir, you can go ahead with your answer. No other questions. All right. I think, in responding to India-Africa relations, I'd like to, it's very difficult to compare yourself with the other countries, because you must be very mindful of your own USPs. What are your USP? Because if you have to play the game according to your USP. China may have a lot of money, and China can bring in investment. We don't have that kind of money. So if you begin to compete with China, you'll always lose. But we have our unique strengths which China does not have. Our historical relationship with China, with Africa. China's engagement with Africa is only 40, 50 or 100 years old. Whereas India's engagement with Africa is thousands of years old. And we have a very large Indian diaspora in Africa. We were colonized, so was most of Africa. So I think there is a sense of empathy. And I tell you, African countries are also very savvy. They don't want the same things. They want different things from different countries. They want, when the Africans look at very wide roads in China and the kind of development that dazzles them, but they know that cannot come to Africa. When they see the kind of development in Europe and America, they know that it is a kind of museum piece and it is something to be admired. But when they look at India, and that is the sense of brotherly feeling, when they look at India, they look at it from the standpoint like when you go to your brother's home and you see a refrigerator in his house,
and you can also buy the similar refrigerator. So that is a great feeling. African countries look about India with a view to emulating, with a view to drawing inspiration in the manner in which they do not relate to China or Europe or the Western countries. So I think what is extremely important is our fraternal links, is our brotherly links. And I think amongst brothers, amongst family, you must show love and affection and respect. What was happening earlier, before Modi came on the scene, is that anytime we needed engagement with Africa, we told African leaders, come to India. But our Prime Minister, our President, did not have any time to visit Africa. And I think Africans were very sensitive about it. Prime Minister Modi understood that and completely reversed it. He, in the first 3-4 years, he undertook himself and the President and the Vice President, everybody undertook visits to Africa. So I think today we are ready to show Africa, to tell Africa that we have a lot of respect for you, we have a lot of regard for you, we consider you as our brothers and sisters, and that we don't want to give you money, but we will teach you, we will tell you, we will help you develop partnerships. So I think our partnership and by no means our relationship with Africa is weaker than the relationship between Africa. I would say that our relationship with Africa is very unique and very special and very strong, much stronger than the relationship between China and Africa. We would like to formally felicitate to you, but since you are online and no organizers will find some appropriate time to felicitate to you, and I would like to say a lot of thanks coming and sharing your valuable thoughts and ideas with the participants. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Dear participants, next speaker is yet to be reached. So let's wait for next 10-15 minutes. So please be patient. Thank you so much.
General Counsel, Member Executive Council, Member Academic Council, Controller of Examinations, Dean Student Welfare, Chief Warden, Coordinator, IQAC, National Officer and Local Coordinator, Global Initiative of Academic Network Gyan Project of MHRD and UGC. Sir has also a very long research experiences, and his research interest areas included Sir also attended several seminars, conferences, workshops. Sir has also organized several workshops, national seminars, international seminars, conferences. Sir has published sole and co-edited books, 12 in numbers, also published several articles in journals, national and international journals. Sir has also worked as editors of various journals at national and international levels. Sir has also completed one ICSSR project, misleading advertisement and its impacts on college students as consumers. Sir has also chaired and co-chaired sessions in several seminars, conferences, and today Sir is going to speak on revisiting international law for world peace and importance of India's value system. Firstly, the title of the talk suggested a re-examination of the role of international law in promoting global peace and security. International law refers to the legal framework that governs the relationship between states, other international actors such as international organizations. The title also suggested that there may be need to revisit and reassess the current state of international laws to ensure that it is effective in controlling and promoting world peace. Secondly, the title of the talk also highlights the importance of India's value system in this regard. India is known for its rich cultural and philosophical heritage, which emphasizes values such as non-violence, respect for diversity, pursuit of harmony, and peace, development of peace, living in harmony with others. Overall, the title also talks about the article of discussion will explore the intersection between international laws and India's value system and how these two can work together to promote world peace. So, ladies and gentlemen, please join me in welcoming our today's speaker, Professor Anand Pawar, Vice Chancellor, Rajiv Gandhi National Law University, Patala. So, welcome, sir. Please share your ideas. Thank you so much, sir. And good afternoon, one and all. I know it becomes very difficult after lunch to hear someone, but please bear with me. I will not torture you much. Whatever, in a possible way, I'll be able to communicate my thoughts on the given topic. I will try to engage you also. Even if I'll be able to convince you for some of the aspects of my discussion, I will feel that I am convinced with whatever I have prepared for. I am also thankful to Professor R.P. Tiwari ji, the Vice Chancellor of the Central University, who has provided me this opportunity to share my thought on these specific aspects of international law. I am also thankful to Madam and the organizing team for coordinating and for hosting this wonderful event. With a just correction in my introduction, I am not the full-time Vice Chancellor, I am the officiating Vice Chancellor. It's only an additional responsibility for the time being.
Otherwise, I am the registrar of National Law University, Patiala. So, as we all know that the present scenario where the international politics is moving, I know that many of the students are from international political science, and they are well versed with multiple kind of complexity of the international law. Though my area of specialization is something else, but I have tried my level best to keep you on track with regard to the international law revisiting with reference to present scenario and how the Indian values can help in terms of resolving multiple disputes. So for this purpose, I have kept it, as this G20 meet is very pertinent, and the theme which has been prescribed by the Indian government is very relevant, where Vasudev Kutumbakam and its entire part, including one earth, one family, and one future, which is the central theme. And perhaps if we'll relies on these principles, majority of the problems of the world can be resolved. When if we consider that the whole planet is our family and the individual, those who are residing, are family members, not including the human beings, but the other creatures also. Because in international law, though the objective and purpose of international law was to resolve the disputes or to resolve the conflict, but somewhere the international law failed to find the appropriate means by which these conflicts can be resolved. Because at the end, there are multiple interpretations of international law and various definitions also. But the most criticized aspect of international law is that the purpose for which it was created or enacted to resolve the disputes, or specifically in case if there is a possibility to explore all the possible means to resolve the disputes, but in case if there is no option available, then finally go for a war, right? Which sometimes, fails all the basic principles of the various laws. Now, if we, let me just produce some of the. So my presentation, or the part I have divided is the international law from the perspective of the aspects which we should consider at this moment to resolve the disputes. Whether we should go for war or we should rely more on in peace. So the two part where if we have to fall, or where the world can be divided with reference to international law, if we can convince the majority of the states and the individuals for other side that what are the advantages of the peace, then perhaps we can avoid the wars and conflicts, which is ultimately is creating so many problems in the world. So why war? What are the disadvantages of war? And what are the advantages of peace? How the United Nations or the international organizations or international law is playing a role in terms of reducing the conflicts among the states. And ultimately, what should be the approach where we can reduce the conflicts so that, and the role of Indian value system, up to what extent the Indian value system would be relevant for the world peace. If if at all we have to go for a, I think it is automatically removing. As I said that at the end, in case if there are principles on which the international law provides that in case there may be just war and there may be unjust war, right? So to convince that what is the just war, even the international law provides some of the scopes to indulge into war. Whereas I think the ultimate objective of the international law must be that for any reason there should not be any kind of bloodshed, the party should not indulge into any kind of war, whatsoever the situation may be. And that should be the ultimate goal of the international organizations also. So in case if they provide that they are allowing the war,
there are certain kind of justification for the just war. They say that the cause must be just. Now, it depends how many of you can justify the war between Russia and Ukraine. If I take the opinion of this house, can anyone justify the war between Russia and Ukraine? How many of you feels that this war is justified? Or there are just reasons for having this war, where millions of people have died, so much of property has been destroyed. Anyone who justifies this war in the hall? Up to an extent, if we can say that the conflict is also up to a kind of war. It's as a conflict as a war. So there are multiple kind of debates and arguments on which we can indulge from political point of view, for international point of views. So in case, by any means, so from international perspective or from the human rights perspective, because in so many ways, one of the aspects of international law whereby we are trying to reduce the conflict, the ultimate goal of creating such kind of different agreements or creating obligations, the central point of the discussion or the theme or the object for which all those regulations, all those treaties, all those conventions are created is the human being. So if the documents, if the implementing agencies, if the international bodies are failing to protect the basic rights of the individuals, because individuals or the human beings are the central theme in almost all the areas, be it as an international humanitarian law or human rights. So how to protect them? In any kind of conflict, by giving any name, if it is adversely affecting the human beings, then one of the purpose of international law is to reduce it, to have a kind of approach where all these conflicts can be reduced. So the intention must be right, it must be last resort, there must be a declaration of war, there must be reasonable hope of success, the good that it hopes to achieve must outweigh of evil procedures, non-competent must be immune from attacks, all those principles. We have so many documents, you all know, we are being the students of international political science. There are so many documents almost covering each and every dimensions. But are the international organizations responsible to execute and implement all those documents? Are they not failing in terms of effective implementation? I'll go to the specific documents also where the international law is failing. But these are the reasons which the states they try to justify when they indulge into some kind of war with other countries. There are thousands of millions of 16,000 billion, the amount we have spent on the cost of real wars. There are now many of the countries are, the world is divided into developed countries and developing countries also. One of the argument is that some of the developed countries, they are interested into having some kind of conflict all over. So is this the policy of some states that since they are the major producers of mass weapons or different kind of defense systems, so they also need some kind of market so that they will be able to supply their products. And then the global distribution of military expenditures in 2010, where these sellers of arms in the world, where these 5 countries which are part of the permanent members also of the UN. So whether they want that the war or some kind of conflict should always be there in the world so that they can have a appropriate market for providing or selling all theirs. Now this is a kind of conflict which is prevailing even everywhere. The military spending concentrated in North America, Europe, Asia, almost everywhere you will find that so much of amount has been spent for military. Now we have some kind of conflict between the Russia and Ukraine, but in 2023 there are many other countries where we need to look into, because they may emerge as new areas of conflict which can convert into a kind of war.
be it as in Ukraine, Armenia and Azerbaijan, Iran, Yemen, Ethiopia, Democratic Republic of Congo, Sahel, Haiti, Pakistan, Taiwan. For in some of the countries, they have some real issues, but in some of the issues, there are interests of some other countries also. So, for example, with regard to Taiwan, the United States and China's conflict is where they are trying to have a kind of conflicting interest between Taiwan and China, so that US or the other countries can support and can indirectly be indulged into a kind of war. Now, if we have to invest some money, or if we have to make expenses, or the world has to make some expenses, what would be the appropriate means? Whether we should spend more on war, or we should spend more on peace. If these two choices are there, I think the majority of the people will say that we have to invest in peace rather than war. So there is a large gap between what countries are prepared to allocate for military means to provide security and maintain their global and regional power status on the one hand, which is a kind of power showing that how powerful we are, and to promote economic development at the other side. If you have observed the budgets of India in previous session or the budget of other countries, you will find that much portion of the budget is provided for defense, be it for purchase of new equipments or for purchase for defense purposes or to strengthening the power of the states. We are spending more in defense rather than to providing means of welfare of the people. So, and then when we indulge into war, it affects so many things. It's not only that the individuals, but it creates an impact on crops, land, environment, or destruction of food storage, shops, property. Inflation increases. People are forced to flee. So many refugees, homeless people are increases. Much strain in small business cases. Government stops spending on social needs and roads, means travels. We have seen that in Ukraine and Russia, what is the state of all those perspectives in which majority of the things are destroyed. Now, then in that case, what should be the concern of the House? These are some of the concerns, that what are the long-term impact of the people of a country or war even when the conflict ceases? What will the future holds for the many refugees who flees the conflict? What are the long-term implications when children are used in war? These are the long-term impacts which affects human beings at large for a longer period of time. So imagine if military manpower and money that is being spent on war would have spent on finding other non-violent situation, what might be possible? Right? We can create more options for education. We can create more opportunities for employment. The life expectation, the happiness index can be improved. There are so many things which can be improved if the states they start spending much on the peace side rather than indulging into or creating the states more powerful. So there are so many instances where so it's a huge amount has been spent. When after the Twin Towers fell, the US war of the Afghanistan, $1,000 billion, or almost in so many different kind of situations, wherein majority of the situations, billions of dollars has been spent on maintaining or managing all those things. We have United Nations, and United Nations is also one of the agency which has, after League of Nations or First World or Second World War, created an international level, like an organization where much of the work for the human beings to protect their interest, human rights, and various specific kind of the UN Charter provides a kind of arrangement of various organizations and their body, and the distribution of work is also there. But in spite and despite of creating various kind of agencies and implementing authorities, is still somewhere we are lacking. So committees are there, UN entire budget is provided for that.
all those states are contributing for that. But now, the relevant part of UN Charter is all members shall settle their international dispute by peaceful means in such a manner that international peace and security and justice are not in danger. This is the basic principle which is mentioned there in the United Nations Charter. But still, and for this, there are many different kind of documents which are created depending on the regional needs, depending on the bilateral needs, depending at an international level also. We also know that international law is not directly implemented. There are different systems. Like in United States, Article 9 is there that whenever the international law is or any treaty is ratified by the USA, then it immediately becomes the law of the land. But when it comes to countries like India, where we have a different kind of system, that in case if we have to implement the international obligations, then on such scenarios we have to create different kind of legislation. Say for example, the economic, social, cultural rights conventions or political and civil rights conventions, where we have ratified it in 1976, where all those basic rights, the human rights were protected, mentioned there. We ratified also, but we could not create any specific legislation. The time in 1976 where India ratified it, and in case if there was any violation of human rights, no one can approach to the international agencies for enforcement. Why so? Because we were not having any kind of effective implementation system. We have our own system. In India, we need to create specific legislations incorporating all those obligations which are created by the international documents. And in case if there is a violation, then only we can approach to the appropriate bodies. Therefore, after 10-15 years, in 1993, the Human Rights Act was, Protection of Human Rights Act was enacted, where the agencies like National Human Rights Commission, State Human Rights Commissions are provided that in case, and in the definition part of 2D, where human rights are defined, it says that all the rights which are conferred or secured by the international documents mentioned in the Constitution or secured by other documents would be part of human rights. And in case if there is a violation, then there are agencies. So there are systems which are different. When it comes to the United States, they don't easily ratify all the international obligations because as per their Article 9 and Article 6 of the US Constitution, it becomes law of the land the moment they sign it or the obligation they create. But for us and for other countries, the creation of obligations and implementation of all those obligations are very different. So now, if you talk about that, the Ukraine and Russia, there were multiple kind of documents were there. There were UN Charter 1945, there were Helsinki Final Act of 1975, Declaration on Principles of International Law concerning friendly relations and cooperation among states in accordance with UN Charter, 1970, UNGA Resolution, General Assembly Resolution 3314, Definition of Aggression, Declaration on Inadmissibility of Intervention in the Domestic Affairs of State and the Protection of their Independence and Sovereignty, 1965, where on much of these obligations both the states have agreed. The Declaration on the Inadmissibility of Intervention and Interference in the Internal Affairs of the State, 1981. So the majority of the principles on which the international law exists, in particular which are mentioned in all those documents, are violated. Then Declaration on Enhancement of Effectiveness of the Principle of Refraining from the Threat or Use of Force in International Relations, that was also violated. Russia had also violated a number of bilateral and multilateral agreements. Budapest Memorandum of Security Assurance, Agreement on Friendship, Cooperation and Partnership between Ukraine and Russia Federation, 1997, Agreement between Ukraine and Russia Federation on Ukraine-Russia State Borders, 2003, Agreement between Ukraine and Russia Federation on Cooperation in Use of Azov Sea and Kerch Strait, 2003, an agreement with regards to Russian Black Sea Fleet in Ukraine. All those documents, these are all international documents which were created for having a peaceful relation and
existence or coexistence by protecting all the international norms and the interest of individuals within the territory of each state. But in spite and despite of all those obligations, they are not observing it, and they have indulged into that conflict, which is greatly affecting the individual's rights. Now, why international law fails? I am not talking about the multiple documents which are mentioned there. There are so many documents covering almost all the dimensions, covering all the interest of the states, interest of the individuals, or different kind of rights which are conferred by various documents. Majority of the things which roam around the individuals in world's affair are covered by some or the other documents. But still, in spite and despite of all those, still it is failing because lack of enforcement mechanism, right? So international law is often criticized for lacking effective enforcement mechanism because ultimately, as I said, that though there are so many restrictions mentioned, but at the end, if it is a just cause, you can indulge into a war also. So somewhere the principles which should be mandatory or which should be very adherent to not indulge into various kind of violations against the human rights, they are permitted. Agencies also fails. Now also in this era of conflict between Ukraine and Russia, all the bodies of the United Nations, they are somehow not that much interfering or trying to resolve it, which they should play an important role in terms of limiting it. Then the scope is also very limited depending on non-state actors also. The state can indulge into or creating the obligation, but it is not directly regulating the individuals or the non-state actors or the corporations. So how the domestic laws should be meant in such a manner where in case if the international obligations are created by the state can directly be regulating the individuals in those states. So in case if the system of United States like Article 6 or Article 9 is adopted by most of the countries, wherever by which just by recognizing or signing on the document it becomes the law of the land, and individual, if the norms are violated, the individuals can approach to the appropriate authorities for protecting their rights. So in case if the peoples of Ukraine, they want that their human rights or multiple kind of rights are violated, and they want to exhaust all those reliefs which are provided by the international norms or international human rights protection agencies or the international humanitarian law agencies which are implemented for protecting the rights, if they want, they don't have any options, because sometimes it becomes the ratifications of the state and the local laws which are required to execute all those norms which are created by these international agencies. So the limited scope is one of the reasons of failing the international law. Then dispute resolution mechanism. We have seen that almost nowadays the dispute resolution mechanism is offered by all different documents. Say for example, the arbitration, negotiation, conciliations are becoming part of almost all commercial disputes or various kind of disputes which are there in between these states. But at the end, in case even there also, there are so many loopholes. Say for example, if the foreign arbitration awards in international disputes, if there is a trade dispute between two states, and one of the state is, say for example, United States of America. So they have ratified the convention, New York Convention on implementation of foreign awards relating to the arbitration. But they also have some internal policies. They have some legislations. Or in that provision also, Article 5 says that the award must not be against the public policy of the state. And public policy is a term which would be defined or interpreted by the state itself. So in some cases where the billions of dollars of penalty has been imposed, and they also know that we have to abide by this award, and sooner or later we have to make the payment to the concerned party or the aggrieved party. Sometimes they try to misuse the provision of public policies
And they say that since these kind of provisions are there in the domestic laws, which is against the public policies, therefore they try to delay it. So ultimately, if the dispute resolution bodies will not have final authority to fix their settlements and to implement it effectively, whatever awards or decisions passed by these arbitrators or conciliators or mediators, that also fails the entire system. In sometimes it becomes more difficult because the parties are engrossed in this process. They have given so much of time to resolve their disputes, but at the end of the day, after 2-3 years, again they have to go for litigation at various stages. So the multiplicity, where sometimes there are jurisdictional issues, sometimes there are issues with regard to effective implementation of the awards passed by the competent bodies. So all these kind of complexities or non-finalization of the dispute resolution bodies fails the norms which are created under the umbrella of international law. Then there are cultural differences also, political interferences also. We know that the world cannot be on the same page with regard to the multiple issues which are relating to some which are concerned for the international law also. So these are also the reasons because of which sometimes the international law fails. Now, this is again the kind of argument which I was willing to make, that instead of indulging into war, if we can invest all those amount, it may probably eradicate the poverty. So are these figures surprising or shocking? Who makes the choice to indulge into war? Sometimes the political authorities, they take the decision. So in case if Russia or the majority of the people at Russia or majority of the people at Ukraine, even if they are not willing to indulge into such kind of conflicts, the state or the sovereign, which is more relevant word, where they decide on behalf of all and then indulge into such kind of conflicts which affect larger population of that state. So peace is the solution. If there are various kind of theories, there are various perspective of peace. It may be considered from human rights perspective also, because if we give the importance to the human values, or if the central point of all those norms or obligations created by the international agencies or all the state, if the central point is human beings and human rights, which they claim, but it fails because at the end, majority of these rights are violated by the such documents which are created for protection. So there are theories of human rights for peace. If peace is required to be maintained, the central point of all those documents or the concern must be human beings, and all the documents must try to protect the rights of individuals as in human rights, irrespective of whatever categories in which it is defined, irrespective of the ways by which these are protected by the individual states or by international agencies. But the central theme to maintain the peace must be the welfare of human beings. Justice for peace, if in majority of the conflicts you will find everybody tries to justify their claims. So what is the concept of justice? Because just remains same, or there must be the justice must be and undisputed. So there are theories with regard to the justice and concept of peace, non-violence for peace. If the parties are indulged into non-violence, if they are very adamant that whatsoever it may be, they will not indulge into any kind of conflicts which are based on some violence. So if non-violence would be there, they will certainly increase the opportunities and possibilities for world peace. Sustainable development is one of the very important aspects on which the states are on different dimensions. The developed countries and developing countries are divided in different norms which are created for sustainable development, be it as an environmental perspective. So there are divisions of the kind of obligations created through various documents for sustainable developments. And all those obligations which are created by international agencies cannot be met out equally for all the states. So the capabilities are different. Say, for example, some remote
or some very poor countries, if they have to create an healthy environment or the means of sustainable development, without having sufficient funds which are allocated by the international agencies, even if they are willing to do so, they are not that much capable whereby they can create all those options where the means of sustainable development can be created. So the obligation in terms of environmental protection or sustainable development at large, the world is divided into various parts, and there are various means and various branches on which there are differences among the state in terms of implementing the major goals created by all the international documents. There are peace theories also, which, being the students of political science, you are aware that there are various theories prescribed for academic purposes. UN is also, United Nations, one of the objective is to maintain peace, because if you will read the documents or the objectives of various bodies of the United Nations, you will find that the central point is to maintain the peace at large. They have peacekeeping forces also, organizations. Then religion and peace. This is a very interesting aspect, because if we talk about the Indian perspective, we consider that much of religious texts provides the authorities to regulate various dimensions of the individual and society, even the society and the state also. So how all those religious texts or the ancient documents are helpful in terms of maintaining peace, or what are the values if which we can incorporate at world at large, then the conflicts can be avoided or much chances of peace can be expanded. So when it comes to the Indian text, Upanishads, Veds, Samved, Rigved, Atharvaved, Yajurved, and Bhagavad Gita, some of the texts I have copied it during my research. I found it that some of the relevant provisions are there. Just for reference, I am mentioning it. So, for example, this Rigved 164:4-6 says, if we talk about that truth is one of the means of establishing peace, it says truth is one, wise men call it by different names. And similarly, the Atharvaved also, the commenting forces that can sustain the peace of the earth are truth, the irrevocable and inexorable law, vow for the service of mankind, living a simple life, faith in the universal divine powers, and selflessness to the extent to sacrificing one's interest for the welfare of others. So if that kind of ideals or these kind of religious texts can be adopted at and these values, where there will be no conflict of interest, like say interest for the welfare of others, then untruth, lawlessness, selfishness, luxury, denial of supreme powers, all those parameters can be avoided. Similarly, there are other verses also, like it says, if some sees others as oneself, there will be not any war, and there will be happiness and peace all around the world. The Yajurveda also declares that one who sees all creatures as if they were his own selves and himself in others, his mind rests in peace. Then there are other verses also, like where it emphasizes in the global brotherhood, which says that in whatever direction I turns, my eyes I look upon everyone as my friend. So when you are considering everybody as your friend and there is no enemy, obviously you will not indulge into any kind of conflicts. The other part of the Yajurveda is also talks about that Veda converses peace not only for the human society, but for whole universe. May sky be peaceful, may atmosphere be peaceful, may earth be peaceful, may water be peaceful, may medicine, herbs be peaceful, may plants be peaceful, may all the learned person be peaceful.
that is part of Yajurveda's 36.17 verse. So where all those the verses and the religious texts talk about not only the truthfulness, about the way of living the life, the parameters with which one should think on various dimensions. Like Upanishad also talks about that together may be protect us, together may passes us, together may we make on strength and varieties. May what we studied be full, be light, and be power. Om Shanti, Shanti, Shanti. So these are all the texts by which you can find that majority of the religious texts they provides. I am not reading all the contents because in majority of these texts there are principles which are laid down. If it would be adopted, then I think the conflicts can be resolved and it can be reduced to a get level. So then the core principles, we believe that Vasudhaiva Kutumbakam is the G20s, where we say that the whole earth is our family, they are part of one family, and we have one future. If we have to secure the future, then in all such circumstances, we need to consider the world at large as a family. So if in family, even if we have some kind of difference of opinions, we try to resolve it. We try to adopt all those means by which we can conciliate it, we can resolve it, and without indulging into any kind of aggression, we try to peacefully come to a conclusion where the conflicted interest can be harmonized. Then non-violence is also principle on which we rely. There are almost all the, I am not biased, I am not talking about only few religion, Hinduism, Jainism or Buddhism. I think the non-violence is the essential part of almost all the religion of world, even the Sikhism, in Islam also, in Christianity also. Almost in all the religious texts, they talks about that there should not be any violence. The core idea of all the religious texts remains same, where none of the religious texts provides of any scope where the people should indulge into any kind of conflict or they should indulge into any kind of violence. So dharma is also, see, all those texts these are various kind of approaches where we cannot hurriedly complete each and every dimensions of it. This subject of international law and Indian value system, where one aspect itself can be discussed at length in one session. Like this concept of dharma itself, if you need to interpret from multiple resources, you may have you need to indulge into various kind of theories and practices which take so much of time to discuss. So if many of the people they says that even in the Mahabharata, people say that it was the fight for dharma to establish it, that what is righteousness. So if you read it, there are what is the concept of dharma, how to establish it, and what are the core values which we can deduct, we can draw an analogy from all those texts to be implemented larger scale at international law. Those would be the relevant part of it. Then satyagraha is the principle of non-violent resistance of civil disobedience. By any way, we should not indulge into such practices which try to challenge the authorities. Then pluralism and diversity is also the text. These values have influenced India's approach to international law, which is based on principles of sovereignty, mutual respect, peaceful coexistence. If the last part we will focus on, this would be considered as a gist of all the various value system. That if there is a principle of sovereignty, sovereignty means the sovereign who stands for just cause, sovereign who is trying to establish the principles of dharma, sovereign who believes in human beings and the core values
which are fruitful for strengthening the human beings in society. There is a mutual respect amongst the human beings in society. If there is a peaceful coexistence and if there is a rule of law, not the rule of any individual, then if these principles be adopted, then I believe the working collaboratively with other nations to uphold these principles and promote global peace would be more sufficient. Now, you may find that when we talk about the Indian value system, why we don't implement in many real occasions. Say, for example, we have differences. We being the diplomatic relations with other states. When it comes to the European Union, sometimes you find that our approach is different. When it comes to some of the countries where we have some conflicts, like Pakistan and China, then approach is different. But in all those circumstances, even if you have closely monitored the approach of Indian politics or the diplomats, they have never encouraged or instigated any country to indulge into such states where the conflict can be converted into war. So the approach with this, say for example, when we signed the non-proliferation of the CTBT and the other obligations, there also our commitment to the world was that though we are the nuclear power state, but we will always exercise the no first use of all those weapons. Though now the circumstances are changing, the approaches are changing, and the statements are coming in different ways, where some of the politicians are saying that in case if the situation arises, India should think on having the first use of nuclear weapon in specific circumstances. But all those statements are political statements, right? When it comes to the statement from India, we have never heard this, that in case if situation arises, we will indulge into nuclear war, because now this is the era of artificial intelligence and the technologies and science has developed so much that no country can afford the wars, because we have the weapons of mass destructions, we have artificial intelligence where the machines are created to fight for the states, we have such kind of lethal weapons whereby just triggering one, it can destroy the whole civilized nation. So at this juncture where there are so many reasons of conflict among the states, what are the possible venues which we can explore to maintain world peace? And therefore, when it comes to the Indian principles or the Indian value systems on which our principles, our policies are in majority are based, if at larger extent the same can be implemented for the world peace in the world politics with reference to international law, then I think we can prevail to to have world peace. And then only we can think that we are living in a world where less conflicts are prevailing and much of the states are in peaceful state. So these are some of my views with reference to today's I have kept it very general in nature, and these are my views with reference to having the revisiting the international law with reference to Indian value system. I again conclude with this, that in case if we have to achieve the desired goal with regard to the international principles of international law, I think the Indian value system would be of great help to reduce the conflict in larger context. I am once again thankful to the organizers and the vice chancellors for having me here, and I feel sorry for any mistake if I have committed, because I am not that much thoroughly expert in the area, but somewhere long back I studied the international law. But and this is perhaps I think must be concern for every individual. If we all can build an opinion that whatsoever it may be, if we can convince any individuals or the
politicians or whosoever in an influential position to always be on the side of peace rather than war, I think the purpose of these kind of academic functions would be achieved. Thank you, one and all. Thank you. Thank you very much, sir, for your thought-provoking ideas. Now, it is open for students. Any question related to how international law used to play important role sorting out international disputes with the help of Indian value system? Any question, please? Sir, please come here. Good evening, sir. My name is Yogesh. I'm a student of International Relations, second year. Yes. So my question is related to the UN clause, United Nations Convention on Laws of Sea. So, sir, China is one of the countries in 1982 who was founding members of the UN clause at the time. But from then, at the present time, many times China is keep violating the UN clause in the South China Sea. So, as India is, as if you keep in mind G20 presidency in India, so how India has the possibilities to improve the situation, and like Indonesia, Japan, and South Korea are also the part of G20. So how you see that India can do? India can take some of the steps so that the situation can improve regarding the UN clause. Thank you. So, many of the states or the parties to the G20, they tried to have different agendas also. But since the agenda items are well settled, I think the India has always tried to play a neutral role, indulging in either side, be it as a China or at US. In majority of the cases, you will find that India has adopted the neutral way. At the most, what they can do, if the ambassadors or the concerned ministers of both the states can be provided an opportunity to discuss their concerns on these aspects during the G20s. I think that would be a contribution of our university. Thank you. Thank you. Thank you. Namaskar. Yes, I think you can. You can discuss with sir on a cup of tea. Why? Because we are getting late. So now I request Dr. Nastakoski, please introduce the next speaker, please. Namaskar, sir. Dear students and colleagues, we are fortunate enough that we have amongst us Professor Arun Divakar Nath Bajpayee ji, Vice Chancellor Atal Bihari Vajpayee University, Bilaspur, Chhattisgarh. Professor Bajpayee is a spiritually enlightened person who has a nationalist perspective of dealing with socio-economic, political, and academic issues, and has made extremely important academic and administrative contributions. He is a professor in the economic studies and specializes in spiritual and development economics. Sir has a very prolific academic experience of 37 years and has successfully completed several research projects of different funding agencies. The focal themes of his projects range from skill mapping, infrastructure development, adoption of modern technologies in agriculture, energy consumption in rural areas, industrial consumption of energy, decentralized planning, financial crisis in state universities, to name a few. Also, he has successfully guided 29 PhD theses, 2 pre-PhD dissertations, 25 MPhil dissertations, and 13 MA dissertations. Prior to Atal Bihari Vajpayee University, he has served as a Vice Chancellor in different universities, such as Himachal Pradesh University, Shimla, from 2011 to 2017, Avdesh Pratap Singh University, Rewa, Madhya Pradesh, from 2003 to 2007,
Apart from this, from 2003 to 2004, he has also had the additional charge of Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya, Chitrakoot, Madhya Pradesh from 2003 to 2004. During his tenure at the Vice Chancellor of Himachal Pradesh University, he has the following achievements to his credit. He introduced the Kul Geet of Himachal Pradesh University. He brought out the Vision Document 2020 of Himachal Pradesh University, and he transformed the university from a B grade to an A grade by NAC. Nevertheless, he has also made immense contributions in highlighting the Indian knowledge systems and communicating economics. For this contribution, he has represented Association of Indian Universities in IPSA, that is India, Brazil, South Africa Summit on Education at Durban, South Africa in 2011, and also Association of Indian Universities at International Association of Universities Conference at Nairobi, Kenya, 2011, and Indian Economic Association at the International Economic Association Conference, Lisbon, Portugal in 2002. Additionally, he has also served as the member office bearer in different academic, professional, and administrative bodies in 77 institutions of national importance that immensely reflects his rich experience and engagement. Professor Dr. Bajpayee ji has delivered about 300 expert lectures in various institutions and universities. The subjects of lectures assimilated lineage of knowledge from Vedic treasures to modern art, science, philosophy, and spiritual wisdom. The Honorable Vice Chancellor has also contributed academically through various important monographs on topics such as Adhyatmatak, Rashtravad, Yoga, Spirituality and Social Harmony, Concept of Philosophy, Neglect of Human Elements in Economic Theory. He has also written on topics of contemporary relevance such as emotional unity in diversity, natural as well as possible, and geo-environment and sustainable rural development. The list is very exhaustive in nature, and one surely feels humbled to go through his dynamic profile. It is because of his vast exposure to the aforesaid themes that his session on the role and the relevance of spiritual economics in world peace is going to be highly interesting, motivating, and highly absorbing. Respected Honorable Vice Chancellor, sir, we all look forward to hear your kind self. I'm sure that your expert opinion on the role and relevance of spiritual economics in world peace will enlighten the students, scholars, and the faculty. So. Thank you, Nishtaji, for having spoken so good about me, so exhaustive about me, which I never desired. Even then, for the sake of information to all the students and my friends, it was good that you must know the speaker. I have many friends from Himachal Pradesh University who know me so well. I don't want any introduction to them. And also who are in academics, especially in economics. They also know me. I am thankful to Professor Raghavendra Tiwari ji for having invited me to this very relevant, very important discourse on G20, India's presidency, as how India is going to set the norms, initiate the norms for the whole of the world. I know him since long. Earlier he was Vice Chancellor of Sagar University, then also we were in touch. Before that he was a professor at Mizoram University. I was invited by him there also when he was in Mizoram. Sagar also many times. Since he joined this university, he was insisting that I should come. But I myself was not able to come, and
Day before yesterday when he called me, आपको आना ही होगा, आना ही होगा. I didn't have any option but to come. And I have come for two reasons. One, my personal affinity to Professor Raghavendra Tiwari ji. Another for the subject which I don't know who has given this topic to me, Nishtha ji or many of you or Raghavendra. I don't know who has given this topic to me. There may be very few persons who specializes in spiritual dimensions of academics. When you talk about spirituality, it means that you should have saffron clothes, you should be Granthi somewhere, you should be Pujari somewhere, Maulvi somewhere, you should be any Baba, Bapu somewhere on any channel giving discourses as it's happening today everywhere. I am not that type of. I had full opportunity to join any of these streams. There has been many Babas and Bapus after me also. उनको ज्वाइन कर जाए, उनको ज्वाइन कर, उनके साथ चले जाए, उनके शिष्य बन जाए, उनके शिष्य बन जाए. कोई सन्यासी आकर आध्यात्मिकता की बात कहे तो आप तो ही सोचोगे तो इनका काम है, ये तो करेंगे ही इसकी बात, उसका असर नहीं पड़ता है. और इसका प्रभाव मैं बताऊं आपको कि इतने चैनल्स में धर्म की बात हो रही है, भीड़ लगती है बड़े बड़े प्रवचनों में. अभी भी 2 लोग ऐसे हमारे मध्य प्रदेश में पैदा हो गए हैं, किलोमीटर लंबी लाइन लगती है उनसे मिलने के लिए. लेकिन जो धर्म के प्रभाव हैं, जैसे कि ईमानदारी बढ़नी चाहिए, प्रेम बढ़ना चाहिए, विश्वास बढ़ना चाहिए, लोगों में दया का भाव आना चाहिए, करुणा होनी चाहिए, एक दूसरे त्याग करना चाहिए, समाज समरस होना चाहिए, राष्ट्र में राष्ट्रभक्ति बढ़ना चाहिए, ये तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है. इसका मतलब है जिस उद्देश्य को लेकर के धर्म के लोग प्रवचन कर रहे हैं उसमें कहीं कमी है, वो धर्म है नहीं. इसलिए मैं धर्म की बात नहीं करता हूं. मैं आध्यात्मिकता की बात करता हूं. प्रोफेसर राघवेंद्र तिवारी जी यहाँ पे हैं. मैंने इनकी अनुपस्थिति में अपने व्यक्तिगत संबंधों का उल्लेख किया था. मैंने कहा कि आपसे जो हमारे व्यक्तिगत संबंध है बहुत लंबे समय से वो, और जो विषय दिया है इन दोनों के कारण मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ. विषय भी हमारे मनोमस्तिष्क की आत्मा के बहुत निकट है. तो मैं जो बात कर रहा मैं धर्म की बात नहीं करता हूँ, मैं आध्यात्मिकता की बात करता हूँ. यदि भारतवर्ष में धर्म और आध्यात्मिकता और रिलीजन को कोई अंतर नहीं माना गया, लेकिन जिस प्रकार से मजहब रिलीजन को धर्म का पर्यायवाची मान लिया गया, उससे थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हुई है. मैं इसकी बात ही नहीं करता हूँ. धर्म का उल्टा कोई अधर्म शब्द बन सकता है, लेकिन आध्यात्मिकता का कोई उल्टा शब्द नहीं है. आध्यात्मिकता अधिक वैज्ञानिक है. जिस व्यक्ति के अंदर आत्मा है वो आध्यात्मिक है. आत्मा की उपस्थिति सारे संसार के सारे धर्म मानते हैं.
हम आत्मा के नाम पे मानते हैं, कोई रूह, कोई स्पिरिट, कोई सोल के नाम पर। अंतर इतना ही हम मानते हैं कि हमारी आत्मा जन्म से पहले भी थी, हम मृत्यु के बाद में भी रहेगी, अजर है, अमर है, और आत्मा शरीर को धारण करती है। और गैर सनातनी परम के धर्म ये मानते हैं कि नहीं, इस शरीर में आत्मा रहती है, बस जन्म से पैदा होती और मृत्यु के साथ खत्म हो जाती। इसलिए पूर्व जन्म और पुनर्जन्म की संस्थाएं नहीं, इसलिए सारे जीवन मूल्यों में अंतर दिखाई पड़ता है। बिल्कुल विपरीत, रेसिप्रोकल 1/x जैसी वैल्यू सिस्टम होता है, वैसे दिखाई पड़ता है। लेकिन आत्मा की उपस्थिति के बारे में सभी लोग चर्चा करते हैं। जब प्रोफेसर तिवारी ने विषय दिया होगा इंडियाज प्रेसिडेंट्स टू सेट द नॉर्म्स फॉर द वर्ल्ड ओवर, तो नॉर्म्स हम किसके आधार पर सेट करें, सोचा होगा। हम नॉर्म्स उसी पर तो सेट कर सकते हैं जिसमें हमारी विशेषज्ञता हो। क्या साइंस टेक्नोलॉजी में हम अमेरिका, जापान, रूस, फ्रांस इत्यादि से तुलना कर सकते हैं? नहीं। क्या हम आर्म्स एम्यूनिशन में उनसे तुलना कर सकते हैं? नहीं। क्या हम आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक उपलब्धियों की दृष्टि से उनसे तुलना कर सकते हैं? नहीं। क्या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तुलना कर सकते हैं? नहीं। क्या हम जीडीपी के आधार पर तुलना कर सकते हैं? नहीं। क्या हम पर कैपिटा जीडीपी के हिसाब से कभी सामना कर सकते हैं देशों को? नहीं। तो हमारी विशेषज्ञता क्या है? हम जाने किस लिए जाते हैं पूरे विश्व में? विश्व में भारतवर्ष पहले भी वो आज भी जाना जाता है। भारतवर्ष एक आध्यात्मिक देश है, भारतवर्ष एक ऋषियों का देश है, भारतवर्ष मनीषियों का देश है, भारतवर्ष मुनियों का देश है। तो जो आध्यात्मिकता हमारी कोर में है, क्रक्स में, विशेषज्ञता में, इसी आधार पे हमको नॉर्म सेट करना है वर्ल्ड के लिए। मैं पूरा विश्वास है, पहले भी जब भारत के पास लोग आते थे, जब विश्व अशांत होता था, तो भारत की शरण में आते थे। और आज भी जब विश्व अशांत होता है तो भारतवर्ष के अलावा कोई दूसरा देश, कोई दूसरी जमीन नजर नहीं आती, उनकी नजरों को दौड़ते चले आते हैं यहाँ पर शांति प्राप्त करने की। देखिए जाके हरिद्वार में, ऋषिकेश में, वृंदावन में, काशी में, सारे मंदिर मस्जिदों में किस प्रकार भरे रहते हैं। इस्कॉन जैसी संस्था बना दी विदेशियों ने, जहां पर की शरण पाने के लिए, शांति पाने के लिए लोग आते हैं। तो जो नॉर्म सेट करना है, किसके आधार पर नॉर्म सेट करेंगे हम? यदि हम नॉर्म सेट करने लगे उन्हीं वेस्टर्न मॉडल के आधार पर, मुझे लगता है कहीं गलती करेंगे। हमें स्पिरिचुअलिटी के आधार पर ही नॉर्म सेट करना है। स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी केवल डेफिनेशन देने वाली कोई बात नहीं होती। बहुत सारांश में हमारी जो आत्मा है उसकी विशेषताओं को जीने का नाम आध्यात्मिकता है। हमारी जो आत्मा है उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको जीने का नाम आध्यात्मिकता है। मैं जीने की बात करता हूँ। पढ़ने के लिए बहुत बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं, प्रवचनकर्ताओं के बारे में बता ही चुका हूँ। हमें स्पिरिचुअलिटी के टीचर्स नहीं चाहिए, प्रीचर्स नहीं चाहिए, हमें प्रैक्टिशनर्स चाहिए। तो जीता है वही इसकी बात करने का अधिकारी होता है। जो मैं कह रहा था, प्रवचन का प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता, जो प्रवचन करता है वो जीते नहीं आध्यात्मिकता को। वो उसी तरह से कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरह है, जैसे कोई कॉर्पोरेट होता है, जैसे अदानी है, अंबानी है, सिन्हानी है, वैसे ही हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स भी हैं। उनके पास में बड़ी बड़ी जमीनें, बड़े मकानात हैं, बड़े हवाई जहाज हैं। एक को तो मैं ही जानता हूँ, 5 चार्टर्ड प्लेन्स उनके पास रहते हैं हमेशा। इतने बड़े आध्यात्मिक, मैं उनकी बात कुछ नहीं करना चाहता हूँ। पहली विशेषता, जैसे मैंने अभी बताया, आत्मा हमारे जन्म से पहले भी थी और बाद में भी रहेगी। तो एक चिरकालिक अप्रोच, एक लॉन्ग टर्म अप्रोच, एक एटर्नल अप्रोच, एक सस्टेनेबल अप्रोच होना चाहिए जीवन में। और हमारा जो आज का ज्ञान सिखाता है, नथिंग सक्सीड्स लाइक ए सक्सेस, ये इनके इन प्रकार हमको सफलता प्राप्त होनी चाहिए। तात्कालिक उपलब्धि में ही हम परेशान रहते हैं। तो तात्कालिक उपलब्धि में परेशान रहेंगे, वो आध्यात्मिक नहीं हो सकता है। आध्यात्मिक व्यक्ति जो है शनै शनै स्टडी मैनर में काम करता चला जाएगा,
और यहीं पर एक ऑप्टिमम का भी उपलक्ष्य आ जाता है। हम सभी प्रोफेसर्स हैं यहाँ बैठे हुए, सब टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं। यदि हमको एनुअल एग्जामिनेशन देना है तो हमारे लॉन्ग टर्म अप्रोच जो 9 मंथ्स की पढ़ाई और 2-3 महीने की परीक्षा यही होगा। इस सेमेस्टर में आना है तो 4 महीने पढ़ाई, 2-3 महीने की परीक्षा था, और हम सब लोग पढ़ते रहें इसी तरीके से। लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसे विद्यार्थी हों जो इस अप्रोच विश्वास ही नहीं करता हो, पहले तो खूब मौज मस्ती करेंगे, एग्जामिनेशन से कुछ दिन पहले पढ़ाई शुरू करेंगे। कुछ लोग टीचर्स के पास में जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर ले आए। कुछ लोग समझिए क्या है कि अनफेयर मीन्स का उपयोग कर देंगे। कुछ लोग डायरेक्ट टीचर्स के पास चले जाते हैं नंबर बढ़ाने के लिए, और कुछ लोग सीधे जहाँ कंप्यूटर रिजल्ट बनता है वहीं चले जाते हैं। दोनों में बेसिक डिफरेंस है, एक स्पिरिचुअल अप्रोच है कि एक स्पिरिचुअल अप्रोच है। यहीं पर ही बात आती ऑप्टिमम की भी। हर एक का लॉन्ग टर्म सबका अलग अलग होगा, क्योंकि आत्मा का स्तर सबका अलग अलग है, सबका बीज अलग अलग है। एक गेहूं का बीज बोएंगे, उसके बोने में, अंकुरण होने में जितना समय लगता है वो कद्दू के बीज में ज़्यादा लगेगा, धान के बीज में कम लग सकता है, भिंडी बीज अलग लगेगा। सबके बीज में निहित होता है कि बोने अंकुरण होने में कितना समय लगा। दैट जेस्टेशन पीरियड इज जस्ट एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर सीड, उससे जुड़ा हुआ है। वही चीज़ हमारे साथ में भी होती है। तो आध्यात्मिकता के साथ में एक लॉन्ग टर्म अप्रोच की बात आएगी, और लॉन्ग टर्म अप्रोच नहीं है तो बात नहीं बन पाएगी। और वहीं पे ऑप्टिमल की बात भी वहीं पर आ जाती है। जिस आत्मा की बात भारतवर्ष ने कही, और जिसको कि इसने G20 ने अपना मॉडल बनाया वसुधैव कुटुंबकम का, 1 फैमिली 1 अर्थ 1 फ्यूचर। मैं पूछता हूँ, स्लोगन देना तो बड़ी बात होती है, वसुधैव कुटुंबकम हमने कहा था, ग्लोबलाइजेशन तो अभी बात आई है। कितने पहले ऋषि ने कह दिया था, अयम निजः परो वेत्ति गणना लघुचेत साम। ये छोटे मन की बातें होती हैं, मेरा है तेरा है। अयम निजः, ये मेरा है, अयम निजः परो वेत्ति, ये तुम्हारा है। गणना लघु से छोटे मन की बातें होती हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित्र वाले लोग तो पूरी वसुधा कुटुंब मानते हैं। उसी का हमने एक्सटेंशन किया, 1 फैमिली 1 अर्थ 1 फ्यूचर। लेकिन बात कहने से तो नहीं हो पाएगी। चाइना को बुला लीजिए, अपनी अर्थ में जोड़ लीजिए, आप पाकिस्तान जोड़ लीजिए, बांग्लादेश में जोड़ लीजिए, अमेरिका को जोड़ लीजिए। G20 में वस्तुता क्या G47 है, आप सभी लोग जानते होंगे। G20 में 19 तो कंट्रीज है, यूरोपियन यूनियन नामक कंट्री दे दिया। यूरोपियन यूनियन में पहले जो है 48 कंट्रीज थे, ब्रेक्सिट के कारण ब्रिटेन अलग हो गया, तो 47 कंट्रीज का ग्रुप वो है। तो लगभग 47 समझिए कि कंट्रीज आ जाते हैं। इन 47 देशों में आप स्टैटिस उठा कर देखिए, वर्ल्ड की 85% GDP है, लगभग 75% पॉपुलेशन है, और उतना ही एरिया है इनके पास में। अब पूरे विश्व में जितने देश हैं, आप संख्या देखिए यूनाइटेड नेशंस में 195 कंट्रीज के आसपास हैं। 45 माइनस कर दीजिए, बाकी जितने बचेंगे उनके पास में कितनी GDP, 15% GDP रहेगी, लगभग 25% पॉपुलेशन रहेगी, उतना ही एरिया बचेगा। वो बेचारे देश किस प्रकार से काम करेंगे। और यहीं पर ही नॉर्म सेट करने की बात आती है कि भारतवर्ष को क्या भूमिका अदा करनी पड़ेगी। जब हम वसुधा को पूरा एक मानते हैं तो दूसरी विशेषता हमारी ये होती है कि जो आत्मा इस हॉल में, हमारे इस विश्वविद्यालय के हॉल में, सेंटेनोसी पंजाब हॉल में, वही आत्मा पूरे पंजाब में है, वही पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में है, पूरे ब्रह्मांड में है। हमने सर्व खलमिदं ब्रह्म, इससे अंतर क्यों होना चाहिए? खंड खंड करके भूखंडों के आधार पर अंतर नहीं होना चाहिए। ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड समरी डिफरेंसेस है। जितनी बाउंड्रीज बनाई गई हैं सब आर्टिफिशियली क्रिएटेड है। अभी पंजाब के चीफ मिनिस्टर चाहे तो किसी जिला बना दें, किसी तहसील बना दें, किसी ब्लॉक बना दें, तो क्या समझिए बन गए क्या? वो बन सकते हैं आर्टिफिशियली, आप एडमिनिस्ट्रेटिव बनाते चले। ऐसे बहुत सारे स्टेट्स बन गए, बहुत सारे राष्ट्र बन गए। मैं पूछना चाहता हूं, सूरज कभी अंतर मानता है? धरती वास्तव में कभी मानती है? आसमान कभी अंतर मानता है? हवा जब बहती तो अंतर को मानती। चंद्रमा ने कभी अंतर माना? ये गैलेक्सीज ने कभी अंतर माना किसी ने? वो तो सबको एक जैसा मानती है। ये है वसुधैव कुटुंबकम का भाव। इसको लेकर के जब चलेंगे हम,
तब जाकर दूसरी विशेषता आध्यात्मिकता की आती है। हम राष्ट्रों की बाउंड्रीज को हमें जो है खत्म करना पड़ेगा। हमें ये सारे भेद जो मिटाए हैं बने हुए उन खत्म करने पड़ेंगे। और साथ ही साथ एक और विशेषता आती है, जो देश दूसरे देश की बाउंड्रीज पर आक्रमण करता है वो गलत करता है, उसकी भर्त्सना होनी चाहिए, उसको यूनाइटेड नेशंस के आधार पर सबको मिलकर उस चैलेंज करना चाहिए। जब कोविड-19 की बात आई थी, सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे थे। एक छोटा सा आदमी जबलपुर यूनिवर्सिटी में बैठा लैपटॉप पे काम कर रहा था, उसने लिखा था देयर शुड बी ग्लोबल डिस्टेंसिंग फ्रॉम चाइना, देयर शुड माइनस चाइना प्रोग्राम वर्ल्ड ओवर। और लिखा ही नहीं था, जितने प्रीमियर्स थे वर्ल्ड के सबको चिट्ठी लिखी थी मैंने, और उसके आसपास तीसरे दिन हमारी जो है ईमेल हैक हो गया था और कुछ पैसे भी निकल गए थे उसमें से। बात दूसरी है, लेकिन कोशिश मैंने की। क्यों नहीं करते? कहां से साहस आएगा? साहस इसलिए नहीं आ पाता है कि जो मेटलिस्टिक लोग हैं उनमें साहस नहीं होता। जितने भौतिकवादी होंगे, पदार्थवादी लोगों, उनके पास साहस नहीं आ सकता। साहस केवल आध्यात्मिकता देती। आप ही के भगत सिंह चढ़ गए, सूली पर चढ़ गए। क्यों चढ़ गए? किस लिए चढ़ गए? रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, बड़े बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी क्यों चढ़ गए? अपने देश की मिट्टी की खातिर चले गए। यदि भौतिकवादी होते तो कोई दुकान खोल के बैठे थे, जब स्वतंत्र हो जाएंगे तो अपनी दुकान बढ़ाएंगे, जाकर नेता बन जाएंगे, हम क्यों सूली पर चढ़ जाएं? आध्यात्मिक व्यक्ति के पास ही साहस होता है। कायरता और आध्यात्मिकता साथ साथ नहीं चला करती है। कायर व्यक्ति कोई आध्यात्मिक हो, आध्यात्मिक व्यक्ति कभी कोई कायर नहीं हो सकता। तो जो मैं निवेदन कर रहा था, अपनी बाउंड्रीज की सुरक्षा करना, दूसरी बाउंड्रीज पर कोई आक्रमण नहीं होने देना। उसी तरह से हमारा शरीर की सुरक्षा करना हमारा धर्म है, और हम दूसरे शरीर पर आक्रमण नहीं करेंगे। ये दूसरी विशेषता है, वसुधैव कुटुंबकम को साथ साथ देने वाला। सारे भूखंड एक है। और तीसरी विशेषता आती है, जो आत्मा हमारे शरीर में है, वही राघवेंद्र तिवारी जी के अंदर में, वही मैडम के पास में, ये सारे के पास में जितने लोग बैठे हैं उनके पास एक ही आत्मा का निवास करती है। विश्व में 777 करोड़ जनसंख्या है, सब में एक ही आत्मा निवास करती है। और अभी तो 15 लाख बायोडाइवर्सिटी की मैपिंग हुई है। हमने 84 लाख योनियों की बात की। गुरु ग्रंथ साहब में गुरुदेव जी ने कहा है 84 लाख योनियों की बात की। सारी 84 लाख योनियों में एक ही आत्मा की वास है। जितना एनिमेट इनएनिमेट वर्ल्ड है उसमें अंतर क्यों? एक नूरदेश सब जग उपजा, कौन पले कौन मंदे। हम खाली पढ़ते रहेंगे, उसको जीवन में उतारने का नाम आध्यात्मिक होते। हम अंतर नहीं करते। हमने कहा सर्व खलमिदम ब्रह्म, हमने सर्वे भवन्तु सुखना की बात की, हमने संगच्छध्वम की बात की, हमने संभोजना से मानसाम की बात की, हमने सर्वे भवन्तु सुखना से लेके सबको एक साथ लेके कहा है। हमने कभी नहीं कहा किसी धर्म के आधार पर, किसी भाषा के आधार पर, किसी क्षेत्र के आधार पर और किसी प्रजाति के आधार पर। हमने पक्षियों में, हमने पशुओं में, हमने नदियों में, हमने पर्वतों में, सारे जितना ब्रह्मांड सब में उसी आत्मा का वास्ते का। इसकी तीसरी विशेषता है। तो आध्यात्मिकता की विशेषताओं को उतार के हम देखेंगे तो आएगा एक सार्वकालिकता का सिद्धांत, सार्वभौमिकता का सिद्धांत और सर्वसमावेशिकता का सिद्धांत। और तीनों सिद्धांतों को लेकर के हम स्थापित करेंगे तो सही मायने में एक नॉर्म सेटर, नॉर्म्स इनिशिएटर भारतवर्ष बनेगा G20 कंट्रीज के लिए। हम सभी लोग जानते हैं जब बात स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स की आती है तो हम एक मॉडल के रूप में बात करते हैं। मॉडल भी हमारे पास में जो है, जो वेस्टर्न मॉडल चलता चला आ रहा है, वो ग्रोथ लेड जस्टिस की बात करते हैं। जस्टिस की बात तो की, ऐसा तो नहीं जस्टिस की बात नहीं की। ग्रोथ पहले, जस्टिस बाद में। हमारे इकोनॉमी से प्रोफेसर राजेश जी बैठे हुए और सब लोग यहाँ पर हैं, सब जानते हैं। यहाँ तक कहा गया लिटरेचर में कि कुछ लोग यदि भूखे मर भी जाएं तब भी कोई बात नहीं है। हमें पहले ग्रोथ की बात करना है। ग्रोथ में बास्केट बढ़ेगी, बास्केट बढ़ने के बाद में डिस्ट्रीब्यूशन की बात करनी होगी। मैं एक मॉडल देना चाहता हूं। घर में हमारे खाना बनता है, मैं विशुद्ध स्पिरिचुअलिटी की बात करूं, घर में खाना बनता है हमारे, तो बताइए जब माँ खाना बनाती तो उसके पीछे कंसिडरेशन जोन में क्या क्या चीजें आती हैं? ये लड़का वाइस चांसलर है, ये लड़का प्रोफेसर है, लड़का IAS ऑफिसर है, बिजनेस पर्सन, उसी आधार पर खाना बनता है। ये खाना इसलिए बनता है कि कितने लोग हैं, कितने बुजुर्ग हैं, कितने बच्चे हैं, कितने युवा हैं, कितनी महिलाएं, सबके हिसाब से खाना बनता है। नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूशन करते समय
माँ क्या सोचती है जब खाना बना के परसती है तो वाइस चांसलर को सोने की थाली में परसेगी, जो प्रोफेसर हो उसको जो चांदी थाली में परसेगी, जिसने कुछ नहीं कमाया उसको कहकर तुम पत्तल में आओ दोने में तुम खाना दे दें, कह देंगे। माँ जो है चिंता करती उस व्यक्ति की जिसने कुछ नहीं कमाया और उसकी थाली में कहीं घी कम तो नहीं रहे, उस बच्चे के मन में ये भाव तो नहीं आ जाए कि माँ हमारे साथ में दुभांति कर रही है, सौतेला व्यवहार कर रही है। सबसे ज्यादा चिंता उसकी करती। इस आधार पर देश की और विश्व की नीतियां कब बनेंगी, और नीतियां नहीं बन सकती तो आध्यात्मिकता की बात करना बेकार है। और ये जब मॉडल चेंज होगा, हमारी स्पीच इकोनॉमिक्स कहती है देयर शुड बी चेंज इन द मॉडल, यू टर्न मॉडल। वी शुड जस्टिस लेड ग्रोथ। फर्स्ट जस्टिस, माँ पहले खाना खिलाएगी, बच्चों की चिंता करेगी, उसके बाद में सारे बच्चे विश्वास अर्जित करेंगे, विश्वास उनकी एफिशिएंसी लेवल बढ़ेगी, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, अपने आप ग्रोथ होगी, अपने आप समझ चीजें बढ़ती चली जाएंगी। ये यू टर्न स्पिरिचुअलिटी के आधार पर जो मॉडल चेंज होगा, हमें डेफिनेशंस चेंज करनी होंगी। मेरे इकोनॉमिक्स स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स की बात, में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हूँ, हमारी डेफिनेशन में बता दिया गया, रॉबिन्स ने कहा है कि आवश्यकताएं अनंत होती हैं, उनको उपयोग करने वाले संसाधन सीमित होते हैं, और सीमित संसाधनों में वैकल्पिक उपयोग होते हैं। इनके बीच चुनाव का नाम अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स नथिंग बट ए चॉइस बिटवीन अनलिमिटेड वांट्स एंड यू सी रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। कहा दिया ठीक है, संसाधन सीमित होते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट, बट आर वांट्स अनलिमिटेड? क्या वास्तव में आवश्यकताएं अनंत होती हैं? थोड़ा सा अपने ऊपर उठाकर देखें, हम एक दिए गए समय में हम कितना खाना खा सकते हैं? दिए गए समय हम केवल लिमिटेड ही खाना खा सकते हैं। मेटाबॉलिक सिस्टम के आधार पर कोई ज्यादा खाया, कोई तो कम खाएगा, और एक समय के बाद में बॉडी क्लॉक के आधार पर ही भूख जो है बाद में आएगी हमारे पास। एक दिए गए समय कितने कपड़े आप पहन सकते हो? मैं तो बहुत सारे शूटिंग से शौक है, तिवारी जी पता है, बहुत सारे सूट्स में रखे हैं, लेकिन एक समय में एक पैंट शर्ट कोट पैंट साइज ज्यादा नहीं पहन सकते। एक समय में आप कितना स्थान घेर सकते हो? खड़े हो गए तो आधा फुट, बैठे हो गए तो 1 फुट, लेटे हो गए तो 2.5 फुट, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। जितनी भी वांट्स हैं, एक बार मैं बोल रहा था, बड़े प्लेटफॉर्म बोला था, बोले नहीं साइकोलॉजी की वांट्स अलग होती है। और नंबर 1, whether the wants of the psychology should be tantamount as the wants of the body, पहले तो ये डिसाइड करना है हमको। दिमाग की जो मनोकामना है उनको हम आवश्यकताओं के बीच माने, और मैं कहता हूं कि मन की जो कामनाएं भी सीमित होती हैं, कल्चर के हिसाब से सीमित हुआ करती हैं, वो भी सीमित होती हैं। सोचने का नजरिया अलग अलग होता है, कहने का नजरिया अलग अलग होता है, और इसको लेकर के निष्ठा जी मेरा परिचय दे रही थी इंटरनेशनल इकोनॉमिक एसोसिएशन में 2001 में लिस्बन में जब मेरी बातचीत हो रही थी एक नोबेल लॉरेट RM सोलो के साथ में, तो वो भी ये कह रहे थे व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, इकोनॉमी शुड बी कल्चरली स्पेसिफिक, इट शुड बी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। हमने नो, इकोनॉमी शुड बी कल्चरली स्पेसिफिक। बोले गिव मी एग्जांपल। वो कहने लगे एम्प्लॉयमेंट यदि चाहिए सबको, यदि आप ज्यादा वेतन दे दो, प्रलोभन दे दो, तो लोग रोजगार में आ जाएंगे। मैंने कहा नहीं आएंगे। बोले कैसे नहीं आएंगे? हमने भारतवर्ष का युवा और युवती बेरोजगार रहना पसंद करेगा अपेक्षाकृत किसी कसाई खाने में रोजगार पाने के लिए, या बार गर्ल के रूप में किसी भी डांस हाउस में डांस करने से। चाहे जितनी आप बड़ी तनख्वाह दे दी, वो नहीं जाने वाले। फिर बोले यूटिलिटीज, यूटिलिटी। मैं इकोनॉमिक्स जो स्टूडेंट से थोड़ा सा बताना चाहूंगा, एक तो यूटिलिटी चाहे जहाँ से प्राप्त हो पाए, चाहे हमको शराब पीने से मिले, चाहे पानी पीने, चाहे दूध पीने से मिले, हम नो सर। If impacts of drinking glass water and wine and milk are different on the psycho-metabolic system of the individual, then utility is bound to be different. You cannot equate utilities altogether. ये आपने अपने लिए बना कर रखी है। आप समझ लगभग 45 मिनट तक 1:1 डिस्कोर्स बिटवीन मी एंड दैट नोबेल लॉरेट। आपकी शुभकामनाओं से जब अंतिम समय आया, the best orator prize was given to me at International Economic Conference at Lisbon 2000। रिकॉर्ड में सारी चीजें आई, केवल इसी बात को लेकर के मैं कह रहा था। ऐसे ही जब डेफिनेशन की बात आती है तो can't we redefine economics on spiritual lines when we know that wants are limited? Then why are teaching unlimited wants? Because when we're teaching unlimited wants, that goes in the abstract mind of the individual that we should have unlimited wants.
How can you have unlimited norms? On one side, when you are teaching indifference, you have AB line. AB line is that line which controls, which regulates your indifference curve for the sake of equilibrium. Then can't there be cultural line as such? Why income line, AB income line? That AB line may be cultural line also. That too control, that too regulates as such. मैंने redefine किया economics. मैंने simple इतना ही किया है कि अर्थशास्त्र सीमित आवश्यकताओं और सीमित संसाधनों जिनके वैकल्पिक उपयोग हैं उनके मध्य संतुलन का नाम है. I am not talking of choice between. Choice gives you competition. We are not here to compete with anything. Our entire system of spirituality believes in cooperation, not in competition. हमने कोई बात ही नहीं की प्रतियोगिता की. हमें आप में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं. सहयोग की बात होनी. मैंने संतुलन की बात की और उसको भी मैंने कई जगह प्रेजेंट किया है. नाउ पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग बाय डेफिनेशन. उसी से क्या है फिर इंस्टीट्यूशंस डेवलप होंगी, उसी से व्यवहार डेवलप होंगे, उसी से थ्योरम्स नई बनेंगी, उसी से मॉडल्स नए बनेंगे. तो रॉबिन्स की डेफिनेशन पर केवल 3 ही कलमें चली अभी तक. एक रॉबिन्स की खुद की, एक प्रोफेसर जे.के. मेहता की और एक फिर मैंने कोशिश की. मैं भी उतना अहंकार नहीं कह सकता हूँ कि मैंने उसको रीडिफाइन करने की कोशिश की. ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेके काम करना होगा. मैंने जब सोशल जस्टिस की बात की, जस्टिस जरूरी है. जस्टिस के अंतर्गत आप पे चाहे टोटल इक्वालिटी हो जाए तो संभव ही नहीं है. टोटल इक्वालिटी तो संभव हो ही नहीं सकती, कभी संभव नहीं हो सकती. लेकिन हमें डिस्पैरिटीज तो कम करना होगा और उसके लिए पूरा मॉडल जो हमारा बना हुआ है. मैंने अभी जो इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन की एज ए प्रेसिडेंशियल एड्रेस दिया था, पास्ट लेट्स ऑफ स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स, मैंने कई लेक्चर दिए. आई मस्ट डे मोर देन 50 लेक्चर्स ऑन स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स. इट्स नॉट फर्स्ट टाइम. जो नेचुरल डिस्पैरिटीज हैं वो तो आप कम कर ही नहीं सकते. जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं वो तो कम कर ही नहीं सकते आप. मैं हिमाचल में था, हिमाचल में सेब उगाया जाता है. अभी छत्तीसगढ़ में सेब तो नहीं उगा सकते. छत्तीसगढ़ में धान का कटोरा धान उगाते हैं, पंजाब में गेहूं उगाते हैं, वो आप हिमाचल में नहीं उगा सकते हो, हिल्स में नहीं उगा सकते हो, कि सबकी प्रॉपर्टीज अलग है. we'll have to respect the innate natural properties of every region. और जो नेचुरल डिस्पैरिटीज हैं that too shall have to be respected. वो आपको रिस्पेक्ट देना पड़ेगी. लेकिन उतनी ही जो मैन मेड डिस्पैरिटीज हैं, मैन मेड डिस्पैरिटीज ठीक नहीं है. स्टेट रन डिस्पैरिटीज हैं वो ठीक नहीं है. या पॉलिसीगत डिस्पैरिटीज हैं वो ठीक नहीं है. अब नेचुरल डिस्पैरिटीज जो है, इंटर रीजनल बैलेंसेस की बात आती है, तो रीजनल इम्बैलेंसेस का भी हमारे पास टोपोलॉजिकल और जो हमारी जो करेक्ट हिसाब से लैंड यूज पैटर्न हिसाब से जो है उनका कंपटीशन हो जाए और इकोनॉमिक्स हिसाब से हो जाए, तो उसके हिसाब से हम देख लेंगे कि 20% से मिनिमम मैक्सिमम 20% ज़्यादा नहीं होना चाहिए. और 20% ज़्यादा है तो कहीं न कहीं नुकसान हो रहा है, लॉन्ग रन में ठीक नहीं रहेगा. ऐसे ही जो इंडिविजुअल जो डिस्पैरिटीज होती, इनइक्वालिटीज होती हैं, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ती चली आ रही. वर्ल्ड की पर कैपिटा इनकम बढ़ती चली आ रही. पर कैपिटा इनकम में गांव का सबसे कमजोर किसान और देश के सबसे बड़े धनाढ्य लोग सब एक साथ शामिल हो, एवरेज में शामिल हो जाते हैं. क्या उनको उतनी ही समझ पर कैपिटा इनकम है? नहीं. तो उसके लिए भी जो नेचुरल हमारी कैपेबिलिटीज के आधार पर इनइक्वालिटी वो तो टॉलरेट करेंगे, लेकिन जबरदस्ती किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन के, किसी स्टेट पॉलिसी हिस्सा बन के या किसी तरह संबंधों को बना करके कोई अनुपात से अधिक मान लीजिए कोई यदि प्राप्त कर रहा है तो वो भी ठीक नहीं है. उसमें भी हम 1:20 तक का रेशियो मान सकते हैं. उससे अधिक मान लीजिए कि डिस्पैरिटी है तो ठीक नहीं. अब यही चीज़ में G20 के कंट्रीज में जब हम नॉर्म सेट कर रहे हैं, हमारे पास अमेरिका भी इसका मेंबर है, जापान भी इसका मेंबर है, रशिया भी इसका मेंबर है. अच्छा यूक्रेन नहीं है, बहुत सारे मेंबर्स हैं. हम इसमें ही थोड़ी स्टडी करने में, तो इकोनॉमी से प्रोफेसर से यहाँ पे कहूँगा, राजेश और हमारे जितने मित्र वो इस पे काम करना शुरू करें. देखें सबसे कम समझिए कि पर कैपिटा इनकम वाला राष्ट्र कौन है और सबसे अधिक इनकम वाला राष्ट्र कौन है. क्या समझ G20 के पास 85% टोटल GDP का हिस्सा और बाकी केवल 15% में 145 राष्ट्र
क्या ये किसी मायने में ठीक हो सकता है? एक मान लीजिए बड़ा परिवार जिसको हम कहते हैं वन फैमिली, वन अर्थ, वन फ्यूचर की बात करते हैं, ये बड़े परिवार में समझिए एक छोटे से 20-25 लोगों के पास में तो 85% हिस्सा आ जाए, और एक बड़ा जो परिवार का हिस्सा है हमारे पास 15% में ठीक से काम नहीं कर पाता हो, जो इल फैट है, जो इल क्लोथ है, जो कोई बीमार है, रुग्ण है, जहाँ पर दवाइयाँ ठीक से नहीं पहुँचा, शिक्षा की व्यवस्था ठीक से नहीं है, इनकी चिंता कौन करेगा? हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। इसी से एक और पैरामीटर हम डेवलप करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल लाइंस, आई एम स्पीकिंग ऑन स्पिरिचुअल लाइंस, नथिंग लाइक दैट। इंटरजेनरेशनल जो डिस्पैरिटीज होती हैं उसके बारे में चिंता करनी पड़ेगी। फर्स्ट आई टॉक इंटर रीजनल, देन आई टॉक इंटर इंडिविजुअल, देन आई एम टॉकिंग इंटर जनरेशन, इंटर टेम्पोरल। 1935 में 30-35 में हमने सोचा, पता ग्रेट डिप्रेशन आया था। जब जब विश्व युद्ध होते हैं तब तब पूरी इकोनॉमी शटल हो जाती है। पहला विश्व युद्ध आया, अर्थव्यवस्थाएं बर्बाद हो गई। उसके बाद दूसरी विश्व युद्ध आया, उसके बाद में बर्बाद हुई। जब जब विश्व में पॉलिटिकल टर्मोइल बनता है तब तक इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आती रहती है, क्योंकि हम सारी इकोनॉमी के डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चलने देते हैं। वी आर डिफाइनिंग इकोनॉमीज बाय दिस मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और डिमांड में भी क्या है? परचेसिंग पावर, इफेक्टिव डिमांड जो केन्स कहता है। अगर हम डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ही चलते हैं तो असंतुलन तो बढ़ते चले जाएंगे। कभी आपकी समझिए कि बूम आएगा, कभी आप शिथिलता आएगी, कभी आप डिप्रेशन में चले जाओगे, फिर कहीं रिकवरी आएगी, ऐसे साइक्लिकल फेज में चलती चले जाएंगे। इट्स रॉन्ग। कोई भी व्यवस्था इन आर्थिक इंटरटेम्पोरल जो अस्थिरताएं होती हैं उसको झेल नहीं पाता। अभी कोविड-19 हमारे पास में आया, हमने सबने उसके दंश को जो भोगा है। हम लोग संपन्न लोग थे और नई सेक्टर के लोग थे। हमारी तनख्वाह में, हमारी पगार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई। कमी आई तो उनसे पूछिए जो कि बम्बई में, जो कि दिल्ली में, जो कि भुवनेश्वर में, जो कि कलकत्ता में लेबर के रूप में काम कर रहे थे। उनके पास में इतनी पूंजी नहीं थी कि 3-4 महीने तक अपने परिवार को पाल सकते, खिला सकते। उनके पास शेल्टर नहीं थी, कुछ नहीं था, बेचारे अपने गांव वापस जाना पड़ा। किस टाइप का डेवलपमेंट मॉडल हमने दिया है? अगर स्पिरिचुअल मॉडल होता, इसमें मॉडल इस प्रकार की जरूरत ही नहीं थी। हम मॉडल बनाते स्वदेशी के आधार पर, कहते तुम जहां पर हो वहीं पर ही उद्योग लगेगा, तुम जहां पर हो वहीं तुम्हारे खाने पीने रहने की व्यवस्था होगी, तुम जहां पर हो वहीं पर ही पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था होगी, तुम जहां पर हो वहीं चिकित्सा व्यवस्था होगी, तुम जहां पर हो वहीं मनोरंजन की व्यवस्था होगी। जितने पुल और पुश फैक्टर्स हैं माइग्रेशन के सारे कंट्रोल करता वो मॉडलिस्ट। नहीं, आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। यह है आध्यात्मिकता से उपजा हुआ मॉडल। वो नहीं कर पाए, बस उससे असंतुलन, तो वो भी जो इनस्टेबिलिटीज हैं वो भी नहीं आना चाहिए। मेरा निवेदन इतना है, हमें स्पिरिचुअल लाइंस पर सोचना पड़ेगा। स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स से पूरा मॉडल हमारे पास में है। इसको लेकर के एक बात और करना चाहूंगा आपसे। अभी आप स्टडी उठा के देखिए, आजकल तो क्या है कि वी आर सो लकी फ्रेंड्स दैट वी आर लिविंग इन दिस 21st century, middle of 21st century, when artificial intelligence has got immense utility for us. You name the data, data is available. आप जाओ तो उसकी शरण में पूछो, सोवियत यूनियन, रशिया और यूक्रेन की युद्ध से कितना नुकसान हुआ, आप डाल भर दो, कितने लाख कितने करोड़ का नुकसान रशिया को हुआ है, कितने लाख करोड़ का नुकसान जो है इसका हुआ है, यूक्रेन को हुआ, कितनी जान गई, कितने माल गए, सारे डेटा आ जाएंगे। क्या जरूरी था? क्या जरूरी था? सब लोग कहेंगे नहीं, पूरा संसार कहता नहीं, लेकिन यूनाइटेड नेशंस फेल है, नाटो फेल है, ये दोनों लोग लड़ते चले जा रहे हैं। कौन रोकेगा इसको? अगर चाहेंगे भारतवर्ष रोक पाए, यूनाइटेड नेशन रोक पाए, कोई नहीं रोक सकता युद्ध को, कोई नहीं रोक। युद्ध हमारी प्रकृति है, युद्ध हमारी प्रकृति है। और साथ में बता दूं, हमारे जो जीवन मूल्यों की बात ऋषि लोग कहते थे, पहले ऋषि कहते थे, वो आज जब कहते हैं तो दया, करुणा, ममता, ये सारी चीज बताई जाती हैं। युद्ध को कोई नहीं कहता, युद्ध हमारे जीवन की प्रकृति है, युद्ध हमारे जीवन मूल्यों में है। लेकिन युद्ध कब? युद्ध कब? ये उद्देश्य है। और विश्व के सबसे बड़े युद्ध हमने अपनी धरती पर लड़े। राम ने लड़ा रावण के विरुद्ध, और कृष्ण ने लड़ा कंस के विरुद्ध, और अर्जुन ने लड़ा दुर्योधन के विरुद्ध। ये हमने महाभारत और रावण जैसी जो है युद्ध, श्रीलंका जैसी युद्ध हमने लड़े अपने पास। अगर युद्ध हमारे रक्त में नहीं होता, लेकिन किसके लिए? धर्म की युद्ध लड़ना है, अहंकार के लिए युद्ध नहीं लड़ना है।
धर्म के युद्ध लड़ना है तब वो स्वीकार है। और अधर्म के लिए, अहंकार के लिए, स्वार्थ पूर्ति के लिए, जैसा रशिया यूक्रेन के साथ करा, जैसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में किया, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में किया, क्या अमेरिका को हिरोशिमा और नागासाकी में बम्बार्डमेंट करना चाहिए? आइंस्टीन रोते थे, आइंस्टीन सिर्फ श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते थे। बाद में उन्होंने एंटी न्यूक्लियर सोसाइटी बनाई थी। अब वो कहते थे समझिए कि मुझे पता है जो हम वारों बनाए से विश्व का विनाश हो सकता है, तो मैं क्या करूं? तब वो कहते थे, उनका एक संस्कृत निमित्त मात्र भव सब साचिन, हे सव्य साची अर्जुन, तो निमित्त मात्र हो तो मैं भी निमित्त मात्र हूं। ये बात थी। क्यों ऐसा किया? क्यों अहंकार के लिए, अपने प्रभुत्व के साथ? क्यों इंग्लैंड को आवश्यकता थी कि 80 देशों को उपनिवेश बना ले? और अभी भी जिस तरह से बातें चल रही हैं, जो ट्रेड को लेकर चल रही हैं, इंटरनेशनल ट्रेड जरूरी है, ट्रेड आवश्यक है, लेकिन हमें अर्थतंत्र को विकसित करने के लिए चाइना जो है विश्व में सबसे अधिक इंटरनेशनल ट्रेड के आधार पकड़ता है। पूरी जो 93 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, सबसे बड़े शेयर होल्डर्स तो हमारे अमेरिका और चीन है, जिनकी पूरी इकोनॉमी जो ट्रेड पर आधारित है। ट्रेड के द्वारा आप दूसरे देशों की सहायता भी तो कर सकते हो। कोविड दौरान जो है हमने कितनी वैक्सीन बांटी लोगों को, हमने न जाने अपना खाद्यान्न कितने देशों को बांटा, हमने उससे कुछ अर्जित करने की तो कोशिश नहीं की। अगर मान लीजिए आप इस इंटरनेशनल ट्रेड को डेवलपिंग नेशंस के एक्सप्लॉइटेशन की बात करना चाहते हैं तो ठीक नहीं है। तो हमारी स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स कहती है, अरे भाई जितना युद्ध पर खर्च करना चाहते हो उतना विकास पे खर्चा करो, उस पर शिक्षा पे खर्चा करो, उन सुदूर देशों में रहने वालों लोगों की चिंता करो जहाँ पर की शिक्षा नहीं, जहाँ पर उनका स्वास्थ्य नहीं, जहाँ पर भोजन की व्यवस्था नहीं, जहाँ लोगों बस कपड़े नहीं है, अभी बहुत सारे देशों में बेरोजगारी है, उनकी चिंता कौन करेगा? तो मुझे लगता है जब भारतवर्ष को प्रेसिडेंसी मिली है, मैं चाहूँगा कि प्रोफेसर राघवेंद्र तिवारी जी ICSR का जो ये हो रहा है, इसमें रिजोल्यूशंस हमको पास करने चाहिए। कुछ प्रस्ताव यहाँ पर 2-3 प्रस्ताव पारित करें, और प्रस्ताव यही पारित होना चाहिए, भारतवर्ष को यदि मान लीजिए प्रेसिडेंसी मिली है तो आध्यात्मिकता के आधार पर हम विश्व को शांतिपूर्वक ढंग से बढ़ाने की बात करेंगे, अन्यथा आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स धरे के धरे रह जाएंगे। कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आप प्राप्त नहीं कर सकते, मैट्रिक्स लाइन में कोई चीज मिल ही नहीं सकती। मैं खुद नहीं कह रहा हूं, जब भारतवर्ष स्पिरिचुअली चार्ज देश था पूरे विश्व में, उस समय पेरी एंडरसन नामक हिस्टोरियन हुआ है, कहता 1500 के आसपास भारतवर्ष की जो विश्व के GDP में 30% हिस्सा था। आपने भी कोट किया है, तिवारी जी ने कई बार कोट किया है। समुद्रगुप्त नामक जो हमारा राजा था, वो पूरे अखंड भारत की कल्पना थी, कहाँ कहाँ भारतवर्ष की सीमाएं नहीं थी और किसी से कुछ नहीं था, कोई खतरा नहीं था। फ्री ट्रेड की बात आज आप कर रहे हैं, WTO वगैरह में फ्री ट्रेड भारतवर्ष में था। यहाँ के लोग कहाँ नहीं गए, कहाँ के लोग यहाँ नहीं आए। ये जो वास्को डिगामा को तो देते हैं हम लोग, श्रेय देते हैं भारत खोज करने, वहाँ कृष्णा नामक यही तो व्यक्ति था, गुजरात का था, जिसने सही मार्ग बताया था इनको यहाँ आने का, उसके कारण यहाँ पाए। और सारी राइटिंग बताने, पोत जो थे, जलयान थे, भारतवर्ष से बने हुए कितने अधिक शक्तिशाली थे, कितने अधिक पावरफुल थे, वो सोच के हैरान थे। भारतवर्ष जब आध्यात्मिक देश था, अभी कुछ कम मान रहा हूं, शून्य से लेकर के अनंत तक, फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, नेम द डिस्कवरी, नेम द इन्वेंशन, नेम द रिसर्च विच आवर ऋषिज हैव नॉट डन। हमारे वेद भरे पड़े हैं, पुराण भरे पड़े, उपनिषद भरे पड़े हैं, रामायण है, श्रीमद् गीता है, गुरु ग्रंथ साहब हमारे पास में है, रामचरितमानस है, आप लाखों कृतियां हमारे पास में अभी भी विद्यमान है, मैन्युस्क्रिप्ट उपलब्ध हमारे पास में। हमें क्या करना है? हमें उन्हें डिकोड करने की जरूरत है, उनके पास जाना पड़ेगा। विल हैव टू टेक द असिस्टेंस ऑफ द लेटेस्ट, utmost, most sophisticated artificial intelligence so far as methodology is concerned. So idea is concerned, either we should go to our society, our larger society, or our scriptures. कहीं मत जाइए, आप पंजाब में हैं, गुरु ग्रंथ साहब को पढ़िए आप सुबह दोपहर शाम। मैंने पढ़ा है, हमारे मित्र थे पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला के वाइस चांसलर थे जसपाल सिंह जी, मैंने रिक्वेस्ट की, सारा हिंदी में देवनागरी लिपि में लिखवाया उन्होंने, जो गुरुमुखी में नहीं पढ़ सकते हैं उसमें पढ़े, हिंदी में पढ़े, सारी उनकी मैंने पढ़ी हुई आयतें पढ़ी हुई हैं, चौपाइयाँ पढ़ी हुई। कोई मुझे अंतर नहीं लगता, कबीर में कोई नहीं अंतर लगता मुझे, जो है वो
तुलसीदास में बिल्कुल एक जैसे वर्डिक चलते चले आते हैं। और उससे आइडियाज लीजिए, आप आइडियाज लीजिए उनसे और टेक्नोलॉजी कीजिए आज, तब जाकर हम ओरिजिनल कुछ रिसर्च कर पाएंगे, तब जाकर हम स्पिरिचुअल लाइंस पर आगे बढ़ पाएंगे। मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध यह है कि पढ़ाई लिखाई एक बात है, इसे अपने जीवन में हमें उतारना चाहिए। सारी चीज़ों को जब तक हम जीवन में नहीं उतारते हैं साथियों, तब तक बातें कपोल कल्पित सी रहती हैं। मुझे प्रोफेसर राघवेंद्र तिवारी जी ने अवसर दिया अपनी बात कुछ कहने के लिए। वर्ड जो है इसमें बहुत ही फ्रैगमेंटेड वर्ड है। मेरा बहुत सारा डेटा था, डेटा में बताना चाह रहा था, लेकिन जिस तरह ऑडियंस देखी मैंने बताऊंगा तो ठीक नहीं है। अब जैसे G20 का है, समझिए रिलीजन के आधार पर ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कंट्रीज बना हुआ है, 50-51 कंट्रीज उनकी भाषा पढ़िए क्या कहते हैं, क्या ठीक है क्या? ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं। ये सब ग्रुप्स बंद करके हमें कहते हैं ग्रुप ऑफ स्पिरिचुअल नेशंस ऐसे बनाना चाहिए। हमें क्या है, एक CSR का कॉन्सेप्ट आता है। आखिरी बात कहूंगा, विचार आया पावरफुल। CSR का आप सभी लोग जानते होंगे, क्या है वो? थैंक यू मैडम फॉर लाइटिंग। हमें थोड़ा चेंज कर दें इसमें। मैंने एक जगह लिखा भी, मैंने 62 नियम बनाए हैं और स्पिरिचुअल लॉज ऑफ डेवलपमेंट, पॉलिसीज नहीं, लॉज ऑफ। उसमें एक जगह लिखा है, जैसे भरे हुए पेट को भोजन जरूरत होती है, ऐसे भरे हुए पेट को व्रत करने के बारे में कहना चाहिए। हम क्यों नहीं बात करते हैं कंट्री सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी? हाउ लॉन्ग कैन वी टॉक अबाउट ओनली कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी? वी शुड गो फॉर कंट्री सोशल। व्हाट इज द सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रीज? अमेरिका की सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है फिजी के प्रति, ट्रिनिडाड प्रति, सूरीनाम के प्रति, इंडिया के छोटे मोटे जो एरिया उनके प्रति क्या उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? क्या रशिया की रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्या जापान की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। यदि मान लो आप स्पिरिचुअल लाइंस पे आप G20 की बात कर रहे हो, तो हमें विश्व से विषमता खत्म करने का प्रयास करना होगा। आपके पास मैंने कैलकुलेशन किया था, जो हंगर की बात में करा था एक लेक्चर देने के लिए, जितना वर्ल्ड में प्रोडक्शन हो रहा है और पर कैपिटा जितनी नेसेसिटी होती है, उससे 10 गुना अधिक हम प्रोड्यूस करते हैं। जब 10 गुना अधिक प्रोड्यूस करते हैं तो भूखे क्यों रहते हैं लोग? क्योंकि मार्केट इकोनॉमी में आ जाती है। हिंदुस्तान को उदाहरण देखिए, या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जो अनाज है वो सड़ना जरूरी है, सड़ना स्वीकार है, लेकिन हम बांट नहीं सकते उनको, क्योंकि प्राइसेस डाउन हो जाएंगे। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ऑन वन साइड पीपल आर डाइंग ऑफ हंगर, ऑन द अदर साइड आवर फूड ग्रेन्स आर गेटिंग रॉटन इन दिस फूड कॉर्पोरेशन। व्हाट्स नॉनसेंस? स्पिरिचुअलिटी मीन्स आपको अपने के साथ कनेक्ट करते हुए जैसा आपको महसूस होता है उसको लेकर के हम आगे बढ़ें। इसमें बहुत स्कोप है, बहुत संभावनाएं हैं। यदि आप चाहेंगे भविष्य में कुछ इस प्रकार का काम करना और मुझे अवसर देंगे तो मैं आपके साथ सहयोग करने में, हमारा विश्वविद्यालय आपका सहयोग करने में स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करेगा। इसी तरह से व्यक्तिगत संबंधों को संस्थागत संबंधों में रूपांतरित करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। Really, and indeed, it is a very impressive lecture. Your chosen word is fused with spirituality, highlighting the various dimensions of inequalities and sorting out them with spiritual solution. And your suggestion regarding resolution 2G presidency regarding all inequality problems can be sorted out through spirituality. Really, it is wonderful suggestion, sir. And now we are moving towards last leg of the program. Now I request all the Honorable Vice Chancellor and all dignitaries to the dais for guest felicitation. So I request Honorable Vice Chancellor and Professor Raghavendra Prasad Tiwari, Professor Adrian Vajpayee ji, Vice Chancellor, Atal Bihari University, and Professor Pawarnand, and Dean Research Anjana Munshi ji,
Dr. Nishta Kaushki, Dr. Amit, please come to the dais. Now it's time for proposing vote of thanks. So it is indeed a proud privilege for me to propose vote of thanks. First of all, I would like to extend warm thanks to the Honorable Vice Chancellor, Professor Raghavendra Prasad Tiwari ji, for being torchbearer and lighthouse for his guidance to organize this lecture, seminar, national seminar. Also, I would like to extend warm thanks to the Ambassador Raghavendra Gupta, sparing valuable time to share your ideas with the participants, sir. My thanks also goes to Professor Anand Pawar for sharing your ideas how international laws and Indian values system can help to resolve international disputes. Also would like to extend warm thanks to Professor Adrian Vajpayee sir, Vice Chancellor Atal Bihari Vajpayee University, for your benign presence gracing the occasion, and your very impressive chosen words fused with spirituality, giving solutions to inequality problems of the world. Also would like to express thanks to the Dean Charles, Academic Professor Vasika, Dean Research, Director IQAC, all Dean Schools, HODs, faculty members for your benign presence in this occasion. I also like to extend warm thanks to Registrar Professor BP Gargji for your support to the organizing team and your cooperation. Also like to extend warm thanks to the dear students and media person for your participation in this program. Now we are moving to the last leg of the program. Now after national anthem, all of you are requested for a cup of tea, and after national anthem there will be no announcement. So I request for national anthem, all of you are requested, please rise up to your place. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा
चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे